गुड़िया बोली, मम्मा बोली। आप शहर से घर ज्यादा आते तो पापा It's time for the toss for this inaugural match between of Curchorem Champions Trophy. Master raise कर, high कर. Sound. Hello. Test. Test. Test one. Test. So right now I am with both the icons and the captains of Kakoda Boys and Jai Bhavani Club. It's time for the toss of the inaugural match. Requesting the umpires to please do the formalities.
Ahmed Amchekar will call it. Call it loud. Yes. Tails is the calls. Tails it is. So Jai Bhavani Club Kakoda has won the toss in this inaugural match. So let's see Ahmed Amshekar. Kide? आम्ही बॉलिंग करतले. Bowling करतले. Any particular thought कित्याक bowling करतले? आमचे बॅटिंग स्ट्रेंथ बरी आसा सो आमी बॉलिंग चेजिंग करपाक सोदता. आणि कोण आउटस्टेशन प्लेयर्स आसा तुझे? आमचे प्रवीण पप्पा, विनोद विल्सन आणि विरेश सरकर. ओके, विनय सातरकर. सो आता म्हाका एक सांग, जी आता विकेट जी आसा जी कंपॅरेटिवली खूप डिफरंट आसा. दिस इज अ टर्फ विकेट. टेनिस बॉल क्रिकेट चडशी टर्फ विकेटीचेर खेळिल्ली ना. सो तूं एज अ लेदर बॉल प्लेयर तुका कितें दिसता की पेस बॉलर्साक एक एडवांटेज आसतली काय स्पिनर्स कशें तुजे तकलेन चलता? तशें पळोवपाक गेल्यार विकेट आतां ड्राय आसा सो विकेट ओके, सो दॅट वॉज फ्रॉम द कॅप्टन. आणि दुसरी एक गजाल की तुज्या जी टीम आसा तुका दिसता की जय भवानीचे क्लब जेन्ना ऑक्शन जाल्लें तेन्ना तूं एक थोडे बॉलर्स सिलेक्ट केल्ले. सो तुका दिसता ते प्लेयर्स तुका एडवांटेज जातली हांगा? हय ऑब्वियसली. आनी मेन म्हणल्यार आमचो एक प्लेयर ना आयज बॉलर सो तो आमकां सेकंड मॅचीक मेळटलो. ओके, गुड लक टू यू. मीनवायल विकी, पयली मॅच कुडचरेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी खूब तेंपान एक व्हडलो टुर्नामेंट पळयता कुडचड्यार आनी लोक आतुरतेन वाट पळयता की केन्ना काय एक बरे आमचे जे प्लेयर्स भायर वतात पूण हांगा ह्या वर्सा तरी चड क्रिकेट पळोवपाक दिसूना. सो कशें दिसता, कसो फील आसा? वी आर फर्स्ट टुर्नामेंट म्हणून आम सगळ्या प्लेयरांक लोकल प्लेयरांक खेळपाक चान्स मेळटा. बरें दिसता आमकां एक टुर्नामेंट फर्स्ट जालो म्हणून. आनी म्हाका एक सांग, तुजे आउटस्टेशन प्लेयर्स कोण जे आतां तुका ह्या मॅचीक पयल्या मॅचीक नाल्यार फूल डे खेळटले? गौरेश, संदेश आनी पुणाजी. संदेश ठाकूर, गणेश नागवेकर आनी पुनाजी. तो तीग जाण बरे गडगंज जशे ऑलरावंडर्स आनी प्लेयर्स. तूं टॉस हरलो पयली मॅच, कितें डिफरन्स? तुका आतां बॅटिंग करपा पडटली. तुका दिसता टार्गेट कितलो? 60-65 तरी. 60-65. खन्ना बॉल यूज करता, सुपर खन्ना. प्लस ह्यो ज्यो आउटफिल्ड्स आसा तुका खबर आसतल्यो कंपेर टू आमगे नॉर्मल जे ग्राउंड्स आसता ओके गोंया भितर तातूंत नो एक मातसो बीग बाउंड्रीज फॉर टेनीस बॉल क्रिकेट. सो सिंगल डबल फरक पडटलो काय सिक्सऱ्यो आनी मारपाचो यत्न करतले तुमी? सिंगल डबल फरक पडटलो. बाउंड्री व्हडली आसा, स्टेटां बी व्हडली आसा म्हणून आमी ट्राय करता 60 काडपाक, 60-65. That's news out from the center that Vicky Naik saying that 60-65 is going to be the target when they are going to bat first. And captain of Jai Bhavani Club Kakoda, Ahmed Amshekar, won the toss, electing to field first. So we'll request both the teams to please come out immediately to start the proceedings of this first match. Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her castle walls. Now and then she tried to run, and then on a night with the setting sun, she went in the woods away, so afraid, all alone. They warned her, don't go there, there's creatures who are hiding in the dark. Then something came creeping, it told her, don't you worry, just follow everywhere I go. Top of all the mountains, a valley low, give you everything you've been dreaming of, just let me in. Ooh. Everything you want to go, I'll be the magic story you've been told, and you'll be safe under my control, just let me in. Just let me in. She knew she was hypnotized and walking on cold thin ice. Then you broke. Requesting the umpires and the fielding side to please take on the field as fast as possible. This is going to be a 5-over match. The first over is going to be compulsory power play, and the rest
4 overs, 5 bowlers have to be used. So everyone is excited for this Curchorem Champions Trophy 2023, which is going to be electrifying, as all 10 owners are from Curchorem, but we also are going to witness some of the well-known and popular faces in tennis ball cricket. You can say the icons of tennis ball cricket in Goan cricket circles are going to showcase their talent along with the local talent of Curchorem, Sanwadem and Sangem and Kepem areas, the close by areas that were included as a part of this tournament. So wonderful thought process put by the organizers, and that's the reason why we are going to see some thrilling contest with almost, we can say, outside Curchorem, almost 5 Australian players. So definitely it's going to be great bunch of talent, great bunch of display. Pikachu. Then she ran faster and started screaming, "Is there someone out there? Please help me. Come get me." Behind her, she can hear it say, "Hello everywhere I go. Top of all the mountains of Valley low. You do everything you've been dreaming of. Just let me in." Ooh. Everything you want in gold, I'll be the magic story you've been told, and you'll be safe under my control. Just let me in. Ooh. Just let me Everything you want in gold, I'll be the magic story you've been told, and you'll be safe under my control. Just let me in. Follow everywhere I go. Top of all the mountains of Valley low. Give you everything you've been dreaming of. Just let me in. Then she ran faster and started screaming, "Is there someone out there? Please help me. Just let me in." Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. रिक्वेस्ट करता विकी नायक यो तुझे बॉल हांगा जे इनिंग्साक सिलेक्ट करता ते 2 बॉल्स सिलेक्ट कर फॉर द फर्स्ट इनिंग्स. मातशें बेगीन करात. Living life as if we had a choice. Anywhere, anytime, I would do anything for you. Anything for you. Yesterday got away, melodies stuck inside your head. A song.
Yes, we are ready. Punaji. That's a good start. Very good start here from Vinay Satarkar. The pace spearhead coming all the way from Kankona to perform here in Curchorem for his team. Jai Bhavani Club Kakoda Ameya Damshekara was truly insisting on this player as an outstation player, and maybe the reason is this is a wonderful turf surface where we saw a lot many leather matches. This time, this is a full toss ball. Little error, and Punaji is going to take it for runs. So margin for error against Punaji is going to be just minuscule, and 4 runs. The first 4 runs of Curchorem Champions Trophy coming from the back of Punaji Kalangut. I want to time away. This is a full toss ball. Going for 6 runs. Might be in the air and taken. Full toss ball, and Vicky could not take the advantage, and the first wicket down. Yesterday, This is the first 6 of Curchorem Champions Trophy from the big man. Kakora boys. Well, 5 overs, and it's really going to be the top 5 players that are going to be at the top of the chart. This time,
slightly wide, signal by the umpire. Turning out to be a little costly over here for Jai Bhavani Club Kakoda. Started very well with a good line, but then bowled a full toss, slow full toss, then one in the slot, one above waist height full toss ball, which could have been a chance, but umpire called it a above waist height no ball. A little false start here. This is once again beautiful shot, no fielder there, inside out, might be a bounce, might be a six as well, and it's 6 runs. I wanna know. हाउस ज़ेड पर मैं आपका वेलकम करूंगा 3000 के वेलकम बोनस के साथ। अभी डाउनलोड करें हाउस ज़ेड। Say my mind. Oh, just falling in no man's land, trying to play that he was short on the mid-wicket region, just shuffling across on the arm side. And single taking the score to 21. हाँ क्या बोलते कंपनी for both the teams. हाँ, In fact, all the teams, different colors. So it's going to be a colorful Curchorem Champions Trophy. Once again, this is much better line and length here. The experience of Vinod Wilson. Vinod Wilson not only in Goan circles, but I saw recently on television, Vinod Wilson was playing in the Legends Cup. And nice to see some players from Goa were showcasing their talent in that Legends Cup held and shown telecast on the national media. Vinod Wilson certainly has the caliber. Oh, quick running between the wickets. Wonderful. I thought they might be going for the single, but it's scampered through for the couple of runs. That's the reason why the fielders have to be on the toes close to the boundary line. This double takes the score to 23. This time in the air. And just falling short of the fielder, so just going to be 1 run. Praveen Papa normally does keeping most of the times, but I think with Amit Amsekar, more professional outfit keeper in leather ball as well. So he is patrolling and marshalling his troops from behind. It's always good for a wicket keeper as a captain, just like we see MS Dhoni marshalling the troops from behind the wickets and does the best job that you have seen in the game of cricket. Oh, this is once again, this is a great start. Just a pickup shot on the leg side. Another big six from Vicky. इधर पे क्या शॉट बनता है और बनता है
इतकी हुशार आहेस, शहरातल्या कोणत्याही कॉलेजमध्ये ऍडमिशन मिळेल. आई, मी शहरात गेले तर वीकेंडची गर्दी कोण सांभाळणार? आई रेड बस ने अशॉर्ट सीट का नो टेन्शन. वीकडेजला कॉलेज, Now it's वीकेंडला going to be हॉटेल the third over. आई खुश. रेड बस आपल्या माणसांना आणि स्वप्नांना जवळ आण. बस म्हणजे रेड So good बस. mixture here, mix of the owners from Curchorem and the Australian players from लॉन्ग all ड्राइव, across बारिश Goa. और स्पॉटिफाई की And ड्राइविंग some of the प्लेलिस्ट. players were chosen in the auctions Spotify, from सुनते जा. KPM and Sanwadem Village Panchayat. I wanna know. So it's a mixed bag of everyone from Goa participating in this Curchorem Champions Trophy. तशेंच रिक्वेस्ट करता जितले ओनर आसात जे पार्टिसिपेट केल्ले आसा तांकां मातशें रिक्वेस्ट करता माचयेर येवन बसका घेवची. ओनर सपनेश सावंत, रेमस रेंटास, यश प्रभु देसाय, रोहन गांवस देसाय. And his clean ball, wonderful here from Sai. She strikes back, and that's the first wicket here for Jai Bhavani Club Kakoda in the third over. My, my. So this is a really good start here from Saish. So he's not bowling. It's going on to be Bala coming one down. The highest bidded player for this particular team, Kakoda boys, they were going after him in the auctions for a big prize. Once again, this is good bowling here from Saish. Compared to the first two bowlers, I think he's bowling the right line and not allowing the batsman to swing the bat. So good start from Saish. This is the third over in progress. So 32 on the board. As Vicky told during the toss that it's going to be 60-65. That is going to be in the minds of the captain. Well, whether it's interesting to see whether they are getting the 60 runs. Punaji Kalangutkar is well set on the wicket. This short wide, well left here from Punaji. He understands where are the fielders placed. There is one extra cover, one long off, long on, deep mid wicket and backward square leg region. But so far, I think Saish has bowled a particular channel. He's not bowling on both sides of the wicket. That's good for the captain. This is in the air. This might be a catch. This might go for 6 runs. Oh, what a catch! What a catch this is! This is a match-turning moment here in this match. Rajat रिक्वेस्टाचा मातसो येवन माचेर बसका घे. We were young, posters on the wall, praying we're the one that the teacher wouldn't call.
This is a great shot. Just after the wicket is falling, and the new batsman comes and he strikes a big one. Saish has given a little hope here for Jayawani Kakora to get the second wicket in that same over. This was right in the slot and he cleaned it. Good recovery by the fielder in the end, just restricting the batters to a single. So good over here from Saish, getting 2 wickets in this over, 2 important wickets of Punaji Kalangudkar and also Vicky Naik. So it's 40 for 2 after completion of 3. शेखर बापसेल तुम्ही येऊन बसका घेयात. क्रिकेटी खातीर सदांच कार्यरत आशिल्ले आनी सदांच कुडचडकारांक मदत करता अशें शेखर बापसेल. 40 for the loss of 2 after completion of 3. Here comes the 4th over. In comes Bhavnesh Ghate. Starts off well, right in the slot, might be 6 runs. Yes, it is. This is Gaurish Nagwekar. So 52 on the board. This is the 4th over. Not a good start here for Bhavnesh Ghate. One right in the slot, one short ball. Not finding the length right. Once again, this is slightly wide signal here by the umpire. Gaurish understanding now what is the forte of this bowler and is going to go all out after him. These are the top 3 outstanding and outstation players included in the squad by Kakura boys. This is much better. This is much better, much fuller here. And that's the right ball. If the batsman is going for the switch hit, bowl it fuller, maybe outside the leg stump or maybe outside the off stump. Nobody but me can keep me safe. I'm on my way. The blood moon is on the rise, the fire burning in my eyes. No, nobody but me. This time an outside is no chance of a single. Short third man is really close, and that's kept fine here by the keeper Amit Amshikar as he's just close into the wicket. A good comeback. He is trying to bowl 2 dot balls, not easy against Dhumru. This is really bad bowling and bad ball. Fetched him a wicket here. Unlucky the batsman, but sometimes on good balls you don't get a wicket. On bad balls you can definitely get a wicket like this one.
53 is the score. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, Here comes Sandesh Thakur. they don't understand. So look at the magic unit of these Kakoda boys. They have got Bala, they have got Miki, they have got Punaji Kalangukar, Boris Nagwekar, Sandesh Thakur. Sandesh Thakur will be coming a little bit down. Jordan and that dot ball will finish over 4. 54 for the loss of Nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. The bad mood is on the rise, a fire burning in my eyes. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my. Ahmed Amsekar normally doesn't bowl regularly, but he can definitely bowl as he knows that he is a much better option compared to other, and he is definitely going to miss services of Anish Fondekar, who is going to be that prime bowler. He is not available in this first match, maybe available in the next matches. That's going to be in the minds of the captain. Oh, once again, this is just wide, but I think that was really a good idea. Slower, a short ball. Well, Sandesh Thakur was not ready for that ball, but it was just bad luck that it just went outside the off stump. But good idea, nevertheless. Oh, this is still a better bowling, but little outside, very little inside. Small things. Margin is very less in cricket, and that margin is going to be the key for your success. 2-1 considered by Ahmed Amsekar here at the moment. This is bad ball. This is Rank Half-Hawk, and he plays it and plays a wonderful push shot. I've never been so wide awake. No. This time, oh, catch dropped here. This is very good bowling. Chancing a run out at this stage. He has missed both. He has missed taking the catch. He has missed hitting the stumps. Sunil Sawan, surprising, he is normally a good wicketkeeper and a good fielder. That is really good bowling here from Ahmed Amsekar. Although he bowled short, he knew very well that it was a mistake from him to bowl short ball to Sandesh Thakur. Right now, he's not in the best of the form, Sandesh Thakur. I think he's bowling the off-cutters and still wide. That's the problem with non-regular bowlers. I can understand that he's falling short of one of the bowlers. It's not easy to bowl consistently in the right area. This is much better. Out of the shot down and down. Still there only a single. Single it is. So this single takes the score to 66. This is exactly the total that Vicky was mentioning during the toss, so that he wants to get somewhere around 60, 65. And that's what exactly they have managed to get so far. Still some balls left in this over. Cracking indeed. Don't bowl short. Just dragged it down the length, and the batsman was ready to play a full shot. Wonderful in the square leg region. Another one. 72 the score moves on to. It's going to be very, very costly, and after completion of 5 overs, Kakoda boys managed to get a rollicking start. 78 on the board, and the bowling has been totally bruised here by the batters of Kakoda boys. 79 is the target set.
हांव रिक्वेस्ट करता साच्या आमचेच मुखेल सोयरे हांगा पाविल्ले आसात आनी सगळे बाकीचे मानेस्ती हांगा पाविल्ले आसा. हांव रिक्वेस्ट करता असलम शेख हाणें मातशें माचयेर येवचें आनी एक सन्मानान बुके दिवन सरांक येवकार करचो. तशेंच हांव आतां नांव घेना सगळे जे पळय स्टार बॉयसाचे वांगडी आसात तांणी एक एक करून येवचो आनी आमचे मानेस्त जे आसा तांकां सगळ्यांक बुके दिवचे. जशेंच ओनर्स जे आमचे आसा हांगा तांकांय बुके दिवचे. भाऊ मडगांवकर जे एक नामनेचे हांगा सोशल वर्कर आनी बरे बिझनसमॅन जांकां खूब सन्मान आसा ह्या वाठारान ते आमचे आज मानाचे सोयरे आसात. येवकार करता तुमकां भाऊ. तशेंच बाकीचे जे आमचे मानेस्त आसात कावन्सिलर बाबू भेंडे हांकांय बुके दिवन तांचोय बी येवकार करचो. किशन बाब सावंत फुडले सुवातेर एक बरो सोशल वर्कर आनी ताणें हांगा बारीकशें एक प्रायजांय बी दिल्ली आहा. बरें दिसता. सो यो नूर यो वयर यो आनी आमचे बाकीचे जे मानेस्त आसात तांकांय बी सन्मानान येवकार कर. अजय बाब आसा.
This time Amit trying to go in the mid-wicket region. So first over and power play over is going to be very crucial to see the run chase of 79 runs. So 15 to 16 runs per over is required. As per the calculations, he's going for the switch hit. This is the pace of Gauresh Nagvekar. He's right now at the top of the chart. He's the only one who has gone from Goa in 10 PL in Surat and won the Player of the Match award with his outstanding all-round performance. Gauresh Nagvekar, popularly known as Ghungru in the cricket circles. Meanwhile, the next match is going to be played between Chris Boys and Star Boys, requesting the captain to please come fast for the toss. Chris Boys and Star Boys. This is outstanding bowling from Gauresh Nagvekar. That's the reason why Kakoda Boys are a strong side, because of the outstation players that they have. रिक्वेस्ट करता आमचे कुडचडेचे आमदार आणि गोंय राज्याचे मंत्री निलेश बाबू काब्राल आणि हो टॉस जो आसा तो उडोवचो. So here comes the one down play. So not a good start here for Jai Bhavani Club Kakoda, but a rollicking start for Kakoda Boys. Next match will be between Chris Boys and Star Boys. 10 matches to be played in the day. And got to win most of the matches to enter into the qualifiers. Kakoda Boys definitely with the outstation players are doing a great job. This time, once again, trying to play down the track, but getting an inside off of the bat and another single. So what matters to the batting side is the boundaries and sixes, and what has to be stopped by the bowling unit is that boundaries and sixes itself. Singles won't matter when you are chasing almost 16 runs per over, which is going to be a daunting task at this stage. And it's clean ball. Look at that wonderful slower ball. Praveen Papa was totally clueless. Magical delivery here from Ghungru, and he strikes two big blows here for Jai Bhavani Club Kakoda and for his team, Kakoda Boys. Kakoda Boys are on the road in this first match. That's going to be the most important thing here for this side and for this group. Winning the first match is always important to start proceedings in a big tournament like this. Curchorem probably getting brought to you by Star Boys of Curchorem, who are always getting something new every edition, every season. Captain of Chris Boys and Star Boys, please be ready. The first goal is continuing. We have got good invitation. He was good. Not only the top player in Goa, but the very big one of the people who have recently held.
He's really good here from Ghungrua. He's come all the way from Pernem to Curchorem, and he has not only done the job with the bat, but he's also showing how good he is with the ball as well. The first over has gone. He's picked up 2 wickets, and the score is just 1. There's something in your eyes that brings me home. 'Cause when there's love, you don't let go. So as long as you're with me, you're not alone, you'll never be. I wanna tell you what I feel and really mean it. I wanna shout it from the rooftops to the sky. 'Cause if you ever need a friend, you know I'll be it. I'll see your footprints next to mine along the road. And I don't know what the future holds, but as long as you're with me, you're not alone, you'll never be. I wanna tell you what I feel and really mean it. I wanna shout it from the rooftops to the sky. 'Cause if you ever need a friend, you know I'll be it. From tonight until we see the end Starting of time. the second over. I'll cross my heart and hope to That's a lovely shot. Wonderful leather ball shot, but he can get at the most of singles. Wide long of the fielder discovers that witnessing some of the great matches in the IPL. Yesterday's match itself for 300, 200 plus runs scored by the team first, and it was chased comfortably in the 19th over. And we are definitely going to witness some of the matches going right down the wire because of the strong players are playing in these competitions. Vicky very well knows how to bowl on this wicket. Not in the best of the forms currently, Vicky, but he can certainly, with the talent that he has, come on the forefront at any point of time. Just knows how to concentrate and get back in form. Satarkar. Oh, that's a good heave. That's a mighty shot. This is badly required for Jayabani Club, and they got it from Vinesh Satarkar, coming all the way from Kankona and showcasing his talent in Curchorem. This time he knew what a batter was trying to do. This is a go-to shot nowadays, as this common shot, that pick-up shot on the leg side. We see Surya Kumar Yadav, how beautiful he was playing all across the park. And many tennis ball players now are trying to copy that shot in the fine leg and backward square leg region. This time played down the ground in the mid-wicket region, finds a gap to perfection. Placement was the key. He timed it well, but placement was the key, and he get the boundary. So little expensive over. Vinesh Satarkar has got a little move on here for Jayabani Club Kakoda in the second over. 13 for 2.
Badi, Mendes, and Angelo. ओके ताणें बॉलिंग घेतल्यात. यू आर हॅपी विथ बॅटिंग? Yes. ओके. शनेश चड उलयना केन्ना कितें आसा ते बॅटिंग आनी बॉलिंगे परफॉर्म करता. सो गुड लक शनेश तुका. So now back concentration on this Sandesh Thakur. I think this is one of the biggest tournament held in Curchorem, and I guess witnessing some of the good guests who have always helped the cricket take forward leaps and bounds in Curchorem, and that's why we are witnessing such a good tournament. Once again, Sandesh Thakur is not going to be easy against Sandesh Thakur. Is the top-rated bowler, and Kishan is clapping. Kishan is clapping because he is a supporter of Kakoda boys. Definitely, he'll be clapping. So I can understand that. He's come to support his side, and why not? We have got a lot of supporters and followers of different teams. Once again, wonderfully flicked on the leg side. So it doesn't look good here at this stage for Jai Bhavani Club. Kakoda, little fumble out in the deep. And it's going to be a good throw. Umpire says very much in, and is going to the third umpire. So I think by the time third umpire takes his time, score. 15 after completion of 3 overs. 63 runs required
in 12 balls, which means 10 sixes of 12 balls, which is going to be close to impossible task. And just heaved away in a Satarkar, just going to be singles. Singles are going to take them back in the dugout to have maybe a talk about the next match. Jai Bhavani Club Kakoda. Wonderful Australian players, and they are definitely performing very well in the first match itself. So this is going to be Niketa Bhatikar. He was one of the Australian players picked here. This time, once again, Aniketa looks to be a decent bowler with a good line and good action so far, and just bowls wide, two wides here against Sunil Sawant, Toronto popularly known as in this region. This time an outside edge, might get a boundary. Yes, the ball runs towards the third man reacher, close to the board of Sir Nilesh Kabral, and I guess the boundary as well. But it's coming all too late here for Jai Bhavani Club Kakoda. Requesting Aslam Sheikh to please come here. This time, that's going to be a single. Full toss ball could not take the advantage. So Vinesh is still there. This time might be a catch, might be a difficult catch, chance close to the boundary, and Gaurish takes it easily. That's the reason why you should have tall and your important players at the long on and mid-wicket region boundaries. Vinesh also goes back in the pavilion. Meanwhile, हांव रिक्वेस्ट करता शेखर सैल मातसो यो आनी तुजो जो एक फोटो काडिल्लो आसा तो हांगा यादस्ती कशी सरा कडल्यान कलेक्ट कर. तशेंच असलम नेक्स्ट नूर वस्त नरेश वस्त सॉरी नरेश नेक्स्ट सपनीश सावंत of Jai Bhavani Club Kakoda. Sapnesh. Next. Shramesh Sawant, Bablu. आणि यश आनंद प्रभुदेसाई. So giving token of love to all the owners participating in these competitions. So looks to be all over here for Jai Bhavani Club Kakoda. So great start for Kakoda boys. They were looking strong on the paper as far as top 7 are concerned, and only top 7 are definitely performing well for them in the first match. And in 5 overs, there is going to be the top 5 players who are definitely going to outclass the other Australian players. So Mansoor Mullah, the owner of Starboys team.
This time a pull shot, getting a 6, but it's call coming too late. So this is going to be the 5th and the last over. Definitely a big loss is not going to cost the run rate here, because the matches are not definitely played on the run rate basis. So it's going to be the points and then the bowl out, if at all teams level at par with the points. Going for the switch hit, didn't time it that well. So 35 is the score, very low. Maybe total was a little too much to handle for Jeb on Club Kakoda. This is the full toss ball, might go for 6 runs. Yes, it does. A little late, but I think Jeb on Club Kakoda will get a little sigh of relief as their batters little down. They have got a pretty good, decent batting down the order. The top order did not click, and the bowlers also did not perform as well as their name and fame shows in the world of cricket in Goa. This might be once again in the air, and it's being taken, dropped. As Aniket Patikar there at the fine leg region, square leg region, and he drops the catch. In important matches, it's definitely going to hurt Kakoda boys. Not at this stage. Played down the ground, carpet shot for only a single. So it's all over here for Jayabani Club Kakoda in this first match. Meanwhile, I request sir to please come out in the middle. तशेंच हांव सराक रिक्वेस्ट करता ह्या वेळार तुजी 2 उतरां जावनी, कारण अदूच्यान आमी राविल्ले. देव बरें करूं हरीश बाब. स्टार बॉयज भुरगे खंय ते सगळे हांगा या म्हजे पयले. आनी ओनर्स ऑफ टीम्स. इन द मीन टायम दोन्ही टीमी बाकीचे टॉस जिंकल्या ते आनी टॉस हारल्या ते. आनी हांव पयलीं सुवातेर स्टार बॉयज ऑफ कुडचोरे म्हाका दिसता कितलेच वर्सां टुर्नामेंट करता, आनी हांव मनसूर आनी तेजे सगळे वांगड्याक हांव शाबासकी दिता. इतले इजी आसना हे टुर्नामेंट घडोवन हाडपाक, आनी हार्डवर्क खूब लागता. पयलीं टिमी एकठांय करपाक, ऑक्शन करपाक, आनी मागीर ऑर्गनायज करपाक. सो आज आमचे मदें प्रसन्ना बाब आसा, बाकीचे सगळे टीम ओनर आसा, आनी स्टार बॉयज. तशेंच आमचे मडगांवकर भाऊ जो आमचो सिनियर सिटीजन कुडचड्या वयलो. हांव स्टार बॉयज हॉल बर्थडे 92 बर्थडे 92 न्ही सर 92 पळय याद आहा 91 92 92nd बर्थडे. सो सगळे आमी ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा. बेगिना बेगीन 100 जावची, कित्याक अशें आमी विनंती करता. आनी कुडचड्या वयलो आमचो मडगांवकर भाऊ जो खूब वर्सां स्थापन करून बिझनस, आज ताका खूब मान आसा. हांव ताका तेजें आरोग्य आयुश्य अशेंच फुडें आमकां गायड करपाक रावचें अशें विनंती करता. तशें स्टार बॉयज ऑफ कुडचोरे जो ऑर्गनायज करता, हांव जाणा की इट इज नॉट डिफिकल्ट. प्रायज मनी बरे दवरलेले आसा, आनी आमचे स्पॉन्सर खूब आसा दिवपाक. कुडचड्या वयले बरे फिलंथ्रोपिस्ट आसा, म्हजे वांगडा वरुण बाबा आसा, बाकीचे आसा. आज येवना ते, मागीर येतले फाल्यां बी. सो तेजे खातीर हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेंचो जर सपोर्ट नाशिल्लो जाल्यार हे सगळे ऑर्गनायज करपाक डिफिकल्ट आसता. आनी सगळ्यांनी सपोर्ट केले जाल्यार हे फुडले टुर्नामेंट जाता. सो तेन्ना हांव सगळ्यांक स्पॉन्सरांक देव बरें करूं म्हणटा. टीम ओनरांक, कित्याक टीम ओनर आतांच म्हाका एकटो टीम ओनर सांगतालो की टीम बरी करपाक जाय जाल्यार फायनान्शियल हेल्प जाय पडटा. आनी अशें करून एका बेनिफीट कांय नासतना स्वता आपूण ते करता म्हणजे भुरग्यांक फुडें काडपाक. हांवूय तांकां सगळ्यांक टीम ओनरांक शाबासकी दिता. आनी मे द बेस्ट टीम वीन अशें म्हणून परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. हरीश सर तसोच हो एक यादस्तीक वरुण कुडचडकार मातसो कलेक्ट कर तुजो. देव बरें कर सर, तूं टायम काडून हांगा आयलो आनी इनॉग्रल सेरेमनीक हजर रावलो.
वोट ऑफ थँक्स सरान डायरेक्ट ना तशें ना म्हणपाक मेळना मनसूर मातसो यो आनी वोट ऑफ थँक्स दी आं यो यो सगळे येयले म्हणटा तांकां सगळ्याक देव बरें करूं थँक्यू आनी काब्राल सराक चड देव बरें कित्याक म्हणल्यार काब्राल सरा लागून हो स्टार बॉय उबो आसा काब्राल सरा काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा जालें काळजांतलीं उतरां काळजांत पावलीं over to Ashok Naik sir for further updates in commentary in his good voice. Next updates in Hindi. थैंक यू सर धन्यवाद हरीश सर टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रही है स्टार बॉयज क्रिकेट टीम और क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करते हुए ओवर पिच गेंद एक बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर हवाई फायर और गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर 6 रन के लिए। आने वाले मैच के लिए हम कॉल कर रहे हैं जय भवानी क्रिकेट टीम और काकोड़ा बॉयज दोनों टीम फोटो सेशन के लिए प्लीज जल्द से जल्द प्रेजेंटेशन बॉक्स के साथ संपर्क करें। जय भवानी और काकोड़ा बॉयज बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और 6 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पर पहुंचा। एक अच्छी शुरुआत आक्रामक शुरुआत और बॉलिंग मार्ग पर आनंद पाटिल अगली गेंद लेकर आगे निकले बड़े शॉट के लिए लेकिन आखिर में अपने स्ट्रोक को चेक किया जैसे गेंद की लंबाई को देखा सम्मानजनक खेला विकेट कीपर तेजी के साथ आते गेंद को फील्ड करते कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। मुकाबला जारी आज के पहले दिन का दूसरा स्टार बॉयज और क्रिस बॉयज इन दो टीमों के बीच में। आनंद पाटिल अपने बॉलिंग मार्क पर राइट आर्म ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से बहुत ही अच्छा शॉट स्विच हिट इस बार लाजवाब टाइमिंग एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर और एक बेहतरीन शॉट और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब टाइमिंग स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज करिए सनेश और सनेश का साथ देते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर सैयद बद्दी। सनेश और सैयद बद्दी ये जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए थोड़े से महंगे साबित हुए। पावर प्ले का पहला ओवर आनंद पाटिल का और एक बहुत ही शानदार शुरुआत बिना किसी नुकसान से स्कोर हो चुका है 20 रन स्कोर बोर्ड पर। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ दिवेश पूरी स्कोरिंग की जानकारी दे रहे हैं और उन्हीं के साथ सर हरीश काकोड़कर और मैं अशोक नाइक आप सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से।
स्टार बॉयज क्रिकेट टीम आपसे रिक्वेस्ट है, आपका अतिरिक्त खिलाड़ी प्लीज कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। स्टार बॉयज क्रिकेट टीम। तो फिलहाल पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर पावर प्ले की समाप्ति के बाद 20 रन स्कोर बोर्ड पर। एक अच्छी शुरुआत। सामने सैयद बद्दी, एक बड़े शॉट के लिए जाने जाने वाला है बल्लेबाज, और बॉलिंग में परिवर्तन। दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई प्रवीण राउत आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक आक्रामक शुरुआत मैदान पर। स्कोर हो चुका है टोटल 20 रन। शॉट गेंद इस बार बैकफुट पर निकले, बहुत ही लाजवाब शॉट इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और एक चौका स्कोर के खाते में, और इन 4 रन के साथ से स्कोर पहुंचा टोटल 24 विदाउट लॉस, 24 रन बिना किसी नुकसान से। गेंदबाज प्रवीण राउत का स्वागत किया एक बड़े शॉट के साथ, चौके के साथ सैयद बद्दी ने। 24 रन टोटल स्कोर। थोड़ा सा दूर से खेलना चाहते थे इस बार, ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, और वाइड बॉल के साथ एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 25 रनों पर। 5 ओवर का मैच। स्टार बॉयज ऑफ कुरचोरम जिनसे आयोजित ये एक बहुत ही स्टार बॉयज चैंपियंस ट्रॉफी, लगातार 3 दिन ये क्रिकेट का सफर आपके साथ चलता रहेगा। और इसी बीच में अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर ओवर पिच गेंद, हवाई फायर, वाइड लॉन्ग ऑन पर कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। टॉस जीता और सामने फील्डिंग करने का, गेंदबाजी करने का फैसला किया। और एक बेहतरीन शॉट इस बार, और एक हवाई फायर गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। दोनों बल्लेबाज बिल्कुल आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और से सनेश, तो अब सामने सैयद बद्दी। प्रवीण राउत अपने बॉलिंग मार्ग पर थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं इस ओवर में, क्योंकि बड़े शॉट लगा रहे हैं बल्लेबाज। एक अच्छा विकेट है, फ्लैट विकेट है, और बहुत ही खूबसूरत मैदान है। और इस बार अपने आप को रोका, शायद थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई थी सैयद बद्दी को। स्ट्राइक पर बिल्कुल हट गए विकेट से, और अंपायर का भी इशारा हो चुका है। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर, और सामने सैयद बद्दी। स्कोरबोर्ड पर टोटल स्कोर हो चुका है 37, 37 रन बिना किसी नुकसान से। सनेश गांवकर और सैयद बद्दी ये जोड़ी मैदान पर। अच्छी गेंद इस बार, ड्राइव किया गेंद को ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर, काउंट कारपेट के साथ। इस बार काउ कॉर्नर पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, थ्रो करते। एक सिंगल आराम के साथ बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा, 38 रन पर पहुंचा। एक अच्छी शुरुआत मैदान पर। 5 ओवर का मैच है। पहला मुकाबला थोड़ा सा एक तरफी रहा, लेकिन ये दो बेहतरीन टीम आमने सामने, और देखना होगा कि कितने रनों पर शायद रुक जाती है बल्लेबाजी में क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम। छोटी गेंद इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप पर ये थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर के साथ ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन पर, एक मिड विकेट पर, एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। ये दूर की फील्डिंग है स्टार बॉयज क्रिकेट टीम की। टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, सामने बल्लेबाजी को मौका दिया क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम को। इस बार बैकफुट पर निकले, कट किया गेंद को ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग पर, फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, बड़े इत्मीनान के साथ 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सिंगल बना, खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 39, 39 रन बिना किसी नुकसान से। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ दिवेश बिल्कुल बहुत ही सुंदर स्कोरिंग की जानकारी दे रहे हैं, और टूर्नामेंट के साथ अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ जुड़ चुके हैं सदगिरी नाइक, उन्हीं के साथ पुण्य पालकर और नीलेश
नाईक ये अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ जुड़ चुके हैं। सर नीलेश नाइक और पुण्या पालकर मैदान पर, तो कमेंट्री बॉक्स में सदगिरी नाइक इस मैच को देखते हुए। बॉलिंग में परिवर्तन 2 ओवर की समाप्ति के बाद तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर। और फुल टॉस गेंद, हवाई फायर, देखना होगा थोड़ा सा शॉट बिल्कुल, लेकिन नहीं, मौका नहीं मिला बिल्कुल। मिड विकेट पर गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर। शुरू में ऐसा लगा कि गेंद खड़ी हो चुकी है मिड विकेट पर, लेकिन गेंद चली गई मिड विकेट फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। गेंदबाजी में धीरज स्ट्राइक एंड पर सामने एक बार सनेश गांवकर एक बड़े शॉट के साथ स्कोर को अपने टीम को आगे बढ़ाते हुए। तीसरा ओवर मैच का 5 ओवर का मुकाबला। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, हल्का सा अपील जरूर होता, रन पर थ्रो किया था लेकिन गेंद नहीं लगी स्टंपों पे। बैकअप हो रहा था मैदान पर। अंपायर नीलेश नाइक का इशारा लेग बाइज का, फिलहाल 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई ऑफ साइड पर, कवर पर फील्डर गेंद को थ्रो किया। और जय भवानी क्रिकेट टीम आपसे रिक्वेस्ट है, आइए आपकी पूरी टीम फोटो सेशन के लिए प्लीज जल्द से जल्द संपर्क करें। ओ इस बार मौका बनेगा नहीं, ओ बेहतरीन कैच, लेकिन बिल्कुल बाहर बिल्कुल निकले थे अपने, जो कि लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कोशिश बढ़िया थी आनंद पाटिल की। और थर्ड अंपायर के लिए कॉल हो चुका है अंपायर का। तो तीसरे अंपायर का इशारा 6 रन का। बहुत बढ़िया कोशिश थी लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, दाद देनी पड़ेगी फील्डिंग को, लेकिन पैर बिल्कुल जो कि बाउंड्री रोप से बाहर थे। 6 रन मिल गए स्कोर के खाते में। 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए टोटल 52। और इस बार फिर से एक बार तगड़ा शॉट, क्या ये मौका बनेगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर? गेंद के नीचे आते, बहुत ही सुंदर जजमेंट और पहले विकेट का आगाज होता हुआ मैदान पर। 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी, थोड़ी सी पुलर लेन की गेंद थी और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक बिल्कुल आराम के साथ गेंद के नीचे आते कैच को लपेटा। 52 लॉस ऑफ 1 विकेट। डीजे Pikachu. बीच बड़ी साझेदारी बनी मैदान पर क्रिस बॉयस की ओर से। और सैयद बद्दी वापस 3 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, 23 रन पर मारकर आउट हुए। धीरज को मिली सफलता। तो अभी अभी जो पहला मैच समाप्त हुआ उस मैच का मैन ऑफ द मैच गौरेश नागवेकर। इस बार ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले से दूर। नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं संदीप। न्यू बैटर संदीप कुर्डीकर। फिलहाल धीरज शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, फिर से एक बार गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। गौरेश नागवेकर इससे पहले मैच के मैन ऑफ द मैच। गौरेश नागवेकर आइए, मैन ऑफ द मैच जो पहला मुकाबला समाप्त हुआ उस मैच के मैन ऑफ द मैच गौरेश नागवेकर। आइए गौरेश, जल्द से जल्द प्रेजेंटेशन बॉक्स से संपर्क करें। फिलहाल 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर
52 लॉस ऑफ 1 विकेट, 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एकमात्र विकेट सैयद बद्दी आउट होकर वापस खुद के व्यक्तिगत 23 रन पर सनेश गांवकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और सनेश गांवकर का साथ देने के लिए न्यू बैटर संदीप कुर्डीकर। सफलता मिली दुरस को। गौरेश नागवेकर मैन ऑफ द मैच और हम यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर प्रसन्न बेंडे जिनसे हाथों मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। गौरेश नागवेकर मैन ऑफ द मैच। आइए गौरेश जल्द से जल्द। और सर प्रसन्न भेंडे जिनसे हाथों आपको ट्रॉफी से पुरस्कृत किया जाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी में परिवर्तन। माफ कीजिए दोस्तों, अभी भी जो कि तीसरा ओवर जारी है। धीरज गेंदबाजी कर रहे हैं जिन्होंने पहला ब्रेक थ्रू दिलाया अपने टीम को। थोड़ा सा फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं मैदान पर और काकोड़ा बॉयज और आने वाला मैच होगा, जल्द से जल्द संपर्क करें। और गौरेश नागवेकर हाँ मैन ऑफ द मैच जो पहला मैच समाप्त हुआ गौरेश नागवेकर। हमारी आवाज अगर आप तक आ चुके हैं गौरेश नागवेकर, थैंक यू। तो आपको सम्मानित किया जाएगा सर प्रसन्न भेंडे जिनसे हाथों। दोस्तों देरी से मुकाबला शुरू करो क्योंकि आज का पहला दिन है। पूरे दिन में 10 मैच खेलने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप शुरू से ही बिल्कुल हमारा साथ दे समय के साथ। टॉस जीता स्टार बॉयज क्रिकेट टीम ने फील्डिंग करती हुई गेंद जो कि और बल्लेबाजी को मौका दिया क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम को। एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है, अच्छा स्कोर जो कि अब तक दिखाई देता हुआ 52 रन 52। तीन ओवर की समाप्ति हुई और 3 ओवर के बाद टोटल हो चुका है 52 रन। चौथे ओवर की शुरुआत थोड़ा सा वार्म अप गेंदबाज कर रहे हैं और दो बैटर है सनेश गांवकर और संदीप कुर्डीकर। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, दिलवेश देसाई। छोटी गेंद इस बार पुल किया गेंद को मिड विकेट पर और गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमारेखा से बाहर। 6 और 6 रन के लिए डीजे। और बढ़िया शॉट इस बार ओवर पिच गेंद। इस बार एक बैठक शॉट स्वीप किया मिड विकेट पर। फिर से थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, 1 रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई और उसी का फायदा उठाते हुए 2 रन तेजी के साथ पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 60 रन पर, 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन। चौथा ओवर मैच का चलता हुआ। राइट आर्म ओवर द विकेट दिलवेश अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार अल्टी पल्टी करना चाहते थे, थोड़ी सी पुलर लेन की गेंद पैरों पे लगते हुए कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। अब इस बार उतना अच्छा मौका नहीं मिला शॉट के लिए सनेश गांवकर को। स्ट्राइकन पर सामना करते हुए अगली गेंद का ओवर पिच गेंद इस बार मिड विकेट पर सामने बिल्कुल फील्डर के हाथों में। एक अच्छा कैच और दूसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ। 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर डीजे।
बहुत एक अच्छी इनिंग देखने को मिली। ओपनिंग जोड़ी की अगर बात की जाए तो सैयद बद्दी ने बनाए थे 23 रन और अभी अभी आउट हुए सनेश गांवकर 35 रन बनाकर। बहुत ही सुंदर स्कोरिंग के हमारे जो के साथ जुड़ चुके हैं दिवेश, हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल सफलता मिलती हुई दिलवेश को। और न्यू बैटर मैदान पर एंजिलो अंपायर से गार्ड लेकर सामना करेंगे। अगली गेंद का 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर खेल चलता हुआ चौथे ओवर का मैदान पर। सफल होकर खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन इस बार उतना अच्छा टाइमिंग नहीं कर पाए। गेंद जाके पैरों पे लगते भी विकेट के ऊपर गेंद को कलेक्ट करते, गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर दिलवेश एक शॉर्ट स्क्वायर लेग ऑन साइड पर, एक डीप स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑन पर, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक कवर पॉइंट पर, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, विकेट कीपर के साथ पीछे एक शॉर्ट टर्न मैन पर और एक नया 14-15 रन अप के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट। कमेंट्री बॉक्स की ओर से दिलवेश अगली गेंद लेकर। ओवर पिच गेंद इस बार बिल्कुल बीट किया बल्लेबाज को, बल्ला घुमाया लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। एक लेग कटर गेंद हरकत करते हुए बल्लेबाज को परेशान करते हुए, बीट करते हुए एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई, क्योंकि पहले गेंद पर छक्का लगा था लेकिन गेंदबाज ने दिलवेश ने बाकी में कम बैक किया, एक विकेट चटकाते हुए 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 60 रन 2 विकेट पर बल्लेबाजी कर रही है। सामने क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम, स्टार बॉयज क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजों को मौका दिया और अंतिम ओवर का खेल बाकी अभी भी इस मैच का। जिस तरह से शुरू में 2 ओवर में बल्लेबाजी रही थी, लग रहा था कि एक बड़े स्कोर की और कदम बढ़ा रही है, क्योंकि 2 ओवर में सिर्फ 39 रन बनाए थे, लेकिन बाद में बहुत ही शानदार कमबैक किया दोनों गेंदबाजों ने, एक ओर से जो कि धीरज और उन्हीं के साथ दिलवेश। आखिरी ओवर का खेल देखने होगा, बॉलिंग में परिवर्तन अंतिम ओवर में। गेंदबाजी में आखिरी ओवर में साहिल गांवकर। ओ पहली गेंद मौका दिया बड़े शॉट के लिए, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर गेंद 6 रन के लिए। फुल टॉस गेंद एक बार और बिल्कुल बड़ा मौका बना बल्लेबाज को। फुल टॉस गेंद पर एक बहुत ही बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए। 6 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 66, लॉस ऑफ 2 विकेट, 66 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप पर इस बार नीचे रही, थर्ड मैन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते थ्रो किया, लेकिन एक सिंगल बन गया इस बीच में, कोई नुकसान नहीं। इस 1 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 67 रन पर, 67, लॉस ऑफ 2 विकेट, 67 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर का खेल जारी। इस बार मौका बनेगा विकेट कीपर के लिए, थोड़ी से दूर से खेला इस बार। ओवर पिच गेंद जरूर थी, लेग कटर और बल्ले का बिल्कुल बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के हाथों में एक आसान सा मौका बना और तीसरा विकेट वापस। डीजे You were the shadow to और अंजलो के आउट होने के बाद न्यू बैटर और एक मैदान पर संजोत। फुल टॉस गेंद इस बार ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए।
4 रन स्कोर के खाते में और बने। इस ओवर में विकेट जरूर मिला है साहिल गांवकर को, लेकिन 2 फुल टॉस और 2 फुल टॉस पर 2 बड़े शॉट लगे। पहली गेंद पर छक्का लगा, पिछले फुल टॉस पर चौका लगा और 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा 71 टोटल। लॉस ऑफ 3 विकेट, 71 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर पिच गेंद, इस बार हवाई फायर, मौका बनेगा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर गेंद पर और इसी के साथ चौथे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। 4 विकेट पर 71 रन। बल्लेबाजी में क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम, 5 ओवर का मैच। स्टार बॉयज क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी को मौका दिया क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम को। एक शुरुआत आक्रामक रही थी सनेश गांवकर और सैयद बद्दी के बीच में, लेकिन उसके बाद गेंदबाज ने कमबैक किया मैदान में और इसी बीच में और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, स्वप्नेश। न्यू बैटर स्वप्नेश नाइक मैदान पर। 71 रन 71, लॉस ऑफ 4 विकेट, 4 विकेट पर 71 रन। तो पहले 5 ओवर का खेल और 5 ओवर की आखिरी गेंद। साहिल गांवकर अपने स्पेल की समाप्ति के और सामने बैटर है स्वप्नेश नाइक। स्लो ओवर में इस बार जल्दी खेल बैठे, बिल्कुल बीट किया बल्लेबाज को। तो इसी के साथ 5 ओवर का खेल टोटल जो कि समाप्त हुआ और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 71, टारगेट रखा है 72 का। बल्लेबाजी रही जो सनेश गांवकर ने 35 रन बनाए, सैयद बद्दी ने बनाए 23 रन। आखिरी के 2 ओवर बहुत ही अच्छे रहे गेंदबाजी में। दिलवेश एक सफलता, एक छक्का जरूर लगा, उसके बाद एक चौका एक छक्का साहिल गांवकर की गेंदबाजी पर, उन्होंने भी एक सफलता हासिल की। टारगेट है 72 रनों का मैच को जीतने के लिए। Where are you now? Where are you now?
स्टार बॉयज क्रिकेट टीम, आपका अतिरिक्त खिलाड़ी प्लीज कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। स्टार बॉयज क्रिकेट टीम कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आपका अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। 72 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए स्टार बॉयज क्रिकेट टीम को, और उनके ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का। पहला ओवर लेकर गुरुशन चिकलगी और पमेंडिस, सामने आनंद पाटिल, और आनंद पाटिल का साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइकर पर बैटर। प्लीज स्टार बॉयज आपका अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। छोटी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट कट किया, इस बार बड़े खूबसूरती के साथ डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे इस बार अल्टी पल्टी करना चाहते थे, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले के बीच में। पावर प्ले का पहला ओवर और पावर प्ले में 2 शॉट, 72 रनों का टारगेट है, 5 ओवर का मुकाबला है। 14.5 के 7 रन रेट के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी स्टार बॉयज क्रिकेट टीम को। ओवर पिच गेंद, इस बार मिस टाइम शॉट, क्या मौका बनेगा मिड ऑफ पर फील्डर, और बहुत ही बेहतरीन कैच, बिल्कुल अपने पीछे दौड़ लगाई एक 10-12 कदमों पर, और वहीं पर एक सुंदर कैच लपेट लिया। आनंद पाटिल वापस, गुरुशन चिकलगी पहला ब्रेक तो दिलाते हुए अपने टीम को। स्कोर हो चुका है 8 रन 1 विकेट पर। डीजे इसके बीच में, लेकिन उससे पहले देखना होगा ये दो टीमों के बीच में जो जारी है मुकाबला, कौन सी टीम जीत हासिल करती है। गुरुशन चिकल की कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, और इस बार फुल टॉस गेंद, थोड़ी सी ताकत नहीं लगी थी गेंद पर, लेकिन लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर से बहुत आगे गिरी गेंद। संपर्क उतना अच्छा नहीं था आते आते साहिल के बल्लेबाजी में, लेकिन बिल्कुल लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर सीमारिका पर जो फील्डर था उसके लिए मौका नहीं था। एक सिंगल बन गया स्कोर में, और इस एक रन के साथ से स्कोर बढ़ा 9 पर। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर 72 रनों का जवाब देती हुई स्टार बॉयज क्रिकेट टीम मैदान पर। शफल हुए, इस बार खेला बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फील्डर अच्छी फील्डिंग, रन का बिल्कुल मौका नहीं दिया। तो पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन
एक विकेट के नुकसान पर। टारगेट है सामने 72 का, 72 रनों का, और उसका जवाब देती हुई स्टार बॉयज क्रिकेट टीम। स्कोर 9, एक विकेट पर। एक अच्छा विकेट आनंद पाटिल जो ऑलराउंडर खिलाड़ी टीम के, वो आउट होकर वापस। देखना होगा गेंदबाजी में परिवर्तन कौन आते हैं। बॉलिंग मार पर गुरुशन चिकलगी पहला ओवर शुरू किया था, एक सफलता दिला दी अपने टीम को, और उसके बाद दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर साहिल गांवकर और साहिल गांवकर के साथ नवदीप, ये दो बैटर, और बॉलिंग मार पर क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम की ओर से दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई 9 रन, एक विकेट पर। संजोत आ चुके हैं गेंदबाजी पर। ओवर पिच गेंद थोड़ी सी नीचे रही, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया, एक रन बना, लेग बाइज का इशारा, और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा डबल फिगर में 10 पर। एक विकेट के नुकसान पर खेल दूसरे ओवर का जारी। मैदान पर दो बैटर है, नवदीप, और नवदीप के साथ साहिल गांवकर। गेंदबाजी कर रहे हैं संजोत, राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर अगली गेंद लेकर। और बहुत ही लाजवाब कवर ड्राइव, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, बहुत ही बेहतरीन एक सुंदर शॉट, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे लड़के हम आए जो बोले नामुमकिन हम करके दिखाए, करेंगे ये याद अगर यहाँ से हम जाए, इस खेल में हम लेजेंड। सामने बॉलर के ऊपर से गेंद को खेला इस बार, और जब तक लॉन्ग ऑन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, समय था दोनों बल्लेबाजों को एक रन पूरा करने का। राइट आर्म ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर। ओ इस बार बिल्कुल बाहर जाने वाली गेंद के छेड़खानी की, पीछा किया, भीतरी किनारा लेते हुए गेंद विकेट के ऊपर के हाथों में। साहिल गांवकर आउट होकर वापस, टीम को मिलती हुई 2। सफलता मिली संजोत, राइट आर्म ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर। फुल टॉस गेंद, लेकिन उतना फायदा नहीं मिला। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक रन इसे बीच में पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सिंगल के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 2 ओवर के बाद टोटल 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर के खेल की समाप्ति हुई, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
स्टार स्टार बॉयज क्रिकेट टीम, आपका प्लीज अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। दोस्तों बहुत मुश्किल हो रहा है, स्कोरर को नाम पता होना चाहिए। हर मैच के लिए आपके लिए मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी है, तो नाम पता होना चाहिए। दोस्तों प्लीज स्टार बॉयज आइए, आपका अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। 16 रन टोटल 2 विकेट पर। फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। तो न्यू बैटर मैदान पर धीरज, नवदीप और नवदीप के साथ धीरज, ये जोड़ी मैदान पर। स्लोवर वन, जल्दी खेल बैठे, विकेट कीपर गेंद के नीचे, और इसी के साथ तीसरा विकेट चला गया मैदान पर। डीजे कौन अचीवर ये तो साफ है। स्लोवर वन, लेग कटर, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। अब बिल्कुल वेरिएशन कर रहे हैं एंजिलो अपने गेंदबाजी में, कभी तेज गेंद यॉर्कर लेन की, कभी स्लोवर वन, लेग कटर, और बल्लेबाज को बिल्कुल जो कि बीट किया इस गेंद पर। महादेव स्ट्राइक गेंद पर सामना करते हुए अगली गेंद का तीसरा ओवर मैच का जारी। सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, एक ही रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। एंजिलो अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से। फिर से लेग ब्रेक, लेग कटर, हल्का सा अपील अंपायर की ओर, लेकिन बहुत ही अनुभव के साथ दोनों अंपायर मैदान पर, पुण्या पालकर और नीलेश नाइक। नो बॉल का इशारा अंपायर का, नो बॉल का इशारा। तो नो बॉल के साथ और एक रन बन गया स्कोर के खाते में स्टार बॉयज क्रिकेट टीम के। तो आने वाली गेंद होगी जो फ्री हिट की गेंद होगी, मौका बल्लेबाज को बड़े शॉट के लिए। फ्री हिट की गेंद ऑन साइड पर, फाइनल की तरफ गेंद चली गई, फील्डर गेंद के पीछे, आउटफील्ड बहुत तेज है और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, और 4 रन मिल गए स्कोर में स्टार बॉयज क्रिकेट टीम के। और इन 4 रन के साथ से स्कोर टोटल
27 loss of 3 wicket. 27 total score, loss of 3 wicket. एक बहुत अच्छी गेंद इस बार फिर से एक बार एंजेलो। तो इसी के साथ स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर 27 लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति हुई और 3 ओवर के बाद टोटल 27 लॉस ऑफ 3 विकेट, 27 रन 3 विकेट पर। आने वाले 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी। टारगेट है 72 का मैच को जीतने के लिए। चौथे ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में परिवर्तन। उमेश पाटिल आ चुके बॉलिंग मार्ग पर। ओवर पिच गेंद, करारा शॉट, मिड विकेट पर हवाई फायर, गेंद सीमारेखा से बाहर। 6 6 रन के लिए। डीजे बहुत लोग that red dot will make you do a dash जैसे Morse code। इस बार ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, सामने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर आउट। तो चौथा विकेट चला गया टीम का, स्टार बॉयज क्रिकेट टीम का। ओवर पिच गेंद जरूर थी, लेकिन बल्ले से निचले हिस्से से लगी, बीचों बीच नहीं लगी। और गैप जो था लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में, उस गैप में भी खेलने में असफल रहे। तो इसी के साथ चौथे विकेट का पतन होता हुआ खेल जारी चौथे ओवर का, और स्कोर हो चुका है 33 लॉस ऑफ 4 विकेट, 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक और से नवदीप गावकर शुरू से इस मैदान पर टिके हुए, रुके हुए, और उनका साथ देने के लिए सार्थक न्यू बैटर मैदान पर सामना करेंगे। सार्थक अगली गेंद का। तो यश की ओर से 1000 रुपए का इनाम। अगर पहली गेंद पर छक्का लगाया, सिक्सर लगाई सार्थक ने, तो 1000 रुपए का इनाम आपको मिलेगा यश की ओर से। थैंक यू सर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार ऑफ्टम से बाहर, लाइन पर बैठ के गेंद ऑफ्टम से दूर। वाइड बॉल का इशारा, वाइड बॉल के साथ 1 रन मिला स्कोर में, और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 34 34 रन पर। 4 विकेट पर 34 रन, खेल जारी चौथे ओवर का। उमेश पाटिल गेंदबाजी पर। इस बार फिर से थोड़ी सी हवा में गेंद, लेकिन कवर पर फील्डर से दूर। पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल के साथ सार्थक ने अपना खाता खोला। बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, रन रेट बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर। टारगेट टोटल 72 का, खेल जारी चौथे ओवर का। कहीं ना कहीं आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को। छोटी गेंद इस बार, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में, और विकेट कीपर के साथ एक बार धीरे धीरे उमेश पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट शॉट, गैप में गेंद, और स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बड़ी देर के बाद चौका मिला स्कोर में स्टार बॉयज क्रिकेट टीम को,
और इस चौके के साथ स्कोर टोटल 39, 39 रन 4 विकेट पर। फिर से थोड़ा सा दूर से खेला सिलिमिडॉन पर, थोड़े से फिसले फील्डिंग के साथ 1 रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, और जब तक मिडॉन पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 41 रन पर 41। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, टारगेट 72 का, लास्ट ओवर टू गो, आखिरी ओवर 6 गेंदे और 6 गेंदों में 31 रन मैच को जीतने के लिए। बिल्कुल शानदार जानकारी दिवेश हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में स्कोरिंग का काम करते हुए, एक बहुत ही अच्छे स्कोरर के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं। 6 गेंदे और 31 रन मैच को जीतने के लिए स्टार बॉयज क्रिकेट टीम को। बॉलिंग में परिवर्तन, लास्ट ओवर आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज गणेश पाटिल आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। और पहली गेंद पर उड़ाया, स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग पर एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे समाप्त नहीं हुआ, यह बिल्कुल इशारा करते हुए बल्लेबाज सार्थक। अभी भी 5 गेंदों का खेल बाकी है मैच में, और 5 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 25 रन। फुलटॉस, लेकिन इस फुलटॉस का फायदा नहीं हुआ, कैच जरूर छूटा, लेकिन इस फुलटॉस के लिए मौका था बल्लेबाज को, और अंपायर का इशारा आ चुका है जो कि नो बॉल के लिए बिल्कुल चेक हो रहा है। पहली गेंद पर सिक्सर लगी, मैच 5 गेंदों पर 25। उसके बाद एक निश्चित रूप से फुलटॉस पर कैच जरूर छूटा है, 1 रन भी बना है स्कोर में। नॉट आउट, सही गेंद है बिल्कुल। तो फुल टॉस गेंद थी, और फुल टॉस गेंद पर बल्लेबाज के लिए मौका था बड़े शॉट के लिए, कैच छूटा और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। लेकिन कहीं ना कहीं उस गेंद पर बड़ा शॉट होना चाहिए था। फिलहाल अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर गणेश पाटिल, सार्थक और सार्थक के साथ नवदीप गांवकर, ये जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी में। 72 का टारगेट, टोटल 24 रन अभी भी चाहिए। इस बार थोड़ा सा दूर से फिर से खींचकर खेला हुआ शॉट, कवर पॉइंट पर मौका बना, एक आसान सा कैच लपकते हुए, और अब थोड़ा सा मैच निश्चित रूप से फंस चुका है मैदान पर। डीजे
इस बार बल्ले का बेहतरीन किनारा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में, और एक सफलता मिलती हुई इस ओवर में, जो आखिरी ओवर गणेश पाटिल गेंदबाजी पर। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर और एक न्यू बैटर, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार बॉयज के लिए ये मैच फंस चुका है। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी रही, सनेश गांवकर ने बनाए 35 रन, 23 रन बनाए सैयद बद्दी ने। उसके बाद आखिरी 2 ओवर में कमबैक जरूर हुआ था गेंदबाजी के साथ, लेकिन बल्लेबाजी वो नहीं हुई। आनंद पाटिल बहुत जल्दी 2 चौके के साथ, और उनके बाद नवदीप गांवकर जरूर रुके मैदान पर, लेकिन वो आतशी बल्लेबाजी नहीं हुई। इस बार शपल वे खेला गेंद को ऑनसाइड पर स्क्वायर लेग की तरफ, एक सिंगल के लिए, और एक रन के साथ से फिर से थोड़ा सा स्कोर आगे बढ़ता हुआ। टोटल 50 रन जो कि पूरे होते हुए टीम के 50 रन 6 विकेट पर स्टार बॉयज क्रिकेट टीम का स्कोर, टारगेट था 72 का। तो मैच समाप्त हुआ जो, और आने वाला अगला मैच होगा वो होगा यश डेवलपर्स और स्टार बॉयज, इन दो टीमों के बीच में। दोनों टीम जल्द से जल्द कैप्टन स्टार बॉयज और यश डेवलपर्स टॉस के लिए संपर्क करें। फिलहाल इस मैच का मैन ऑफ द मैच, बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने शुरुआत बढ़िया की थी, बल्लेबाज में 35 रन बनाए थे, वो सनेश गांवकर, मैन ऑफ द मैच सनेश गांवकर। तो आइए अगले मैच के साथ शुरू होता है मुकाबला। एक बार फिर से एक बिल्कुल जबरदस्त आवाज के साथ सर हर्ष काकुड़कर आपके सामने माइक्रोफोन पर। गौरेश खांडेकर, यो बेगीन यो. गौरेश खांडेकर प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड दितलो ह्या मॅचीचो. रिक्वेस्ट करता योक योचो बेगीन आनी प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड घोशीत केल्लो आसा सनेश गांवकर. म्हणल्यार टॉस सोडोवपाक यस प्रवीण आयिल्लो आसा. जशे ओनर्साक खबर आसा की प्रत्येक मॅचीक तुमकां टोटल ज्यो 4 मॅचीस जातल्यो तातूंत भितर सगळे प्लेयर खेळिल्ले आसपा जाय लीग मॅचीस. सो मातशें नोट करात. कॅप्टन रिक्वेस्ट करता अंपायर मातसो टॉस उडय. स्टार बॉयज वर्सीस आनंद यश डेव्हलपर्स ही जातली मॅच. सनेश गांवकराक प्लेयर ऑफ द मॅचीचो अवॉर्ड दितलो आमचो गौरेश खांडेकर.
रिक्वेस्ट करता फिल्डिंग साइड स्टार बॉयज मातशे बेगीन ग्राउंडार देवात. तशेंच आनंद डेव्हलपर्स मातशे तुमचे ओपनिंग बॅटर्स आसा ते मातशे बेगीन देवात ग्राउंडार. टायम काडपाचो ना. दिसाक 10 मॅची कंप्लीट करपा जाय आनी म्हाका दिसता त्यो डिफिकल्ट आसा. जर तुमी टायम फास्ट करपा ना ह्या मॅचींतल्यान अंपायर म्हाका दिसता चड शेड्यूल टायम सगळो मेंटेन करतले. बॅट्समॅन इमिजिएटली दुसरो बॅट्समॅन आसा तो ग्राउंडा भितर वचपाक जाय. एवरीथींग वील बी नोटेड. ऑल टायम जो तुमी काडटा तो सगळो नोट जातलो हांगा. प्लीज नोट करात. The openers, Guru Prasad Aroskar and Mohit Gaonkar are out in the middle. And we have seen some wonderful scores in this tournament already, some big totals which have been posted by the teams batting first. So both the teams batting first winning the matches. Sometimes it's good to lose the toss as well. Let's see, these are the two very good players, wonderful batters out in the middle. Mohit is also in form, and Guru Prasad Aroskar is one of the most elegant players to watch around in the cricket circles. A fine left-hander, and it's going to be very difficult to set the field for this guy as he's very strong on both sides of the wicket. So very good outstation players here for Anand Developers. But definitely they will be missing the services of their original icon player Sanjay Naik, who is definitely gone to perform his duties for the Karnataka elections. And he will be also definitely watching this match live on his YouTube, seeing how his team performs, provided that he has got a range over there. So in comes the batter, Mohit, to start. This is once again in the air, might be a catch. Opportunity just enough, well enough. Just enough power to get over the head of the short covers region fielder to start the proceedings with a couple of runs. So Mohit and Guru Prasad, and looking at the start from all the openers previous matches as well. This is short. This is way too short, and this is a easy cut shot up and over the extra cover region fielder for 4 runs. This is short, wide, and ample of time for the batter to play anywhere he wanted. And this is a good start. To start with a boundary in the first 2 balls itself. 6 is the score posted at the moment. Mahadev starting here for Star Boys. And he's up against the outstation players who are doing very well throughout and recently in Curchorem Premier League. Now this is bad bowling here. He's bowling one wide outside the off stump, one down the leg side. Well, captain won't be happy with that. Regarding Mohit Gaonkar, he was in the team that was crowned the champions of Curchorem Premier League All India tournament, recently concluded in the last Sunday. This time in the air, he timed it well and away from the fielder and just outside.
Well, just is enough in cricket. He timed it really well and also finding the placement. So he already got a boundary and now a 6 as well, taking the score quickly more on to 13. So far we have seen everything from the bowler. Mahadev, one short ball, one full ball, one full toss, which has been clipped. This time left it. Maybe it was close to the leg stump. That's the reason why you can see the hands on the heads. But umpire, well, he says it's a wide. This is a loose bowling here. A full toss down the leg side once again. Well, you cannot set the field for these particular deliveries. This is easy pickings here. These are power play overs. You just have to find a gap and he's doing it well. Mohit Gavkar. All the deliveries have been faced here by Mohit and he has been helped here by the bowling, which is lackluster at the moment. Star boys will be bowling like stars. What a shot! What a shot this is! Half jab pull shot here from Mohit Gavkar, and this is turning out to be the most expensive over of this tournament. 24 already on the board, and with one ball to go. That's one of the showcase of talent of Mohit Gavkar. This is one more. This is one more. Surya Kumar Yadav, I remember he played it yesterday, last night, and Mohit Gavkar has played it in the morning. Rollicking start for Anand CS developers. The outstation players are doing a fabulous job. 30 without loss after completion of 1. So the most expensive over so far in this tournament, bowled by Mahadev Fateh. And the batter has been helped, you can say, in one thought. It was easy pickings. Sometimes the batters also play good shots, but this was loose bowling down the leg side, full toss ball, some outside the off stump short balls. And now it is Guru Prasad Aroskar against Anand Patil. This time he has played it well, just checked his shot. And he knows that Anand Patil is definitely a good bowler. Guru Prasad is not the one who is going to go helter-skelter, belting the ball away right from the start. If the ball is there in the zone, in the arc, to be swinging on both sides of the wicket, if he feels that he were to go after the ball, then he will go. Otherwise, he's nudge around for singles. This time just played it down the ground, another single. So Anand Patil trying to curtail down the scoring rate of this Anand CS developers team. 2 singles of the first 2 balls, taking the score to 32. This time driven nicely. So he's doing sensibly at the moment. They must have definitely calculated how many are the bowlers around, and are they waiting for the 3rd or 4th or 5th bowler. Options here from Star Boys. The first bowling option has been peppered for the 60s with a score of 30 runs, and they are a little subdued at the moment against Anand Patil. This is in the air. This might be a catch. Anand Patil, the best fielder around in this region. He takes it easily. He takes it easily. That's the class of Anand Patil. He's one of the best fielders around. And 33 for the loss of 1. Anand Patil strikes. Mohit back in the pavilion.
the acting captain of this side after Sanjay Nayak has been missing. He cannot play this tournament because of the duties. But now Suraj Parab, once again, a very good batter. This time, this is a fantastic over here from Anand Patil for Star Boys. Not only has taken the wicket, a very important wicket of Mohit Gakar, who was looking dangerous, but also just concedes 4 runs in this over. Is 34 for 1 after completion of 2. Champion, 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 champion. But just straight to the fielder. Didn't find the placement. Single takes the score to 41. This is the 3rd over in progress. A pretty good total so far as Anand CS Developers is concerned. They've just lost the 1 wicket, and we've still not seen the caliber of this man, the talent that he possesses, Guru Prasad Aroskar. Once again, just trying to take the singles, and loose throw here. Might be going for the 2nd run. Yes, little yes and no hesitation between both these batters, but still he takes the 2 runs. Score moves on to 43. Maybe this is just the first match. 4 matches you are getting as a player to perform. Guru Prasad Aroskar is just trying to get his eyes in to gear it for the big ones. This time, wonderful flick. Might be getting just a single deep down on the leg side. A very elegant player, but so far he has not gone for the big ones. No intent whatsoever. He's just playing well within himself and asking his partners to go for the big ones. And maybe he is the duty has been given to him to play till the 5 overs from the think tank of Anand CS Developers. This time, didn't time well, might be a catch. Oh, little short of Praveen Raut. Didn't time it that well. And another single. So far, apart from that 6, Dilvesh has bowled decently well enough, taking the score to 45 at this moment. This is the 3rd over in progress.
going for that shot. But in the end, it's a dot ball. So good comeback here from Dilvesh. At the end of 3, it's 45-1. And it went, it could have crossed the road by just ease. He's a class actor, mind you. Just waiting for his time, waiting for his opportunity. That's how you play the game of cricket. When your other batters were playing around, he was just little calm at the non-striker's end. And now he thinks that this is the 4th over. I need to get a move on. And he has got already the first 6 under his kitty. This is once again, this is beautiful. He was just maybe a 5 meters. Oh, he stops it. He stops it. Very good fielding from the fielder, Mahadev Fateh. We felt that he timed it very well. He played it very well. But still, it was just going to be 2 runs. This is humongous. This is outstanding hit. This is Guru Prasad Aroskar. You don't bowl him over there. This is power striking from Guru Prasad at the right time. Score moves on to 63. I told you he was a little quiet. I know the talent of this man. He can really play everywhere. He can hit sixes almost every part of the ground. A really wonderful talent. Now he has got his timing right. This is even better. This is even better. What a class this is. Wonderfully driven outside the off stump. We are seeing some wonderful shots from Guru Prasad Aroskar, and he is coming back into his act. After completion of 4 overs,
Very good over here for Anand Sesh developers. It moves on to 67 for 1. Be kept inside. I think very good umpiring here from Nilesh Naik and Sadgiri. Oh, this is out of here. And I think we have to take a new ball. Oh no, finally ball also wants to say I want to get hit. Ball also liked that shot. So Shantanu Sawant. Well, Shantanu, the good thing about Shantanu is he didn't see that ball going. Now he's ready to bowl the next ball. Oh, he swung it big way. He wanted to maybe show the direction in the market. That's the power that he generated with the wild swing over the Suraj Parab. Another pull shot, and this time, well, Shantanu gets a sweet revenge here, and he'll be very happy to see the back of Suraj Parab. It's 73 for 2. Oh, this is once again, this might be one more wicket here for Shantanu, and dropped here by Noor. Well, Shantanu was staring Noor. I could have got 2 wickets of 2 balls. I feel Shantanu has bowled, although it was a short ball, but he bowled it outside the off stump. The single takes the score to 74. And it will be Guru Prasad Aroskar on strike. And this time, hip time. Oh, this is even better. Just outside, 6 runs. What a shot from Guru Prasad Aroskar. I told you he was quiet for some time. It was like a volcano ready to erupt. And he erupted in the 4th and 5th over. And it moves on to 80 runs. Highest total of this tournament so far, posted by Anand Sesh developers. Ah, shot Amjad, another pull shot. Make it 86 after completion of 5. Guru Prasad Aroskar, I told you he was waiting for his time, and he has come at the right time for Anand Sesh developers. Magnanimous total of 86 runs. Is going to take some chasing to score 87 runs in 5 overs for Star Boys. A wonderful batting display. Enjoyed my moment in the commentary box, and I hand over the mic to Ashok Naik sir for further updates. Oh,
भाई बहुत दिनों के बाद दिखाई देते हुए हमारे बिल्कुल एक अजीज दोस्त सर संदीप नार्वेकर, जिनका स्वागत है। संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। और पहली गेंद इस बार फुल टॉस गेंद उड़ाया स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग सीमारेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे बैकफुट पर निकले इस बार, बहुत ही खूबसूरती के साथ कट किया डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। एक आक्रामक शुरुआत मैदान पर स्टार बॉयज क्रिकेट टीम की 87 का टारगेट है और जो शुरुआत होनी चाहिए थी वो मैदान पर करते हुए ओपनर बल्लेबाज साहिल और साहिल गांवकर के साथ आनंद पाटिल ये जोड़ी मैदान पर। पहले ओवर में हर्षद मातोंडकर हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से और स्कोर बोर्ड पर टोटल 10 रन। पहला ओवर जारी पावर प्ले का बिना किसी नुकसान से। हल्के से गेंद को ड्राइव किया इस बार मिड ऑफ पर फील्डर गेंद को फील्ड करते थ्रो करते कर भी मामला था बिल्कुल। अगर गेंद स्टंपों पे लगती तो खतरा था बल्लेबाज के लिए, लेकिन फिलहाल 1 रन के साथ से सुरक्षित दोनों बल्लेबाज और स्कोर आगे बढ़ा 11 पर पहुंचता हुआ। आने वाला मैच होगा वो होगा काकोड़ा बॉयज और क्रिस बॉयज इन दो टीमों के बीच में। दोनों टीम कैप्टन दोस्तों देरी मत करो, जल्द से जल्द टॉस के लिए संपर्क करें। शॉट ऑफ लेन गेंद हटकर बैकफुट पर निकले, कट करना चाहते थे इस बार। गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद चली गई विकेट कीपर मोहित गांवकर के हाथों में। एक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी रही आज गुरु प्रसाद, उन्हीं के साथ मोहित गांवकर और सूरज परब, ये तीनों शुरू के बल्लेबाजों ने एक बड़ा टोटल बना दिया अपनी टीम के लिए। अल्टी पल्टी करना चाहते थे लेकिन फिर से गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 2 बड़े शॉट के साथ शुरुआत जरूर हुई लेकिन उसके बाद गेंदबाज ने कमबैक किया मैच में और फिलहाल अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। स्लोअर वन इस बार थोड़ा जल्दी खेल बैठे लेकिन मिड ऑन पर सर्कल पर फील्डर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। 1 रन, दूसरा रन पूरा किया और बैकअप कर रहे थे धीरज गेंद को फील्ड करते। 2 रन मिले स्कोर में और इन 2 रन के साथ से पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 13 रन बिना किसी नुकसान पर। हमारे साथ दिवेश बिल्कुल बेहतरीन स्कोरिंग की जानकारी दे रहे हैं। तो आइए फोटो सेशन के लिए क्रिस बॉयज और फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन। पहले ओवर के खेल के समाप्ति के बाद बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं सूरज परब। खुद का पहला फील्डिंग में तब्दीली पावर प्ले की समाप्ति के बाद। एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। टारगेट है 87 का, 87 रनों का और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 13 रन। साहिल गांवकर और आनंद पाटिल ये 2 बैटर और बॉलिंग मार्ग पर सूरज परब। ओवर पिच गेंद इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। फैला दी गई फील्ड। दोपहर के सत्र में मुकाबला जारी। थोड़ा सा गर्मी का मौसम और बिल्कुल अप्रैल और मई की बात करेंगे तो गर्मी महसूस जरूर होगी मैदान में। और इस बार मिले हेलीकॉप्टर शॉट, गेंद हवा में लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हर्षद मातोंडकर गेंद के नीचे और पहले विकेट का आगाज होता हुआ मैदान पर। डीजे
जंगली रमी पे आओ पहले ना विकेट के महाराज, रूप में आउट 24/7 साहिल कस्टमर गावकर सपोर्ट के वापस लिए हाजिर हैं आपकी खातिर। सूरज परब को कैच को पकड़ा, हर्षद मातोंडकर ने स्कोर 13 रन 1 विकेट पर, और आनंद पाटिल का साथ देने के लिए न्यू बैटर महादेव आ चुके हैं मैदान पर। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद, एक अच्छा ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर आते आते एक सिंगल, अपना खाता खोला। इस 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा है, 14 रनों पर खेल जारी। दूसरे ओवर का 5 ओवर का मुकाबला स्टार बॉयज ऑफ कुरचोरम जिनसे ओर से आयोजित ये एक सुंदर शानदार जो कि प्रतियोगिता कुरचोरम चैंपियंस ट्रॉफी, आज पहला दिन, और पहले दिन में दोपहर के सत्र में इन दो टीमों के बीच में यह जारी मुकाबला। ओवर पिच गेंद, गेंद हवा में लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, लेकिन फील्डर को बीट करती हुई गेंद, 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे अल्टी पल्टी, लेकिन गैप में नहीं निकली गेंद। कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, अगर थोड़ी अगल बगल में निकलती तो निश्चित रूप से गेंद 4 रन के लिए निकल सकती थी, लेकिन सामने फील्डर के पास, और गेंद फील्ड होती हुई एक बार फिर से विकेट कीपर के साथ सूरज परब अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर स्वीप करना चाहते थे। ऑन साइड पर गेंद लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का, एक अतिरिक्त रन मिला स्कोर के खाते में। मुकाबला जारी, बल्लेबाजी की यश डेवलपर्स क्रिकेट टीम ने 86 रन और सामने टारगेट रखा है 87 रनों का स्टार बॉयज क्रिकेट टीम को। इस बार ओवर पिच गेंद, हवाई फायर, मिड विकेट पर एक गगनचुंबी सिक्सर, 6 रन के लिए। डीजे छह रन के साथ स्कोर 25। 2 ओवर के खेल की समाप्ति हुई, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 25, लॉस ऑफ 1 विकेट। बॉलिंग में परिवर्तन, तीसरे ओवर की शुरुआत, और धीरज गांवकर गेंदबाजी करने के लिए। तीसरे ओवर की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स के ओर से धीरज गांवकर, ऑप्टम से बाहर, इस बार छोड़ा, जाने दिया। विकेट कीपर के पास 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, ओवर थ्रो हुआ, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, वाइड बॉल का इशारा, और इस वाइड बॉल के साथ मिले टोटल 3 रन, अतिरिक्त रन जो कि स्कोर के खाते में स्टार बॉयज क्रिकेट टीम के। टोटल 3 रन जो कि स्कोर में मिले। फुल टॉस गेंद, फिर से थोड़ा सा अपेच जरूर था, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर, 1 रन मिला स्कोर के खाते में। इस एक्स्ट्रा कवर पर जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बन गया है, और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 29, लॉस ऑफ 1 विकेट। 29 रन 1 विकेट पर, 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। इस बार आड़े वाले से ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर, और फिर से एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। अच्छा थ्रो, सीधा नॉन स्ट्राइकर एंड पर, गेंदबाज धीरज के हाथों में। तीसरा ओवर अभी भी जारी, महादेव और महादेव के साथ आनंद पाटिल, ये जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करती हुई स्टार बॉयज क्रिकेट टीम की। फिर से अच्छी गेंद, फुलर लेन की गेंद, बल्ले से निचले हिस्से से लगी, स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल सामने, और फिर से सिंगल पर ही संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को।
सिंगल डबल के साथ रन बन रहे स्टार बॉयज क्रिकेट टीम, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हाथ खोलना पड़ेगा, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे क्योंकि सफर लंबा है, टारगेट बड़ा होता जा रहा है। 87 का टोटल टारगेट है 5 ओवर में। छोड़ा जाने दिया इस बार, वाइड बॉल का इशारा। ऑफ स्टंप से बहुत दूर गेंद थी, पहले जो कि स्टांस बिल्कुल था रिवर्स शॉट के लिए, लेकिन छोड़ा जाने दिया। गेंद बहुत दूर थी ऑफ स्टंप से। एक अराउंड जो कि और बढ़ गया स्कोर में स्टार बॉयज क्रिकेट टीम के। और फिर से ये गेंद फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर, विकेट कीपर के हाथों से छूटी। एक रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। नो बॉल का इशारा, तो नो बॉल के साथ और एक रन बढ़ गया स्कोर के खाते में। आइए प्लीज कैप्टन आने वाले मैच के लिए काकोड़ा बॉयज और क्रिस बॉयज दोनों टीम कैप्टन जल्द से जल्द संपर्क करें। तो काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम के कैप्टन आ चुके हैं, क्रिस बॉयज आप आइए जल्द से जल्द। फ्रेड का इशारा अंपायर का, और आने वाली गेंद होगी अगली गेंद जो फ्रेड की बल्लेबाज के लिए मौका रहेगा बड़े शॉट के लिए। आइए पूरी टीम क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम फोटो सेशन के लिए। फ्रेड की गेंद लेकिन उतना फायदा नहीं मिला, कवर पर कैच को पकड़ा था जरूर। एक रन इसी बीच में फ्रेड की गेंद, लेकिन उतना फायदा नहीं मिला बल्लेबाज को। एक सिंगल बन गया और इस एक रन के साथ स्कोर 35 रन एक विकेट पर। चलो आपकी पूरी टीम चलिए दोस्तों जल्द से जल्द क्रिस बॉयज फोटो सेशन के लिए, और तुरंत टॉस हो जाएगा। बिल्कुल ब्रेक नहीं आई दोस्तों, पूरे दिन में लगातार ये मैच खेलते जाएंगे, शुरू होते जाएंगे। छोटी गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे, और इसी के साथ दूसरा विकेट वापस निकलता हुआ स्टार बॉयज क्रिकेट टीम का। स्कोर रुका हुआ 35 रन 2 विकेट पर। डीजे थर्टी 35 रन। शॉट ऑफ लेन गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में सही संपर्क नहीं हुआ। जरूर थोड़ी से शरीर पे जरूर लगी, थोड़े से परेशान जरूर हुए बैटर। और इस बीच में और एक ओवर का खेल समाप्त हुआ, यानी 3 ओवर समाप्त हुए, और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 2 ओवर का 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है मैच का। आखिरी 2 ओवर और 2 ओवर में 12 डिलीवरीज 52 रन्स, 12 गेंदों में 52 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन और एक फुल टॉस गेंद, और गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। विकेट कीपर का बीट करती हुई 22 का इशारा, मिले 4 रन स्कोर में। मोहित गांवकर जो गेंदबाजी पर आज आ रहे हैं, खुद का पहला टीम का चौथा ओवर लेकर, और पहली गेंद जो फुल टॉस गेंद निकली थर्ड मैन बाउंड्री पर। 22 के साथ 4 रन मिले स्कोर के खाते में, और इस चौके के साथ स्कोर हुआ 39 रन 2 विकेट पर। 48 रन अभी भी चाहिए मैच में, मैच को जीतने के लिए। इस बार देखना होगा विकेट कीपर सूरज परब, और इसी के साथ कैच को पकड़ा। तीसरी कामयाबी मिली मैदान पर यश डेवलपर्स क्रिकेट टीम को। आने वाले 10 गेंदों का खेल बाकी, और 10 गेंदों में 48 रन मैच को जीतने के लिए। डीजे
बेहतरीन शॉट इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर एक सिंगल। अब बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे, चौके छक्के लगाने पड़ेंगे मैच में, क्योंकि रन रेट स्कोरबोर्ड पर बहुत ही बढ़ता जा रहा है। मोहित गांवकर अपने बॉलिंग मार्ग पर एक सफलता अपने टीम को दिलाते हुए सामने धीरज और नवदीप हल्के से डीले हाथों से ड्राइव किया लॉन्ग अप पर। तो अगले मैच का टॉस हो चुका है। ढेर सारी इनामें है, सुपर सिक्सर्स और बिल्कुल कमाल का कैच जो स्टार बॉयज की ओर से। तो ढेर सारी इस टूर्नामेंट के लिए हमेशा की तरह इनामें जारी है दोस्तों। 3 दिन, आज का पहला दिन, मैदान पर खेल जारी चौथे ओवर का। मोहित गांवकर गेंदबाजी कर रहे हैं और स्कोर 41 रन पर रुका हुआ। और इस बार इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, थोड़ी सी हवा में गेंद, लेकिन फील्डर से दूर। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। तो अगले मैच का टॉस हो चुका है। काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम ने टॉस जीता है और टॉस काकोड़ा बॉयज क्रिकेट ने जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। थैंक यू सर। तो फिलहाल एक बार फिर से रुक करते हैं मैदान पर। 4 ओवर और टोटल स्कोर हो चुका है 45 रन टोटल स्कोर। 4 ओवर का खेल समाप्त, लास्ट ओवर टू गो और बॉलिंग मार्ग पर आदित्य नाइक गेंदबाजी करते हुए। लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन मिला स्कोर में। सिंगल के साथ 46 पर आगे बढ़ा टोटल स्कोर। 87 रनों का टारगेट। मैच थोड़ा सा लगभग फंस चुका है, लेकिन देखना होगा पहली गेंद पर साथ अगर बड़े शॉट लगे। फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा नहीं मिला। बिल्कुल मौका था फुल टॉस पर एक बड़े शॉट के लिए। अपने आप पर भी नाराज हो गए, मालूम था ये मौका था बड़े शॉट के लिए, लेकिन गेंद बीचों बीच नहीं लगी और फिर से एक सिंगल पर ही रुकना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। इस सिंगल के साथ स्कोर टोटल 47। तो अगले मैच के लिए दोनों टीम रेडी हो जाइए। टॉस हो चुका है, टॉस जीतकर फील्डिंग कर रही है काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम। तुरंत मैच होगा। सुपर सिक्सर्स के लिए इनाम है कैच, जो कि स्टार कैच, वो भी इनाम है। हमेशा की तरह ये बड़ा आयोजन है स्टार बॉयज ऑफ कुरचोरेम, जिनके ओर से कुरचोरेम चैंपियंस ट्रॉफी। ढेर सारी इनामें है, शानदार सुंदर एक बड़ी ट्रॉफी है चैंपियंस क्रिकेट टीम के लिए, विजेता के लिए। इस बार ओवर पेस गेंद, एक बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, 2 फील्डर देखते रह गए बिल्कुल, और गेंद चले गई सीमारेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। बिल्कुल ऐसी स्थिति में कभी कभी टकराव का भी जो कि धोखा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा शॉट बड़ी देर के बाद निकला बल्लेबाजी में। सिक्सर 6 रन के लिए और इन 6 रन के साथ स्कोर टोटल आगे बढ़ता हुआ 60 रन पर पहुंचा। 3 विकेट पर 60 रन अभी भी चाहिए, 27 रन मैच को जीतने के लिए। इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर पर लगभग एक बहुत ही मुश्किल सा मौका था, कोशिश थी वहां पर और दोनों बल्लेबाजों को भी पता चल चुका है बिल्कुल अब यहां से लेकर मुश्किल है मुकाबले में। और 1 रन बढ़ गया स्कोर के खाते में, 61, लॉस ऑफ 3 विकेट। इस बार कलाइको पे क्या मोड़ा गेंद को ऑनसाइड पर, मिड विकेट पर फिर से सिंगल। तो इस सिंगल के साथ स्कोर निश्चित रूप से थोड़ा सा आगे जरूर बढ़ा, लेकिन मुकाबला मैदान पर समाप्त हुआ। मैच एक बड़ी जीत हासिल करते हुए यश डेवलपर्स क्रिकेट टीम। शानदार बल्लेबाजी रही। मोहित गांवकर 39 रन बनाए, गुरु प्रसाद ने बनाए 37 रन, 16 रन बनाए सूरज परब ने। और देखना होगा हमारे साथ जो कि स्कोरर है उन्हीं के साथ चर्चा होगी और मैन ऑफ द मैच इस मैच का
बिल्कुल बिल्कुल लेफ्ट हैंडर बैटर जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की वो गुरु प्रसाद आरस्कर, मैन ऑफ द मैच इस मैच का गुरु प्रसाद आरस्कर। फिनाले, एक और बढ़िया शॉट, एक और चौका। I think this is one of the तो इनामे जारी है इस टूर्नामेंट के साथ। सुपर सिक्सर, उसी के साथ स्टार कैच, ये और दो बड़े इनामे है इस टूर्नामेंट के पूरे टूर्नामेंट के साथ। सभी खिलाड़ियों के लिए यह जानकारी जरूर है। मैदान पर उतर रही है फील्डिंग के लिए काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम। टॉस जीता काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम ने, टॉस जीतकर फील्डिंग के लिए मैदान पर, और क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम के ओपनिंग जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए। स्ट्राइक पर बैटर है सनेश और नॉन स्ट्राइकर एंड पर सैयद बंदी। पहली गेंद पावर प्ले की, अक्रॉस द लाइन ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। बल्ले का भीतरी किनारा लेते हुए पहली गेंद पर सफलता दिलाते हुए अपने टीम को सनेश गांवकर बिना खाता खोले 0 पर वापस क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम को लगा पहला बड़ा जोर का धक्का। पहली गेंद पर सफलता मिलते हुए काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम को। आज के पहले मैच के मैन ऑफ द मैच गौरेश नागवेकर पावर प्ले में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर और पहली गेंद पर एक सफलता दिलाते हुए अपने टीम को। न्यू बैटर मैदान पर संजोत, वो सामना करेंगे गौरेश की गेंदबाजी का। पहली गेंद पर बड़ी सफलता पिछले मैच में, पहले मैच में मैन ऑफ द मैच। पावर प्ले का ओवर, अच्छी गेंद इस बार, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई स्लिप की तरफ निकली गेंद, एक लेग कटर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। थोड़ी सी गुडला स्पॉट पर उछाल भी मिली थी गौरेश नागवेकर को। लंबे कद के खिलाड़ी है, ढेर सारा अनुभव है, बिल्कुल बड़ी बड़ी प्रतियोगिता के साथ 10PL का एक बहुत ही बड़ा अनुभव उनके साथ। और आज इस मैदान पर बैकफुट पर निकले, बहुत ही बेहतरीन शॉट, कट के एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ गेंद निकली।
गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे मुझे भी वर्ल्ड कप हाथ में पकड़ पहला चौका निकलता हुआ क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम की ओर से, बहुत ही बेहतरीन शॉट ऑफ साइड पर। छोटी गेंद इस बार, लेकिन फील्डर है मौजूद मिड विकेट बाउंड्री पर। गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के पास। 1 रन इससे बीच में मिलता हुआ स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 5 पर। 1 विकेट पर 5 रन। पहला ओवर पावर प्ले का ओवर मैच में जारी। ढेर सारी इनामें, स्टार कैच, सुपर सिक्सर, सुंदर ट्रॉफी आपके साथ जरूर जुड़ जाएंगे ये 2 बड़े इनामों के साथ। फुल टॉस गेंद, सैयद बद्दी और बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक फ्लैट सिक्सर। बहुत ही लाजवाब शॉट 6 रन के लिए। सामने सैयद बद्दी एक बहुत ही बड़ा शॉट लगाते हुए, छोटी गेंद कट किया। इस बार थोड़ा हवा में गेंद जरूर निकली थी गली की तरफ। एक सिंगल बना स्कोर में। फील्डर बहुत दूर था और जब तक इनको फील्ड करते। पावर प्ले का पहला ओवर पहली गेंद पर सफल था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं 2 बड़े शॉट लगाए और पहले पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद 12 पर स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं सर बबलू सावंत। बबलू सावंत सर आइए प्लीज। हमारे मान्यवर कक्ष से संपर्क करें सर बबलू सावंत। स्वागत है सर आपका इस स्टार बॉयज ऑफ कुरचोरेम आयोजित कुरचोरेम चैंपियंस ट्रॉफी। पहले ओवर का पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। फील्डिंग में तब्दीली होगी मैदान पर और देखने होगा गौरेश नागवेकर के बाद गेंदबाजी के लिए शायद प्रजेश उर्फ विकी नाइक वो आ चुके हैं। और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी जो काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। सामने सैयद बद्दी। अच्छी शुरुआत। ऑफ स्टंप पर एक शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ऑफ साइड पर कट करना चाहते थे। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये फुल टॉस, एक अच्छा अप ड्राइव, लेकिन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर है मौजूद। सिर्फ 1 ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 13 रनों पर पहुंचा। 1 विकेट पर सनेश काउकर जो शुरू में बिना खाता खोले वापस। और कमेंट्री बॉक्स की ओर से प्रजेश उर्फ विकी नाइक अगली गेंद लेकर। इस बार मिड विकेट पर हवाई फायर, गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमारेखा से बाहर। सिक्सर। डीजे के खाते में 2 रन और स्कोर पहुंचा 21, लॉस ऑफ 1 विकेट। 21 रन 1 विकेट पर
सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, दूसरा ओवर जारी मैच का। जोरदार हिट लगाना चाहते थे, देखना होगा अंपायर का इशारा। एक सिंगल तो जरूर बना। सदगिरी नाइक और पुण्या पालकर, ये दो अंपायर मैदान पर, उन्हीं के साथ नीलेश नाइक। लेग बाइज का इशारा, लेग बाइज के साथ एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। और सैयद बद्दी एक बार फिर से स्ट्राइक पर आते हुए विकी नाइक की गेंदबाजी का सामना करते हुए। और बेहतरीन शॉट बाइडेस लॉन्ग ऑन पर सैयद बद्दी के बल्ले से लगा, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद इन 6 रन के साथ से टोटल स्कोर 28, 28 रन 1 विकेट पर, 28 लॉस ऑफ 1 विकेट 2 ओवर की समाप्ति के बाद। वो दिखाई देते हुए खुद का पहला और टीम के ओर से तीसरा ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर 2 ओवर का खेल टोटल समाप्त हुआ। संदेश ठाकुर अपने बॉलिंग मार्ग पर तीसरे ओवर की शुरुआत और सामने संजोत स्ट्राइक पर उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। फुल टॉस गेंद बाहर किनारा लगा, गेंद चली गई स्लिप की तरफ लगभग गली पर और गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन पूरा करने का। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 29, लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छा शॉट हाफ वाली पर लेकर एक अच्छा ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर फिर से सिंगल। एक सिंगल के साथ स्कोर फिर से आगे बढ़ा, 30 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर खेल तीसरे ओवर का 5 ओवर का मुकाबला। छोटी गेंद इस बार बैकफुट पर निकले, कट करना चाहते थे संजोत, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। लेग कटर अप कटर ये हमेशा मिश्रण, यॉर्कर ये इनका बिल्कुल जो कि ब्रह्मास्त्र है। और वही संदेश ठाकुर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। इस बार फिर से अच्छी गेंद, पुलर लेन की गेंद, बल्ले से निचले टॉस से लगती हुई गेंद, कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। कोई बड़ा मौका नहीं दे रहे इस ओवर में, लगातार लेग कटर अप कटर, कभी पुलर लेन की गेंद और सामने अब सैयद बद्दी आ चुके हैं। ये गेंद इस बार थोड़ी सी लाइन पर परेशानी हुई, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक सिंगल अतिरिक्त रन के साथ से जुड़ गया स्कोर में। फिर से इस बार यह गेंद देखना होगा विकेट कीपर के हाथों से दूर, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर, वाइड बॉल का इशारा, 2 रन मिले। संदेश ठाकुर शुरू में बिल्कुल लाइन पर थे, लेकिन अब थोड़े से कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है उनको। लगातार 2 वाइड बॉल के साथ रन भी जुड़ रहे टीम के स्कोर के खाते में और स्कोर टोटल आगे बढ़ा 34, 34 रन 1 विकेट पर। यह अच्छी गेंद इस बार, ये यॉर्कर लेन की गेंद, सामने बैटर है संजुत, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद निकली विकेट के ऊपर के हाथों में। तीसरा ओवर मैच का अभी भी जारी है। बार फिर से बाहरी किनारा लेती हुई गेंद गली की तरफ, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, कोई जो कि नुकसान नहीं। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ टोटल और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 34 टोटल, लॉस ऑफ 1 विकेट। 34 रन 3 ओवर की समाप्ति, 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान पर, जो कि मुकाबला जारी
क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई और फील्डिंग करती हुई, गेंदबाजी करती हुई काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर सामने गौरेश नागवेकर के हाथों में गेंद और बड़ा विकेट मिला इस जो कि चौथे ओवर की पहली गेंद पर। डीजे सैयद बद्दी आउट होकर वापस 2 छक्के लगाए, 15 रन पर अपने खुद के व्यक्तिगत। सनेश काउकर ने खाता नहीं खोला। संजोत मैदान पर और संजोत का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर स्वप्नेश नाइक। अनिकेत गेंदबाजी करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर पहली गेंद पर एक सफलता, एक बड़ा विकेट चटकाते हुए अपने टीम के लिए। अनिकेत अगली गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से और सामने न्यू बैटर स्वप्नेश नाइक सामना करते हुए उनकी गेंदबाजी का। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, थ्रो किया था, निशाना नहीं लगा। क्या दूसरे रन के लिए मौका बनेगा? जी बिल्कुल। स्क्वायर लेग पर बैकअप जब तक करते गेंद को 2 रन मिले, लेग बाइज का इशारा और इन 2 रन के साथ से स्कोर थोड़ा सा आगे जरूर बढ़ता हुआ। 36 लॉस अप टू विकेट, 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अनिकेत गेंदबाजी कर रहे, खेल जारी चौथे ओवर का। ऑफ स्टंप पर एक लोअर फुल टॉस, लेकिन गेंद बल्ले में फिर से कोई मुलाकात नहीं हुई। ऑफसाइड पर 5-4, ऑनसाइड पर यह फील्डिंग के जमावत। काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम टॉस जीतकर गेंदबाजी करते हुए, फील्डिंग करते हुए मैदान पर। इस बार ओवरपेस गेंद, तगड़ा शॉट, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स में गेंद आते हुए और हमारे स्कोरर ने जो कि खड़े हो चुके बिल्कुल कैच के लिए, लेकिन थोड़ा दूर थे दिवेश और गेंद 6 रन के लिए सिक्सर सीमारेखा से बाहर। मिले 6 रन स्कोर के खाते में बैटर को, स्वप्नेश को, और इन 6 रन के साथ से स्कोर भी आगे बढ़ा 42। इस बार बढ़िया शॉट, हाफ ड्राइव, जो कि ऑफ ड्राइव, एक सुंदर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर और इस ऑफ ड्राइव के साथ सिंगल के साथ एक रन भी फिर से मिल गया स्कोर में। सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ा 43 रनों पर। 43 लॉस अप टू विकेट, 43 रन 2 विकेट पर। इस बार ये लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मान्यवर कक्ष में बिल्कुल गेंद आती हुई सीमारेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए और इन 6 रन के साथ से स्कोर आगे निकला 49, 49 रन टोटल 2 विकेट पर। 49 लॉस ऑफ 2 विकेट। डीजे
चार ओवर समाप्त, अंतिम ओवर का खेल। ये गेंद फाइन लेग पर, फील्डर एक सिंगल, एक रन। दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, नो बॉल का इशारा अंपायर का, तो और एक रन। और हम यहाँ पर असलम भाई और नूर, आइए प्लीज हमारे कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। इस्माइल भाई और नूर, आइए प्लीज संपर्क करें। फ्रेट की गेंद, और इस बार मिड विकेट पर फील्डर एक सिंगल बन गया। फ्रेट की गेंद पर बड़ा फायदा नहीं मिला बल्लेबाज को। आइए प्लीज हमारे कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें सर। इस्माइल भाई और नूर, आपसे रिक्वेस्ट है सर, प्लीज डॉन बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। तो इसी बीच में एक बार फिर से अमित गेंदबाजी कर रहे हैं। अंतिम ओवर का खेल जारी, अमित बॉलिंग मार्ग पर, लेकिन कहीं ना कहीं एक दो बड़े शॉट अभी भी चाहिए स्कोरिंग में। देखना होगा क्या होता है। और इस बार थोड़ा सा खींचकर खेला, गेंद के लाइन पर बिल्कुल नहीं थे, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, एक आसान सा मौका बना और गौरेश ने उस कैच को लपकते हुए सफलता मिलती हुई तीसरी टीम को। डीजे स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर रुका हुआ 53, टोटल स्कोर 53, लॉस ऑफ 3 विकेट। आखिरी ओवर का खेल जारी, अमित गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने बैटर है संदीप कुर्डीकर। इस बार फिर से एक हवाई फायर, क्या मौका बनेगा? लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर विकी, और इसी के साथ बैक टू बैक और एक सफलता मिलती हुई चौथे विकेट का पतन होता हुआ 53, लॉस ऑफ 4 विकेट। डीजे नेक्स्ट मैच जय भवानी, जय भवानी और ये गेंद इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, तो आने वाला मैच होगा जो यश डेवलपर्स और जय भवानी क्लब, इन दो टीमों के बीच होगा। दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए संपर्क करें। जय भवानी क्लब और यश डेवलपर्स, फिलहाल स्कोर वहीं पर रुका हुआ, टोटल 53, लास्ट ओवर आखिरी ओवर का खेल जारी मैच में। और पिच गेंद, एक बहुत ही सुंदर शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर को बीट किया। इस बार लंबे कद के खिलाड़ी जरूर थे गौरेश नागवेकर, लेकिन गेंद उनसे बहुत ऊपर से चली गई, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और इस चौके के साथ टोटल स्कोर 57, और टारगेट है मैच को जीतने के लिए 58 का। काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम को 58 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। दूसरे इनिंग की शुरुआत, लेकिन इस एक बार फिर से कॉल कर रहे हैं, आइए कैप्टन जय भवानी क्लब और यश डेवलपर्स कैप्टन, दोनों कैप्टन टॉस के लिए संपर्क करें। और टॉस टोटल जो कि 58 का 58 रनों का है, जो कि टारगेट मैच को जीतने के लिए। दूसरे इनिंग की शुरुआत, और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते आइए सर हरीश काकोड़कर के साथ।
मॅन ऑफ द मॅच दोच्या मॅचीचो दिवपाक हांव रिक्वेस्ट करता को ओनर ऑफ काकोडा बॉयज श्रमेश सावंत बबलू सावंत मातसो यो आनी प्लेयर ऑफ द मॅच दोच्या मॅचीचो वता गुरुप्रसाद आरोसकर रिक्वेस्ट करता बबलूक मातसो अवॉर्ड दी गुरुप्रसाद आरोसकराक जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मन्स बॅटिंग परफॉर्मन्स फ्रॉम गुरुप्रसाद आरोसकर. So now it's the proceedings of this match. 57 runs has been posted on the board by Chris Boyce, and Kakoda Boys require 58 runs to win. Very important match for both the teams. Both have won one match each, and it is going to set the tones for this group, this particular match. अनिल डोडामणी मातसो तुका रिक्वेस्ट आसा तुज्या ड्रेसिंग रूम जो तो तुजो कॅम्प आसा थंय तुका आपयल्लो आसा अनिल डोडामणी. So now requesting batters मातशे बेगीन येयात batters काकोडा boys. So next is going to be the toss between Anand CS Developers and Jai Bhavani Club Kakoda. AD versus SP. Yes, please make it fast. It's going to be Mendes to start the proceedings from the Martigad end against Punachi Kalangutkar. A pretty good total. It is well balanced totals where if the wickets are taken early by Chris Boyce, then I think they will be in the race. And if there is a good start here for Kakoda Boys, they can feel that they can chase this down of 58 runs. So Vicky and Punaji Kalangutkar on strike. That's a cracking shot right in the gap. Provided a width and drives it with a fearsome power in the extra cover region for a magnificent boundary. So pretty handy score at the top from Syed Badi. Then Sanjot played a handy knock of 21 runs. Swapnesh Khanekar also plays decently with 10, but they require that flurry in the last over, which was not given by the bowler Amit Syed. This time heaves it away in the mid-wicket region. There is a fielder just going to restrict the batters for a single. So Punaji Kalangutkar is definitely going to take the advantage of the batting power play over. So you can see the area of fielders on the offside. There is mid-off, short covers, short extra cover, backward point, short third man. 6 fielders on the offside in the inner ring. I think this field has been set by Mendes and Buddy from behind the wicket. Once again, very nicely played. Lovely pull shot. There is a fielder in the deep, so it's going to be another single. And most of these Australian players play against each other in Panchayat and Municipality level tournament, so definitely knows where to bowl to a particular batter or how to play against a particular bowler. Mendes definitely is one of the finest bowlers around with a wonderful pace that he produces at the start. This is good. This is very good. Little fumble, but is not going to cost anything. So dot ball here for Mendes and also for Chris Boyce. You can see the bowling attack of Chris Boyce is pretty decent. It is not one-paced bowling attack. That's the reason why this total is not going to be easy for the batters to chase. This is in the air. This might be a chance. No, it might go for 4 runs. Just bouncing a little bit more. And half jab shot on the leg side for a boundary. Second boundary of this over for Punaji Kalangutkar and team Kakoda Boys.
This is in the air. This might be a chance. This might be a difficult one. The fielder running after the ball, but the ball, I think, wins the race. This is a quick outfield. Good effort there from the fielder, but it was always going to go for 4 runs. So Mendy is proving to be costly in these power play overs. After completion of 1, it is 14 without loss. Anand Yes developers meanwhile won the toss. Suraj Parab and deciding to bat first. Bowl first. So this is bowl first. Praveen. Papa. Papa तुका भुरगे घरान आपयतात. Yo. There are so many Praveens on this ground. We have to call each one by their different pet names, nicknames. In comes the second over to be bowled by Sanjot. Very good knock from him at the top. Can he provide a little respite here for the bowling unit by picking up a wicket? 5 overs is just goes out quickly. A wonderful ball right in the block hole. Very good start. Bowling on the toes, not providing the width here, taking a single. I think Vicky, with the batting order that Kakoda boys have, certainly knows very much with Punachi playing beautifully in the first match and also taking that form forward in the second match. It's a strong batting unit at the top 5. Once again, just drives. There is a player placed in the deep covers, but by the time he collects the ball, is going to be 2 runs taken. So I told you, this running between the wickets is going to be a key aspect for every team in this competition. These are big boundaries, and this is a big outfield. So 1s, 2s, 3s are going to come by, and you have to take it by scampering through for the runs. Once again, now little full toss, but I think this is better. Bowling the low full toss balls is not easy to even pull it away for the mid-wicket region or power it away on the offside. Good start here from Sanjot. So we have got a wonderful professional outfit. Amani Events are definitely organizing a little part of management with the wonderful photo shoot. So good event being handled. He does it almost in all professional cricket circuits. Anand Badri, the big name also. Right now, I think he's not playing the professional cricket, but he's more concentrating on the business aspect. I think it's my Thursday, so I'm veg. So I feel that I'm going to get tea today, not anything more than that. Takes the score to 19. This is really good bowling here. Really good bowling here from Sanjot. And he's not allowing any sort of room, any sort of width, no short balls whatsoever, right in the block hole channel. So Chris boys will feel little comfortable, little better compared to that first over. Just 5 runs given in this over so far. Incredible bowling, but need to finish well. Good drive, should get a boundary. This is right in the gap. Yes, the fielder was way far more towards the extra cover region. So good drive here in the covers region, getting a boundary, which was looking good. I think it's a decent over in the end for Kakoda boys. 23 without loss after completion of second. I think
Plays for Sheldon Blasters. Umesh as a regular player in their team. Very good start. Was going for the switch it, and you can see the field here. They already placed one for the switch it in the deep point region because they know that with the left arm going across, the ball is going to go away from the right hander. So that angle will be used by the batter to go for the switch hit in the deep mid wicket region. So they have stopped him going for that, but he still went. He will play his shots. इतनी तेज है शहर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन Really मिल good, जाएगा। really good here अगर from शहर चली Umesh. गई तो ये वीकेंड रश कौन संभालेगा? Vicky so far in this match itself struggling to find the timing. रेड बस से लो शॉर्ट सीट, नो टेंशन। वीकडेज में They कॉलेज, need वीकेंड में होटल संभालो। him खुश। to रेड come बस, really अपनों को good सपनों up को front. करीब। बस They यानी need him to get few runs रेड बस। before the big matches when the matches go deep down. A little change in the field for the batter Punaji Kalangutkar. 3 men in the DDP and one more in the extra cover region rather than the point. And now Buddy is marshalling his troop from behind the wickets. This is little wide, little wide. Idea was right. The execution was little awry. Not a bad idea to be bowling little wide. He still went for the switch hit. Once again, is bowling well here, Umesh. They are not at all picking. I think the experience that he has got playing in big tournaments in Panchayat and Municipality is definitely helping Chris Boyce here at this moment. And he is concentrating in a better channel from over the wicket as a left armer. This is good shot. He plays it in the gate, should get a boundary. Stopped inside, stopped inside. Chance of a run out. Vicky almost halfway through. Chance of a run out at the striker's hand, and it's going to be easy run out. There was miscommunication between both these batters. Miscommunication between both these batters, and Vicky goes back in the pavilion. So now, important wicket has been taken through run out. In comes Bala. Good over. What an exceedingly good over. I told the bowling unit of Chris Boyce is very, very strong, and they are certainly doing it well on the ground reality. This is good here from Umesh. So one ball still remaining, and the score still remains on 26. 58 is the target. 32 runs required. And this ball is going to be very crucial. This is going to be an important ball. If we can just give it a single or restrict it with a dot ball. This is in the air. This is a good drive. Might go for 4 runs. I think the fielder should have been more in the extra cover rather than the point region. So that 4 runs taking the score to 30. But a good over nevertheless bowled by Umesh. After 3 overs is 30 for 1. 28 runs required in 2 overs. A very, very intriguing match going on between Kakoda boys and Chris boys.
Kakoda boys have still got batting left. They have got Gauresh Nagvekar, Khungru. But I think 5 overs, not many will get batting as the top order is definitely going to go deep. Just like we have seen Guru Prasad Aroskar playing deep in till the 4th or 5th over. And that's the same role that Punaji is playing for Kakoda boys. 28 runs required. In comes Angelo. Ah, good one. Good swing. First ball itself taken to cleaners out in the mid-wicket region. 36 runs. Starting off a boundary, 6 in this run chase, especially in the 4th over when the runs are a little hard to come by. That's a real soothing influence in the dressing room of Kakoda boys. Score moves on to 36. Once again, this time, will it be fielded? And it misfielded here. Could have been a better effort, but a slower ball not coming right from the hands of Angelo. It was a full toss ball, and there is a big wide gap between the cow corner region and the long on region. And he finds the gap to perfection. And Angelo is not bowling where the fielder have been set here by the captain. Score moves on to 40. This is in the air. This is bad bowling here from Angelo. He's bowling full toss ball, short arm. Display of batting skills here from Punaji Kalangutkar. He is really doing a wonderful job. I think the first 3 balls has set the tone for Kakoda boys to run this, chase this down. .46 now, not looking difficult at this moment. Oh, was it a catch? Was it a chance? It was a chance. But maybe the problem was there was not a signal from Angelo to the keeper behind that I'm going to bowl the slower ball. The keeper was standing behind for the regular quick delivery. So no indication given from the bowler. If there was any indication, I think Abadi would have come a little bit up front. Small things, but matter a lot. This is a good slower ball. Leg spinner here from Angelo finally coming right. So 2 dot balls. Still the match is alive. I think it all depends on this ball. If this ball counts for a wicket or maybe a single, maybe a dot ball, the match will be definitely alive in the last over. If this goes for 6 runs, I think Kakoda boys are definitely going to be favorites in the last over. I told you, he picked it up well. He was looking predictable here, Angelo, with the slower balls. It was right in the slot, and a humongous strike here. And what a strike at what a time. Punaji Kalangutkar single-handedly winning this match, or taking this match close to the victory laps for the team Kakoda boys. 52 on the board, just 6 runs required in the last over. Big switch hit. So Punaji Kalangutkar, I think it was a really good innings in the run chase. Chase master has become Punaji Kalangutkar. So second victory for Kakoda boys, a strong batting unit, and they have certainly showcased their talent. 2 wins out of 2 matches against Chris boys now. And first win, it was against Jai Bhavani Club Kakoda. So they are certainly at the top of the table in this group. So player of the match award undoubtedly goes to Punaji Kalangutkar with a big innings of 43 runs. The monsters running wild inside me.
So lost, I'm feeling. So lost, I'm feeling. These shallow waters never meant what I needed. To collect player of the match, I request Punaji Kalangudkar to please come in the presentation arena, and to give away the player of the match award, I request Gaurish Raut. Gaurish Raut, please come and give the player of the match. So you are the guest for today's presentation for this particular match, to be giving award to Panaji Kalangudkar for his magnificent innings of 43 runs. So now it's time for the fifth match of the day. Is going to be Praveen Papa and Amit Damshekar going into bat for Jai Bhavani Club Kakoda. I'm letting go, a deeper dive, eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Are all set for this match, the fifth game of the day between Jai Bhavani Club Kakoda and Team Anand CS Developers. Going for the switch hit, the very first ball. Kane, as he popularly knows, Harshad Mandhodkar bowls decently, and bowls some leg cutters, some medium pacers. So you got to see what is coming from his hands. We almost felt that this is going to be the wicket that is going to help the seamers. But Amit Damshekar was very much right in his judgment that the wicket has dried up. It's not the grass is not green, and the ball is not going to skid on just like it might have skidded on at the month of maybe January, March, or even February. But here, I think that it has dried up, and it's going to be great for the batters. Once again, good ball here. Didn't know where the ball had gone. Just popped in. Lucky that it didn't go in the hands of the fielder. It's a good start here from Harshad Mathonkar. Kane. Two fielders at long on and cow corner region patrolling the boundaries. Rest all fielders inside as this is the power play over. Going for the switch hit. Papa gets it right. Papa gets it right. Might be a catch. Oh, what a catch. What a catch this is. I thought this might be going for 4 runs. Papa is looking stunned. Maybe he didn't time it that well, getting the top edge. It was in the air for a long time. And a good judgment here. And Anand CS Developers are doing a fine job in the fielding.
in leather ball cricket have got many runs, even in tennis ball. Once again, wild swing here from Amit Damsekar. Lame still struggling with his timing, and pretty good over from Harshad Matondkar after completion of one is 2 for 1. Great start from Harshad. Once again, Suraj Parab. So pretty decent bowling attack, a strong unit of Anand's chess developers. Well, Sanju will definitely be missed. He would have been even better for this team. They would have been even stronger. This was short ball. I think this deserved the treatment. Easy 4 runs here towards the 5-leg boundary. 6 runs, in fact. I think the ball has gone with the wind. I thought he has not timed it that well, but yes, it's a wonderful breeze going across from west towards the east that has helped to cross the fence. 6 taking the score to 8. Now coming from around the wicket. He does this well. He does this well many a times. Bowling the deepers. Many a times I've seen Suraj Parab just releasing the ball, and the ball dips on the batters. He's bowling better if he concentrates around this area rather than bowling short. Suraj Parab doesn't have that much of pace that he used to bowl in yesteryear pace. This is in the air. This might be a catch. This is going out of the ground. A great strike here from Vinay Satarkar. 2 sixes in this over from the man from Kankhona. मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया मैं तेरे होंठों पे One of the Australian players doing a very good job for Jai Bhavani Club Kakoda. This time maybe shuffling, maybe umpire saying is down the leg side, wide signal. There is no referral for wides here. So I guess umpire's decision should be abided by everyone. Let's concentrate on the next ball. Score moves on to 15. This time, just played it little early. The ball came slow off the deck. Harshad Matondkar fielding at that region. And now Amit Damsekar. Amit Damsekar is definitely had to see that he first feels the ball right, feels it right of the meat of the bat. Maybe it is a single, maybe it is the carpet shot. Just cannot go all out when you have not got your timing right so far. Once again, you can see that he's playing it little early. The ball is coming slow. He's not providing the pace here. Suraj Parab, another single, taking the score to 17. And Vinay Satarkar. So that will finish over number 2 is 17 for the loss of 1. So let's see who is going to bowl the third over. He's looking to be Mohit Gaonkar. A very good bowler and a leg spinner. Sometimes he bowls the off-cutters as well with the same action. So it's going to be interesting whether they pick him up. But Ame must have played so many leg spinners in his times. I think the best players to play for Mohit at this moment for Jai Bhavani Club Kakoda, who have played leather ball cricket. And for leather ball cricket, you need to pick the bowlers right from the hands. Going for the switch hit. I think he has picked it up well.
Ahmed Damsekar, he was waiting for that ball and he has switched it him for 4 runs over the third man region. So taking the score to move on at 21. So maybe a change in fielding after that shot. That's what Kane was signaling to Mohit. Now they got 3 fielders deep on the leg side. Now they have one covering that switch it and one in the covers region to play with the spin if there is a full ball just wide outside. This is Ahmed Damsekar. Classic slog sweep shot here. Shuffling across in the crease. A little movement and a great strike. Extending his arms fully. That's what I told you. He's going to be the best pair here to play against Mohit Gaokar, Ahmed Damsekar and Vinay Sadarkar. And that little moment sometimes in the crease doesn't allow the bowler to bowl his line and length. That's what Ahmed Damsekar is doing at the moment. That's a good ball. That's a really good ball. That's definitely one for the over. It has not bounced above the head height. It has bounced somewhere close to the shoulder and the head height. So very good umpiring. But I think sometimes when a good ball has been bowled, it has to be forgot out of his back of mind. This was also a shot to be played. A little leg spinner coming slow off the deck. Asking a little query to the umpire. Was it a wide? Umpire Punya Palkar, beg your pardon, Nilesh Naik, certainly saying it was a good ball. (27) still, 2 dot balls. This was the googly. This was the googly. I think Amish should have picked it up. Bowled it really well. This guy is the batter. Maybe he felt that it was a leg spinner. That's why he left it all alone. This time Ame picks it up well. This time Ame picks it up well and plays it over the fine leg region. This is a good batting here, skillful batting from Ahmed Damsekar. It was a great battle to watch between a wonderful bowler, leg spinner from Goa and showcasing talent here. And now it is Ahmed Damsekar showing that I have the class to play against you, scoring 2 sixes and a boundary. After completion of 3 overs, the score moves on to 33 for the loss of 1. (33 for the loss of 1 in 3 overs. So last 2 overs have been good here for Jai Bhavani Club Kakoda. Dheeraj Gaonkar, little pace, might be a catch. He had not seen where the ball is and they are running for the second run. It's very difficult in the sun to gauge where the ball had gone. But a good start at Dheeraj, hailing from Sangam region. And is a decent bowler. Bowls a little short ball, but I think he hurried on to the batsman with little more pace. Vinay Sadarkar, 2 runs at the start, taking the score to 35. Once again, a short ball, missed. That was a short ball, could have pulled away. And that is, actually, you cannot blame the wicket. This is the best wicket that you can play, whether tennis ball or whether leather ball. The ball comes truly with a good bounce. This is in the air. Once again going for the switch. It might be a chance. Difficult chance. Difficult chance that was. Good effort at the point region.
Kalpesh, I think he's one of the quickest fielder around. You cannot blame the fielder over there. The ball was swirling. And when you can play shots with a straight bats and very good on the leg side with the wind, he is trying to play against the wind. That is not helping the cause for Jai Bhavani Club Kakoda and Amit Damshekar. But pretty good start from Dheeraj. This time once again down the ground, Harshad Mathondkar fielding in that region. Going for the second run, but it was quick arm from Harshad. So this is good over here, turning out to be for Anand's Yash developers so far. 5 runs conceded of the first 4 balls. That's the reason Yash wanted him in his side. The owner of Anand's Yash developers, Yash Prabhu Desai. This is good shot here. This is good shot. This is what Ame is capable of. You don't have to go for the switch hits when you can play a normal sweep shot. Picked it away on the leg side. So with the 6 runs, this over turning out to be a little better now. 44. 44. They need somewhere around 60 runs. They need somewhere around 60 to feel maybe if we take early wickets, we might be comfortable. This is high, this is long, and this is big from Damshekar. Short. He dropped it little short. Ahmed Damshekar is a very good puller and hooker of the cricket ball. So 2 sixes to finish high for Jai Bhavani Club Kakoda, and after completion of 4 overs, it is exactly 50 on the board. One 31 is the innings that he played, just got out. Vinod Wilson now. What a service he has done to go on tennis ball cricket. Also plays leather ball cricket pretty decently. Played for Goa Police, played for many of the teams around, plays for big leagues. You cannot do anything much. You cannot do anything much. You can at the most get single to this particular delivery. Great line and length from Adit Naik. So singles at the moment here for Jai Bhavani Club Kakoda, 52 on the board.
This time might be a couple of runs hitting the legs, and Vinay Satarkar wants the strike, and he gets the comfortable 2 runs and gets back on strike. Leg by signal by the umpire Nilesh Naik. So far, I think Adit Naik has done a fabulous job. Just conceding 4 runs. In fact, 2 runs, 2 of the leg by. This is really good bowling. This can be just a single. He wants a strike. He's going for the second run. This is a loose throw here. Suraj Parab doesn't have the good throw that he used to have. So playing little safe, Suraj Parab with that hand, because they require that hand for the tournament, for the day, and maybe if they progress for the part. In comes the last ball. Finally, one ball that swung nicely, but still I feel it's a good over end here from Aditya Naik. One loose ball that was taken away, clipped away on the leg side for a humongous strike, and hands on a high note for Jai Bhavani Club Kakoda. And after completion of allotted 5 overs, Jai Bhavani Club Kakoda through a good innings from Vinesh Satarkar and from Amit Damshekar managed to get 62 on the board. 63 runs required to win here for Anand CS Developers. Anyone else around? So this is good to see. This is what the tournament is all about. And there is a question from Anand CS Developers. Boot कोणाला काय खंय? So wonderful, some light moments here in Curchorem Champions Trophy. Some lighter moments definitely make the game and the tournament little more interesting. So for further updates, I'll hand over the mic to Ashok next, sir.
हेलो, थैंक यू हरीश सर, धन्यवाद। नेक्स्ट मैच स्टार बॉयज वर्सेस काकोड़ा बॉयज। प्लीज कैप्टन टॉस के लिए संपर्क करें, स्टार बॉयज और काकोड़ा बॉयज। तो इसी बार एक बार फिर से मैदान पर रुक करते हैं। अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का 63 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। ओपनिंग जोड़ी स्ट्राइक पर मोहित गांवकर स्ट्राइक पर और पहली ओवर गेंदबाजी पर। विनोद विल्सन एक फुल टॉस गेंद, एक अच्छा शॉट कवर की तरफ, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, एक सिंगल। मोहित ने अपना और अपने टीम का खाता खोला। गुरुप्रसाद आरोस्कर और मोहित गांवकर ये ओपनिंग जोड़ी। पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच गुरुप्रसाद लेफ्ट हैंडर बैटर और विनोद विल्सन उनके लिए राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए। टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए 63 का। राउंड विकेट विनोद विल्सन। फुल टॉस गेंद, इस बार ड्राइव किया, कवर पर फील्डर, शॉर्ट कवर पर फील्डर, गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर 1 रन। 63 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। और बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर यश डेवलपर्स क्रिकेट टीम, सामने गुरुप्रसाद आरुस्कर। ओ सफल हुए थे इस बार, एक यॉर्कर लेन की गेंद, वाइड यॉर्कर, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। बहुत अच्छी गेंदबाजी विनोद विल्सन की, बल्लेबाज को मौका बिल्कुल नहीं दिया। अमित दामसेकर ने बनाए 31 रन, 29 रन बनाए विनेश सातरकर ने। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी किया और एक अच्छा टोटल 62 रन बनाए 63 रनों का टारगेट। अच्छी गेंद, इस बार ढीले हाथों से बाहरी किनारा लेते हुए गेंद स्लिप की तरफ और एक सिंगल बन गया। तो दोनों बल्लेबाजों ने एक एक रन के साथ से अपना खाता शुरू किया। स्कोर हो चुका है 2 रन बिना किसी नुकसान से। राइट हैंडर के लिए ओवर द विकेट विनोद विल्सन अपने बॉलिंग मार्ग पर। आड़े बल्ले से खेला, इस बार कारपेट के साथ मोहित गांवकर, मिड विकेट पर फील्डर, एक सिंगल। अच्छी गेंदबाजी, कोई बड़े शॉट बिल्कुल नहीं दे रहे। स्कोर हो चुका है सिंगल के साथ 3 पर, आगे बढ़ा टोटल 3 रन बिना किसी नुकसान से। तो आने वाला मैच होगा क्रिस बॉयज वर्सेस जय भवानी क्लब। अगला मैच होगा जय भवानी क्लब वर्सेस क्रिस बॉयज, इन दो टीमों के बीच में। दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए संपर्क करें। बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज को बीट किया, निशाना बिल्कुल सही लगा था। 1 रन इसी बीच में स्कोर के खाते में, सिंगल बन गया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा। टोटल पहले ओवर का खेल पावर प्ले का समाप्त हुआ 4 रन बिना किसी नुकसान से। तो अगला मैच होगा, आने वाला मैच होगा, वो होगा क्रिस बॉयज वर्सेस जय भवानी क्लब, इन दो टीमों के बीच में।
फुल टॉस गेंद आड़े बल्ले से मिड विकेट पर फील्डर, लेकिन सर के ऊपर से गेंद डीप मिड विकेट सीमारेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे पर मिड विकेट पर सिक्सर, स्कोर आगे बढ़ा 10 पर। और एक बार फुल टॉस, इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग सीमारेखा पर, सिक्सर 6 रन के लिए। दो फुल टॉस पर गुरु प्रसाद के बल्ले से 2 बड़े शॉट, और एक बार फिर से इस बार ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर भी निस्तर कर। अच्छी गेंद, इस बार सम्मानजनक खेला, और जब तक शॉट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन पूरा करने का। एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 17 रनों पर पहुंचता हुआ। 63 का टारगेट है। खेल जारी दूसरे ओवर का, और एक बार फिर से सामने स्ट्राइक पर बैटर है मोहित गांवकर। फुल टॉस गेंद, यह तीसरा फुल टॉस इस ओवर में। इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे टोटल स्कोर इस 6 रन के साथ। इस बार पुलर लेन की गेंद, सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, 1 रन मिला स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है टोटल 24 रन। थोड़े से महंगे साबित हो रहे इस ओवर में विनेश सतरकर। कहीं ना कहीं फुल टॉस, 3 फुल टॉस पर 3 बड़े शॉट लगाए गुरु प्रसाद, और गुरु प्रसाद के साथ मोहित गांवकर ने। 24 रन, 24 विदाउट लॉस, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। टारगेट है 63 रनों का मैच को जीतने के लिए। और एक फुल टॉस, फिर से एक बार हवाई फायर, ये गगनचुंबी सिक्सर, गुरु प्रसाद के बल्ले से गेंद 6 रन के लिए। डीजे सीटी बजाए, हाय दिल धड़काए, सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए, सारे हो करके इशारे। थैंक यू डीजे, धन्यवाद डीजे, बहुत ही शानदार साउंड सिस्टम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीजे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 30 रन हो चुका है टोटल स्कोर। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर बिना किसी नुकसान से 30 रन। 63 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए, और 33 रन अभी भी चाहिए, और आने वाले 3 ओवर का खेल बाकी है। अगले मैच के लिए एक बार फिर से हम कॉल कर रहे हैं। मैच हो रहा है जय भवानी क्लब और क्रिस बॉयस, दोनों टीम कैप्टन। दोस्तों प्लीज जल्द से जल्द टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन, तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर, और गेंदबाजी पर अनिश फोंडेकर। शपल ऑन साइड पर एक लंबा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। मोहित गांवकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए, तीसरा ओवर मैच का जारी। अनिश फोंडेकर गेंदबाजी करते हुए, और स्कोर हो चुका टोटल 30 रन। 33 रन चाहिए, 63 का टारगेट है।
ओ बहुत अच्छी गेंद, बोल्ड हुए उस गेंद पर, बहुत अच्छी गेंद इस बार। फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे मोहित गांवकर, गेंद के लाइन से बीट हुए और पहली सफलता इसी के साथ मिलती हुई टीम को। स्कोर हो चुका है 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे थैंक यू डीजे। न्यू बैटर मैदान पर सूरज परब। मोहित गांवकर आउट, एक छक्का लगाया 9 पर खुद के व्यक्तिगत। टीम का स्कोर 30 रन, 1 विकेट पर। बहुत अच्छी गेंद अनिश की। अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर सामने सूरज परब, न्यू बैटर। आते आते एक तगड़ा शॉट खेलना चाहते थे, देखना होगा फाइन लेग पर शॉट, फाइन लेग पर फील्डर। एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, और इस 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 31, 31 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। 31 रन, 1 विकेट पर। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी मैदान पर, और अपने बॉलिंग मार्ग पर अनिश। अगली गेंद लेकर सामने गुरु प्रसाद आरुस्कर। यह गेंद कट होकर बाहर की तरफ निकले, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, वाइड बॉल का इशारा, और इस सिंगल के साथ एक बार फिर से स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का। हवा का झोंका थोड़ा सा तेज बह रहा है मैदान पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अनिश। अड़े बल्ले से इस बार मिड विकेट पर कैच का मौका। ओ कैच छूटा, यह मौका था मिड विकेट पर, एक बहुत ही अच्छा मौका था मिड विकेट बाउंड्री पर, लेकिन कैच छूटा और गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर। क्या यह मैच का टर्निंग पॉइंट होगा? कैच छूटा वो आने वाला समय बताएगा जरूर, लेकिन 4 बहुमूल्य रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। स्कोर हो चुका है 36। इस बार ऑप्टम से बाहर, थोड़ा सा लाइन पर बटके, वाइड बॉल का इशारा, एक सिंगल बन गया स्कोर में। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 37। तीसरा ओवर जारी, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन फील्डिंग ने साथ बिल्कुल नहीं दिया। एक मौका बड़ा बना था, और वो भी जो खिलाड़ी बिल्कुल फॉर्म में है उस खिलाड़ी का कैच छूटा। इस बार छोड़ा, ज्यादा टर्न हुई गेंद, एक और एक जो कि ऑफ ब्रेक इनकटर, वाइड बॉल का इशारा, बहुत ज्यादा दूर है गेंद ऑप्टम से, और फिर से 1 रन बन गया स्कोर के खाते में। ज्यादा टर्न हुई गेंद इस बार ऑप्टम से बाहर, और सुंदर एक बार फिर से इस बार ऑप्टम से बाहर गेंद, बल्लेबाज को इस बार मजबूर किया रक्षात्मक तरीके से खेलने के लिए। सामने गुरु प्रसाद आरुस्कर जो कि स्ट्राइकर पर सामना करते हुए, एक अच्छी गेंद, इस ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, और देखना होगा कहीं ना कहीं वापसी करने के लिए एक विकेट तो लेनी पड़ेगी मैदान पर। देखना होगा फिलहाल इस ओवर को किस तरह से समाप्त करते हैं। अगली गेंद इसी बीच में,
ये गेंद इस बार अप स्टंप पर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, खेल समाप्त हुआ और 1 ओवर का 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 38 38 रन 1 विकेट पर 3 ओवर की ही समाप्ति के बाद। तो आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है। 12 डिलीवरीज 25 रन्स। 2 ओवर का खेल बाकी है। 12 डिलीवरीज 25 रन्स। 12 गेंदों में 25 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। बहुत अच्छा मैच हो रहा है मैदान पर। 12 गेंदों का खेल, 2 ओवर का बाकी है और जीतने के लिए चाहिए 25 रन। यश डेवलपर्स और जय भवानी क्लब, ये 2 टीम आमने सामने इस मैदान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन। चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर साइश आ चुके हैं बॉलिंग मार पर। सामने सूरज परप। अच्छी गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जरूर, लेकिन अभी भी चाहिए 24 रन मैच को जीतने के लिए और ये 24 रन बनाने के लिए गेंदें बची है 11 गेंदों में 24 रन मैच को जीतने के लिए। सामने एक बार गुरु प्रसाद आ चुके हैं। देखना होगा ये मौका जो दिया है वो कितना महंगा साबित होता है। फिलहाल अगली गेंद साइश की, छोड़ा जाने दिया ऑफ स्टंप से बाहर। वाइड बॉल का इशारा। वाइड बॉल के साथ 1 रन और बढ़ गया स्कोर के खाते में। तो अभी भी 11 गेंदों का खेल और 23 रन मैच को जीतने के लिए। बहुत अच्छा मैच हो रहा है दोनों के बीच में दोपहर के सत्र में और इसी बीच राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से छोड़ा, कहीं ना कहीं शायद गेंदबाजों को लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए परेशानी जरूर हो। सर पुण्या पालकर और सर नीलेश नाइक मैदान पर, दोनों अंपायर कमेंट्री बॉक्स में हमारे बिल्कुल साथ बैठे हुए। सदगिरी नाइक हमारे स्कोरर है, दिवेश कमेंट्री बॉक्स में सर हरीश काकोडकर और मैं अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत है। ओ ये हवाई फायर, ये मौका बनेगा। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर और इसी के साथ एक बड़ा विकेट चटकाते हुए गेंदबाज साइश गुरु प्रसाद आरोस्कर आउट और वापस डीजे।
So third match for both the teams. Third match for both the teams here. Requesting the umpires and the captain of the fielding side, Amit Amshekar, to please carry on with the proceedings fast. तशेंच क्रिस बॉयसाचे ते बॅट्समॅन आसात तांकांय मातशी रिक्वेस्ट करता जशे तुमचे खेळगडी नेक्स्ट बॅट्समॅन कोण आसतलो ताचे फुडलो नेक्स्ट बॅट्समॅन कोण आसतलो हें मातशें डिसायड करात आनी बेगीन धाडात ग्राउंडार. अदरवायज ऑलरेडी पेनल्टी पडिल्ली आसा 5व्या ओव्हरीन जर तर जे शेड्यूल टायमा भितर 5वी ओव्हर घडना जाल्यार 5 फिल्डर्स भितर आसतले आनी ही क्रुशल मॅचीक तुमकां ताचो फटको पडपाक शकता. So here we are. Sanish, Chris Boyce versus Jayabani Club Kakoda starts off with a wonderful full shot and starts off with a 6. Vinod Wilson once again on the shorter side, and the man from Sangam, the Superman from Sangam, is shining brightly for Chris Boyce. Well, he has played really well for Chris Boyce as an icon player. Not all icon players have played the way he is playing. So Sanish, once again, what a great start when you get a 6 of the very first ball. Going for the switch hit. This is the second one. Might be just landing inside. Oh, I thought he's going for 6 runs, but still, this is Sanish for you. He's not bothered about the big name, who is bowling to him. If he feels that I have to go after it, I'll definitely go. So 2 different shots on square of the wicket. One in the deep square region for a wonderful pull shot, and now a switch hit in the point region. So both the opposite sides have been shown here how to score boundaries and sixes. This is wonderful. This is even better, and good fielding. I thought it might be going for the 4 runs. He timed it very well. There's a half jab flick shot here from the batter. Score moves on to 11. Great start, and here comes Bahubadi of Goa. Sayyid Badiul Sama, the big man. Well, they don't require the small innings from Badi. He's a big man, so they require big innings from this guy. Going for the sweep shot. No chance of a single. The fielder are there closing in. Going for that sweep shot, trying to play that over the short square leg region fielder as the fielding restrictions are on. Once again, this is good ball. Oh, he has dropped the catch. Vinod Wilson, the last man on this ground to drop a catch of his own bowling. That's a great Yorker, trying to flick that ball, getting the leading edge, going to the bowler on his bowling mark. And Vinod Wilson, that's not a day that Jayabani will be hoping that. It's such an odd day for them. This time it was a little shorter, not a catch, but good effort from the fielder. Diving in front is not easy. He did that, trying to take the catch. But he is playing a little half cock, you can say, at this moment after completion of 1. The score is 12 without loss. The comeback was a pretty good over from the bowler.
Maybe a little injury here, diving in front of Vinesh Satarkar. Maybe having a look at the injury, and maybe some first aid required for Vinesh. So he's coming back off the field as it's a non-field injury, and we are having the 12th man going out in the field of play. So in comes Anish from around the wicket. This time it's a wide. So wide ball signal by the umpire. This is good bowling here. Wonderful slow ball. Who is coming for the catch? Oh God, nobody is coming for the catch. That was in the air. He deceived Birdie. All ends up. Well, Anish Wanekar, well, he loves this ground. How many times I have seen him winning the Player of the Series or a player Best Bowler of the Tournament award on this ground. And he's certainly showing his class here. In the previous game also, he almost got rid of Guru Prasad Arochkar. The catch was dropped, but you cannot blame the bowler for that. This is really good bowling here from Anish. He's bowling pace and he exactly knows what the batter is trying to do. Saw the batter that he's going for the switch hit, so bowled it down the leg side. Smart piece of bowling here from Anish. Just 14 on the board. Once again, good shot. There is a fielder in the deep. I think Anish not available in the first match has a little dented, you can say, the spirits because he was considered to be a prime bowler as he was taken in the auction for 16,000 points. And Ahmed Amshekar would have been hoping that they require his services for all 4 matches. But once again, Buddy missed a full toss, lower ball. Buddy. Well, maybe you can just play around like Guru Prasad Arochkar. There can also be a game like that where he plays a little subtle with subdued performance. Bogging down for first 2 or 3 overs, then go for the big shots against the 3rd, 4th or 5th bowler. Good bowling here. Wonderful slow ball. Leg cutter here from Anish Wanekar. Plays for Sanwar Boys. Was picked up by Jai Bhavani Club Kakoda and Ahmed Amshekar. Doing a fabulous job. So just getting a single, getting his team back in this match. Well, nobody has made it through to the next round. That can be any ups and downs in this tournament. There can be a scenario where 3 or 4 teams can be at level with 2 games, 2 wins under their belt at the conclusion of 5 games. So once again, trying to play the slog sweep. Once again, another single. How good is this over? Although he has not picked up the wicket, but he has beaten the batters. All ends up. So just singles in this over so far, and it's 17 without loss after 2. So in comes Vinesh Satarkar. It's a little change in strategy here. Vinesh was bowling the first or second over. Now they have kept in maybe in the 3rd over. Well, very good start from the first 2 bowlers. It's not being easy at the moment for the batters to go for their shots. So in comes Vinesh. This is once again in the air. This might be a catch. Difficult one. Catch dropped here by Dhanraj Sawant. Was there at a short final leg region and they concede 2 runs. I think this is a short of good length or a good length. Little dropping in the length is much better here. Not too short. Just around the good length area. So a little fuller. This time, once again, pull shot. Short ball, dragged in shot and pulled away nicely and brilliantly by Sanesh. With the wind. And always when you play with the wind, it goes with the wind outside defense.
That takes the score to 25. Vinesh has been odd with his line and length. Sometimes in the previous game he bowled full tosses, which was taken to sixes by Guru Prasad Aroskar. This time little shorter. So the keeper standing in front now. Ah, that's a good catch here. That's a very good catch. Not easy. Good reflexes and watching it till the last moment. Papa and the wicket of Sanesh goes back in the pavilion. So Vinay strikes. Second wicket down. In fact, first wicket down. Bowlers in around Curchorem are doing still a fabulous job. Most of the bowlers have been economical, not too expensive. And that's a positive sign here in the Curchorem Champions Trophy. In comes a new batter, Sanjot Perni. So just little changes in the field for the new batter. This is the sixth match of the day played between Jayabani Club Kakoda versus Chris Boys. Pretty good even Stevens balance match at the moment. It's again driven nicely and well, it should have been stopped, but there is a fielder in the deep, so it's just going to be a single and he's going to get a big man on strike who is struggling with timing at the moment. But it's just a matter of one good hit. Sometimes one particular bowler can be bowling good against a good batsman. But when the bowler changes, it also raises your confidence as a batter. Ah, such a loose ball. Such a loose ball. Slower ball tried here against Buddy. He was bowling so well with the medium pacers. Why do you have to try the slower ball? Mistake here from the bowler, and it has been taken for many a rows back here by Buddy. The big man strikes. Score moves on to 32. Yeah, this is in the gap and should get a boundary. So once again, another expensive over here from Vinesh Satarkar. So after completion of 3 overs, getting a move on here, Chris Boys, and getting the total to 36. So in comes Saish, who has bowled very decently so far in this competition. Once again, down the leg side. So another 2 runs added to the total. Not a bad length here. Just the line is down the leg side. And for the tennis ball players, it's easy line when you're bowling onto their legs and allowing them to pick it up on the leg side. They feel very comfortable. Oh, this is going a little lackluster here. 4 runs without wasting any energy and without any effort from the batters. 2 of the wides, 2 of the byes.
Again, this is much better. This is much fuller here. So they are just going to get a single against the icon Ahmed Amshekar. So single will take the score to 41. So 41, and gets the big man. He has got a license now. License to go after the bowling. This is in the air. He didn't time it that well. Might be a catch, and Vinod Wilson takes it easily. The better fielder was there in the cow corner region. Did not get the elevation. Just looped it into the hands of the fielder. And important wicket here at the time for Jai Bhavani Club Kakoda. So big man, Buddy departs. Kanekar Gatu. That's a shot. That's a shot. Shot down the leg side, and Gatu hits it 10 rows back on the stands. Gatu likes this ground, and if this continues, this sort of bowling down the leg side shot, and Gatu will go easily after the bowlers to get even few more. This time very well left here. Well, it's wide signal here, left here by the batter, understanding that he is going to get an extra ball. So sensible batting here from Gatu, getting the crease boys close to 50 at the moment, 48. And this is the 4th over in progress. They'll be thinking about somewhere around 65 runs. They got good bowling attack, crease boys. Going for the switch hit. This is shot outside the off stump. Gatu can play that shot well. 50 up here for crease boys in the 4th over. Saish had bowled a pretty good line and length, but I don't know, maybe they are feeling tired out playing in the hot sun, or maybe a little lack of concentration here from the bowlers is paying hefty here for the captain and the side, Jai Bhavani Club Kakoda. .52. So Gatu is a home ground, and there will be home support for him as well. Local hero, local boy. Trying to play that once again, but this is little Fuller. Might be going for the 2 runs. Anish quickly coming on and still taken the 2 runs. The fielders were deep, but by the time they come, 2 runs easily taken here by Gatu and his partner Sanjot. Takes the score to 54. So still few balls left. It can be somewhere around 65-70 as well. This is in the air. This might be a catch. Vinod Wilson it is. He will not drop those. So another wicket goes back in the pavilion. So good bowling in the end by the bowler and taking a wicket at the right time. Gatu was looking dangerous at this stage. After completion of 4 overs, it is 54 for the loss of 3.
So Angelo going. I don't understand Angelo being an outstation player. Angelo coming so late down the batting order. Maybe he feels that he's not in good touch. Because Angelo favors playing actually in Curchorem. Surprising that he is coming little lower down the order. This time also he has not timed it well, Bablu, but still get a single. Maybe they are going for the second run. No, says Angelo. This is good finish, very good finish as far as this over is concerned. The fifth over from Bhavnesh. Not bowling the short balls, not bowling the full tosses. Just 56 on the board at present for Chris Boyce. Once again going for the heave. Angelo missing it, finds the gap. Very nicely fielded, might be going, searching for the second run. Good throw, directly in the hands. And it is going down to the third umpire, referral. I think way Angelo was running, he was struggling at the striker's end. So might be close and might be the decision going in towards the favor of Jai Bhavani Club Kakoda. And it's out. So Angelo has to go back. I thought he is going to go in favor of the bowling department, and third umpire also confirms that. So it's 57 with 2 balls remaining. So the score has not gone beyond the limit of Jai Bhavani Club Kakoda. Certainly, Bhavnesh has done a good job, but still 2 balls are left. Cannot concede a 6 and maybe 2 sixes or a 6 at this moment, just to see that he bowls well the last 2 balls. In comes Adesh. Adesh strikes. Might be a 6 runs. Yes, it is. And catch dropped by Aslam Sheikh outside the boundary. 500, which was put on board by Mansoor Mullah, has not been won here by Aslam. Once again, good shot here. Might be running for the second run. Sandeep Kudikar Bablu and throw at the striker's end to the keeper's end, and is going to be an easy run out. So good throw from Ame to the keeper. Restrict the batters to just a single. So finally 64 is what Chris Boyce have managed to get, and 65 is the target set for Jai Bhavani Club Kakoda to win their first match. It's not a big total, but certainly it can be defendable. It can be chased as well. A well-balanced match is going to be in this run chase. So we'll see the match in due course of time with Ashok Naik sir in the commentary box. सैयद बद्दी ने बनाए 13 रन, स्वप्नेश ने बनाए 12 रन.
और उसी की बदौलत 64 रन टोटल और 65 का टारगेट मैच को जीतने के लिए। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर पहुंच चुकी है टीम की। 65 का टारगेट है, दोनों अंपायर वो भी जुड़ चुके हैं, सदगिरी नाइक। और देखना होगा पावर प्ले का ओवर लेकर, पहला ओवर लेकर जारी रखकर गेंदबाजी के मोर्चे पर कौन आते हैं बॉलिंग मार्ग पर। शायद गुरुशन चिकल की दिखाई देते हुए गेंदबाजी पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से। और स्ट्राइक पर सामना करेंगे अमित दामसेकर और उन्हीं के साथ नॉन स्ट्राइकर इन पर विनोद विल्सन। ये जोड़ी 65 रन टोटल मैच को जीतने के लिए। आने वाले मैच के लिए एक बार फिर से कैप्टन को कॉल कर रहे काकोड़ा बॉयज और स्टार बॉयज, दोनों टीम कैप्टन, काकोड़ा बॉयज और स्टार बॉयज कैप्टन। आइए टॉस के लिए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। 65 का टारगेट और दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई मैदान पर। पहले गेंद, इस बार बेहतरीन शॉट, बेहतरीन फील्डिंग, 1 रन, अच्छी फील्डिंग। और जब तक थ्रो पहुंचता 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छा शॉट, उतने बेहतरीन फील्डिंग, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 2 रन बचा है अपने टीम के लिए। 2 रन के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ 65 रनों का टारगेट है टोटल। राइट आर्म ओवर द विकेट, गुरुशन चिकल की एक बार फिर से अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार ओवर पिच गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ऑफ स्टंप पर गेंद चले गई विकेट कीपर के हाथों में। बल्ला घुमाया मिड विकेट पर, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। और एक बार फिर से अगली गेंद। 2 फील्डर है, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और एक मिड विकेट बाउंड्री पर। स्क्वायर लेग पर अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ नीलेश नाइक सर। ओ यार्कर लेन की गेंद, स्विच हिट करना चाहते थे, अपील हुआ कैच के लिए। ओवर थ्रो, डाउन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते और 1 रन इसी बीच में मिलता हुआ स्कोर के खाते में। लेग बाइज का इशारा अंपायर का, इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 3 पर। एक अच्छा टोटल है। 5 ओवर की अगर बात की जाए तो 13 रन के साथ प्रति ओवर रन बनाने पड़ेंगे। 65 का टारगेट। पहला ओवर जो पावर प्ले का, गुरुशन बिल्कुल एक सटीक लाइन पर, खास करके ज्यादा पुलर लेन की गेंदबाजी हो रही है मैदान पर। विनोद विल्सन स्ट्राइक पर। और इस बार मिड विकेट पर फील्डर, लेकिन बिल्कुल बबलू ब्रेक नहीं लगा बिल्कुल। और गेंद चलेगी मिड विकेट बाउंड्री पर 4 रन के लिए। डीजे अच्छी गेंद, इस बार सम्मानजनक खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बहुत दूर है फील्डर। जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते आराम के साथ, बिल्कुल 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल बन गया स्कोर के खाते में और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 8 रन पर। पहला ओवर अभी भी जारी। ओपनिंग जोड़ी अमित दामसेकर और उन्हीं के साथ विनोद विल्सन, ये जोड़ी मैदान पर। और गुरुशन चिकल की गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। फिर से इस बार सफल हुए थे, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से हलचल थी गुरुशन के, शायद बिल्कुल गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क हुआ, ऐसा कुछ शायद
जो कि कमेंट्री बॉक्स में से अनुमान। फिलहाल पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ जो पावर प्ले का, और पहले ओवर के बाद टोटल हो चुका है 8 रन। स्कोर 65 रनों के जवाब में बिना किसी नुकसान से। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हैं डीजे करीम और AB25 के हमारे कैमरामैन है राजू, और राजू के साथ हमारे बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में नितेश। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। और साहिल, गेंदबाजी में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से। संजोत, दूसरे ओवर की शुरुआत, सामने विनोद विल्सन। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ और फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर। ओवर पिच गेंद, इस बार अपील जरूर हुआ था लेकिन बिल्कुल चौकर नहीं निगाहे। ढेर सारा क्रिकेट का कई सालों का अनुभव सर नीलेश नाइक। यह गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, और वाइड बॉल के साथ एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। एक सिंगल बना अतिरिक्त रन के साथ, और संजोत फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद, हल्के से खेला, गेंद को फ्लिक किया। इस बार मिड विकेट पर फील्डर गुरशन ताते गेंद को उठाते फील्ड करते। चलिए टॉस के लिए आने वाले मैच के लिए दोनों कैप्टन, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, दोनों कैप्टन जल्द से जल्द चले टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। काकोड़ा बॉयज और स्टार बॉयज और काकोड़ा बॉयज के बीच में अगला मैच होगा। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर गुरशन गेंद को उठाते फील्ड करते, फिर से एक रन मिल गया स्कोर में। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 11 पर पहुंचा, खेल जारी। दूसरे ओवर का अमित दामसीकर और उन्हीं के साथ विनोद विल्सन, ये जोड़ी मैदान पर, टारगेट 65 रनों का मैच को जीतने के लिए। फुल टॉस, अल्टी पल्टी, कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे सन 11 पर, सामने 3 पर अमेय दामसेकर, और संजत अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। ओवर पिच गेंद, इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, और पहला विकेट इसी के साथ वापस। 16 रन 1 विकेट पर। डीजे
उल्टी पल्टी करना चाहते थे विनोद विल्सन, इस बार गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं, गेंद चले गए विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में। उमेश पाटिल कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। चेंज ऑफ पेस गति में परिवर्तन, अच्छा कवर ड्राइव, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर एक सिंगल, एक रन के साथ स्कोर 17-17। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। और अब सामने प्रवीण नाइक सामना करेंगे, एक बहुत ही अच्छे बैटर है बड़े शॉट के लिए, बड़े इनिंग के लिए। उमेश पाटिल थोड़ी सी धीमी फेंकी गेंद, टिप्पा खाने के बाद नीचे भी रही। प्रवीण नाइक ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर चली गई विकेट कीपर के हाथों में। और एक जो कि डार्ट गेंद के साथ अच्छा टोटल 65 रन खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का, और अच्छी गेंदबाजी भी दिखाई देती हुई। यह ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, इस बार लाइन पर बैठ के वाइड बॉल का इशारा, और इस वाइड बॉल के साथ सिंगल के साथ स्कोर भी थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ। आने वाला मैच काकोड़ा बॉयज और स्टार बॉयज इन दो टीमों के बीच में होगा। फिर से चौड़ा और टॉस हो जाएगा इस मैच का। सर रूपेश महाले जिनसे हाथों इस मैच का टॉस हो जाएगा, और एक बार वाइड बॉल के साथ 1 रन मिला स्कोर में। मिस टाइम शॉट कवर पर, लेकिन नो मैच लैंड में गेंद, और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर तेजी के साथ गेंद को आते फील्ड करते 1 ही रन फिर से मिलता हुआ स्कोर के खाते में। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये शॉट प्रवीण के बल्ले से मिस टाइम जरूर हुआ था। अच्छी गेंदबाजी हो रही है उमेश पाटिल की, बिल्कुल रोक लगा दिया है बड़े शॉट से, और अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। सामने बैटर है विनोद विल्सन। ये थोड़ी नीचे रही इस बार, खड़े खड़े खेलना चाहते थे ऑन साइड पर। अच्छा ओवर अब तक चलता हुआ। इस ओवर की अगर बात की जाए तो उमेश पाटिल का बिल्कुल जकड़ कर रखा है, बांध कर रखा है। 20 टोटल स्कोर, 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 20 लॉस ऑफ 1 विकेट। सर इस बार स्लॉट में गेंद मिड विकेट पर, हवाई फायर, सिक्सर। सर रूपेश महाले जिनसे हाथों इस मैच का, आने वाले मैच का टॉस हो रहा है स्टार बॉयज और काकड़ा बॉयज के बीच में। तो फिलहाल स्कोर 6 रन के साथ से आगे बढ़ा। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल 26 लॉस ऑफ 1 विकेट, 26 रन 1 विकेट पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद। ये तगड़ा शॉट, ये करारा शॉट, मिड विकेट पर सिक्सर, 6 रन के लिए डीजे। एक मौका बना है, मौके के बाद सिंगल
प्रवीण के खाते में। स्ट्राइक मिला विनोद विल्सन को। छोटी गेंद पर एक तगड़ा शॉट मिड विकेट पर, 6 रन। छोड़ा जाने दिया इस बार गेंद को विकेट कीपर के हाथों में, अपटम से बाहर। वाइड बॉल का इशारा। इस वाइड बॉल के साथ और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, और इस एक रन के साथ से स्कोर 34, 34 रन, एक विकेट पर। 31 रन चाहिए। गणेश पाटिल बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया शॉट, इनसाइड आउट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, और फिर से एक सिंगल। स्कोर इस एक रन के साथ से 35 पर पहुंचा। 30 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। स्ट्राइक एंड पर प्रवीण नाइक और पापा वो सामना करेंगे। एक बैठक शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर, 6 रन के लिए। गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हो। ऑफसाइड पर एक 7 गेंदों में 24 रन। इस बार हवाई फायर, लेकिन कैच का मौका, और इसी के साथ मौके पर एक बड़ा शॉट जरूर लगाया, लेकिन उतना महंगा साबित नहीं हुआ। आउट होकर वापस 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 4 ओवर के बाद टोटल हो चुका है 41। तो 24 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। लास्ट ओवर टू गो, 6 गेंदे और 24 रन। लास्ट ओवर टू गो, 6 गेंदे और 24 रन। आने वाला मैच स्टार बॉयज और काकोड़ा बॉयज, इन दो टीमों के बीच में होगा। अंतिम ओवर का खेल, रमेश पांडव। फुल टॉस गेंद, स्वीप किया ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर गुरुशन गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल। 1 रन के साथ 5 गेंदों का खेल बाकी है, 23 रन, 5-11, 23 रन। स्कोर हो चुका है 42, लॉस ऑफ 2 विकेट, 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जय भवानी क्लब बल्लेबाजी कर रही है, 65 के टारगेट के सामने जवाब दे रही है मैदान पर। थोड़ा सा परिवर्तन फील्डिंग में। न्यू बैटर मैदान पर, विनेश। छोटी गेंद इस बार, बहुत ही बेहतरीन शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन फील्डर है मौजूद। एक सिंगल विनेश सतरकर के खाते में, एक रन टीम के स्कोर के खाते में, और इस सिंगल के साथ स्कोर एक बार फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ 43 रन पर, 43, लॉस ऑफ 2 विकेट। 4 गेंदों में 22 रन मैच को जीतने के लिए।
फिर से सिंगल। अब सिंगल से मुश्किल होगा क्योंकि आने वाले सिर्फ बची गेंदे 3 और रन चाहिए 21। 3 डिलीवरीज 21 रन्स। अच्छी गेंदबाजी, लगातार 3 गेंदों पर 3 सिंगल। रमेश राइट आर्म ओवर द विकेट। अपने बॉलिंग मार पर 4 फील्डर ऑफ साइड पर, 5 ऑन साइड पर। सफल हुए इस बार। गेंद हवा में, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, और इसी के साथ और एक विकेट चला गया। डीजे एक विकेट और न्यू बैटर मैदान पर। और ये गेंद फुल टॉस गेंद, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर डीप पर एक बड़ा शॉट, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। और अंपायर का इशारा आज की बात थर्ड अंपायर की तरफ, नो बॉल चेक करने के लिए। जी बिल्कुल, नो बॉल, और नो बॉल के साथ और एक रन बढ़ गया स्कोर के खाते में। और आने वाली गेंद होगी जो अगली गेंद वो होगी प्रीत की। स्कोर हो चुका है टोटल 51। 2 गेंदे 14 रन। फ्रीड का इशारा, आने वाली गेंद होगी प्रीत की गेंद। और फ्रीड की गेंद, लेकिन उतना फायदा नहीं मिला। कैच तो जरूर पकड़ा था और थ्रो भी अच्छा था। एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में, तो इस एक रन के साथ स्कोर थोड़ा सा आगे निकला। 52 टोटल स्कोर। लास्ट बॉल टू गो और जीतने के लिए चाहिए 13 रन। तो चलिए बिल्कुल मुकाबला समाप्त होता हुआ मैदान पर। विनोद विल्सन एक अच्छी इनिंग जरूर खेली, 2 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, लेकिन जीत बिल्कुल जो कि टीम के लिए होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। सनील ने बल्ले से एक छक्का लगाया। शुरू में अमित दामसेकर बहुत सस्ते में आउट हुए और टोटल जो कि मैच हाथों से छूटा। फिलहाल मैन ऑफ द मैच इस मैच का आपके लिए जरूर जानकारी होगी, जो क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम के शुरू में 21 रन बनाए थे बल्लेबाजी में। सनेश गावकर ने 13 रन बनाए थे, सैयद बद्दी ने 12 रन बनाए थे, स्वप्नेश ने। और गेंदबाजी अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से गुरुशंत 1 विकेट चटकाया, संजोत ने 1 विकेट चटकाया, उमेश पाटिल जो कि 1 विकेट। तो सभी गेंदबाजों ने भी बहुत प्रभावित किया। थोड़ा सा हमें भी, हमारे स्कोरर को भी मुश्किल हो रहा है कि इस मैच के लिए मैन ऑफ द मैच किनको दिया जाए।
all three. And here it is. Star Boys need to stay in the race. They have to win this match compulsorily. In comes Gungru. Gaurish Nagwekar to bowl to. So wonderful shot here from Sahil to get himself 2 runs. So very strong unit of Kakoda boys, especially the outstation players with Gaurish Nagwekar, Sandesh Thakur, top bowlers and a great all-rounders. Can be handy with the bat as well. Not handy, but more than handy. And that's what they have shown here in this tournament. That's why they have won the matches comprehensively. And then comes Punaji Kalangudkar as a specialist batter. So it's going to be a good total that has to be posted by these opponents against Kakoda boys. Vicky also being the icon player, Bala. So 5 good top order batters for this team. And all have performed. Oh, look at that ball. Look at that ball. This is a beauty. This is the one ball that he has invented. Sometimes he bowls with the ball that cuts in and it dips in at the last moment. And with the pace, when you get the pace also with the dipping, it makes difficult for the batters, just like how it was for Sahil. Once again, too fast. Cannot allow that free swing of the bat because of the pace that he bowls with. Oh, that's a shot. That's a class shot here from Anand Patil. The ball goes away towards the fence for 4 runs. To play this shot against Gungru is not easy. He has got a pace. You have to be timing that absolutely. And the punch was beautiful from Anand Patil. Getting the boundary. Taking the score to 7 runs. So again going for the switch, it did not time it. This time it was more pace from Gungru. And that single will take the score to 8 after completion of first over. प्लेयर ऑफ द मॅच हांव रिक्वेस्ट करता रुपेश महालेक वो प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड दिवपाक. आमचो एक गेस्ट मानेस्त बशिल्लो आसा आनी प्लेयर ऑफ द मॅच वता सनेश गांवकर. सनेश मातसो यो आनी तुजो प्लेयर ऑफ द मॅच. 2 फाटी सनेशाक प्लेयर ऑफ द मॅच मेळिल्लो आसा. एक आयकॉन प्लेयर जो सांग्या वयलो आनी हांगा कुर्चेरेम चॅम्पियन्स ट्रॉफीक बरो शायन जाता फॉर क्रिस बॉयज. जबरदस्त परफॉर्मन्स सनेशाचे चल्ला ह्या टुर्नामेंटाक आनी त्या खातीर परत एकदां सनेशाक रिक्वेस्ट करता तूं यो आनी तुजो प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड कलेक्ट कर. Going for the full-blooded drive, just getting an inside half of the bat. Star Boys, yes, they need to stay in the race, and for that, both these openers, one from Uzgaon, one from Dharbandoda, plays for Ganpati Warriors, Uzgaon, and Ganpati Warriors, Dharbandoda. Both these players, Anand Patil and Sahil.
Once again, trying for the big one outside edge and catch taken cleanly by the wicketkeeper Punaji Kalangudkar, and Sahil goes back in the pavilion in trying to go for the big one. So here it is, the icon player and the captain of Kakoda Boys strikes is 9 for 1. This time he didn't time it that well. Yes, likes that region across the square leg and mid wicket. Gone for the big heave once again. I think those teams whose outstation players are performing along with the mix of the players from Sangam, Sawadem and Kepem. If those top 5 players along with the icon player performs decently, I think those teams will certainly go through to the semi-finals. Wonderful off spinner here from Vicky. Once again, this is quicker ball, and Anand Patil was hoping that it will be a slower ball, but Vicky is mixing up well, not allowing the batters to pick it up. Smart computer cricketer, I call him computer cricketer of Curchorem, does well most of the times. This time nicely timed, might be in the air. Oh, it was the tall man. Tall man Gungru was there at the long on region, and maybe just a little more effort could have gone for 6 runs. Hello, umpire, third umpire referral, Magala. Out is the signal from third umpire.
This is in the air and could have been taken. So just away from the fielder, getting 2 runs here. So just a single, in fact. Scoreboard is not moving at all, and it's Sandesh Thakur bowling the third over. Kakoda boys are looking very firm at this stage. Score is 13 at the moment. Yeah, little fumble there. That's enough for Anand Patil to scamper through for the second. Still, they are searching for the boundaries and sixes, which are hard to come by from the strong bowling unit of Kakoda boys. They look to be covered up at this moment, the bowling and batting department, with Vicky bowling well. This time he nicely played it. He was waiting for that, and once again, oh, he saves it. He saves it and puts it inside. What a valiant effort here from Gungru. I thought he's going for 6 runs, but he was better than my imagination. That's the commitment level and that's the fitness level that we want to see in Curchorem Champions Trophy, and it has been shown here by Gaurish Nagvekar. That's why he is highly rated all-rounder in Goa. Once again, Anand Patil is playing well, but he's not finding the gaps. And when he times it well, it has been stopped by the boundary riders, especially by Gaurish. Still they are searching for that 6 in this innings. Star Boys, after completion of 3, is 18 for 2. That's a shot. So finally, we saw the first 6 in the 4th over, which Star Boys were waiting to get for quite some time. Anand Patil has certainly done really well in this, but he has not got a helping hand from the other teammates around. This time in the air. This time it might be a catch. Gaurish once again. This time it's 6 runs. He tried hard. He tried hard. But finally, some sort of smiles in the camp of Star Boys.
So somewhere around 55, 60. They can put a good fight, Star Boys. Well, you never know what sort of total is good enough on in any given day, on any given match. If the wickets are be taken, you just need to be hopeful. Just because in the previous games 60-65 runs have been chased doesn't mean that every game 65 or 60 is going to be chased. You have to give yourself a chance. Score moves on to 42, and that's a false shot played by Anand Patil, trying to go down the track once again, just miscued and given straight to the keeper. It doesn't commit a mistake, Punaji Kalangudkar. So Anand Patil, after showing his wonderful talent with the bat, just goes past. Third wicket down, and is taken by Amit. So now the wicket gone back, and it looks to be Sarthak, who has already hit one big six in this tournament against the previous team that he faced in the mid-wicket region against Amit. And an outside edge once again, back-to-back wickets here, and Amit strikes. So good catch here, good reflex from Punaji Kalangudkar. This was a little difficult than the first one. He has to go on towards his right, stretch his right arm, and he takes it in the second attempt. Sarthak comes and goes back. Exceedingly good over so far from Amit. And he was on a hat trick of this ball. It's a dot ball considered here by Mahadev. And the fifth bowler option that was chosen by Vicky is certainly working well for him, for Kakoda boys. This is good effort ball and might be run out. It's going to be an easy run out. Long walk back here for Mahadev Pate. And he goes back. So till the time Anand Patil was batting, they had little hopes. This over has been a really good one, and pegging the way back after the previous expensive over from Aniket Bhatikar. Amit Syed bowling beautifully, just conceding 1 run, taking 2 wickets and 1 in the form of run out as well. So how good in the context of this match. Kakoda boys looking very, very strong. And the further matches are going to be very important against Chris Boys versus Yash Developers and Kakoda Boys versus Yash Developers. There's going to be some important matches. He's clean bowled him. Looks to be, yes, he's out. So 3 wickets for Amit Syed. The onward journey towards the semi-finals is working very right here for Kakoda Boys. They are doing fabulous job, and I think is going to be a wonderful side that is going to not chase a big total, but it's going to be a average total to chase here at this moment in 5 overs. 43 is the target. So Kakoda Boys, clinical bowling performance, and now it's up to the batters. Next match is going to be between Yash Developers versus Chris Boys. Yash Developers versus Chris Boys. Captains, please come.
सीने में सोनिया तो पाया जितनी सोनी है नहीं सोनिए सारे इंडिया तो नहीं कोई भूनिए जिंदगी मेरा छड़ा सुनो तेरी फेस बंदे को नशे में डुबाया she don't know दुनिया she कहते crazy गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ निकलती हुई 4 रन के लिए। तो चौके के साथ शुरुआत होती हुई मैदान पर काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम की 43 का टारगेट है। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर, पावर प्ले का पहला ओवर और अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी नीचे रही, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, दूर से खेलना चाहते थे। सामने स्ट्राइक एंड पर पुनाजी कालंगुटकर जो ओपनिंग जोड़ी में स्ट्राइक पर सामना करते हुए स्कोर आगे बढ़ा 5 पर। और एक बड़ा शॉट इस बार मिड विकेट पर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे आनंद पाटिल थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं पावर प्ले में। छोटी गेंद इस बार ऑन साइड पर, गेंद हवा में, मिड विकेट पर, फील्डर से दूर गेंद, डीप मिड विकेट पर, सिक्सर 6 रन के लिए।
कर क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम फील्डिंग करने का फैसला किया है। थैंक यू। आने वाला मैच जो क्रिस बॉयज और यश डेवलपर्स इन दो टीमों के बीच में, टॉस जीता है क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम ने, पहले फील्डिंग करने का फैसला और यश डेवलपर्स क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी को मौका दिया है। तो फिलहाल पहले ओवर का खेल और पहले ओवर में बने टोटल 22 रन स्कोर बिना किसी नुकसान से। दूसरे ओवर की शुरुआत फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर पावर प्ले की समाप्ति के बाद और गेंदबाजी के लिए प्रवीण सामने बैटर है पुनाजी कलंगुटकर। इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर एक सिंगल बड़े आराम के साथ पूरा होता हुआ स्कोर में इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 23 टोटल, 23 विदाउट लॉस। कारपेट के साथ खेला इस बार ओवर पिच गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर फिर से एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। बिल्कुल 43 रनों का टारगेट है पावर प्ले में। पहले ओवर में एक अच्छी शुरुआत जो रन होने चाहिए थे वो रन बन चुके हैं मैदान पर, खास करके पुनाजी का लंगआउट के बल्ले से, और वही एक बार फिर से स्ट्राइक पर सामना करते हुए प्रवीण की गेंदबाजी का। इस बार फिर से थोड़े सा हवा में मिड विकेट पर मौका और इसी के साथ पहला विकेट पुनाजी का लंगोटकर आउट। डीजे और विकी नाइक का साथ देने के लिए स्ट्राइक पर न्यू बैटर जो सामना करेंगे अगली गेंद का। स्विच हिट कवर पॉइंट बाउंड्री पर सिक्सर 6 रन के लिए। अच्छी गेंद यॉर्कर लेन के, लेकिन बिल्कुल सही अंदाज के साथ खेला गेंद को मिड विकेट पर फील्डर। 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में और इस 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा टोटल 31 रनों पर। 1 विकेट पर 31 रन। पुनाजी का लंगोटकर 2 चौके 2 छक्के लगाकर आउट। 22 पर 7 पर शंकर गांवकर और बॉलिंग मार्ग पर प्रवीण राउत अगली गेंद लेकर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ऑन साइड पर बल्ला घुमाया था लेकिन गेंद चली गई ऑफ स्टंप पर। विकेट कीपर के हाथों में 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल हो चुका है 31 लॉस ऑफ 1 विकेट। टारगेट 43 रनों का, 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी मैच का।
मैच को जीतने के लिए। ये हवा में शॉट कैच का मौका, कवर पर एक आसान सा और दूसरा विकेट। सिर्फ 2 रन चाहिए, आने वाले गेंदों का खेल जरूर बाकी है। दूसरा विकेट वापस देखना होगा नए बल्लेबाज कौन आते हैं मैदान पर, लेकिन तब तक जाते हैं हमारे डीजे के साथ। मैदान पर 2 रन मैच को जीतने के लिए। इस बार हवा में शॉट, हवाई फायर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद सी मारिका से बाहर, सिक्सर। मैच समाप्त होता हुआ मैदान पर और मैन ऑफ द मैच के साथ जुड़ जाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले चलिए फील्डिंग के लिए। टॉस जीता है क्रिस बॉयज क्रिकेट टीम ने। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है क्रिस बॉयज ने और बल्लेबाजी को मौका दिया है यश डेवलपर्स क्रिकेट टीम को। इस मैच के मैन ऑफ द मैच तो मैन ऑफ द मैच इस मैच के चलिए अमित सैयद। एक बहुत अच्छी बल्लेबाजी रही थी, 33 रन बनाए थे, वो मैन ऑफ द बिल्कुल जो हम वक्त की जो थोड़ी सी जो कि चर्चा कर रहे थे वो बिल्कुल वक्त जो कि पूरा हो गया है। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर, स्ट्राइक पर बैटर है मोहित गांवकर सामना करते हुए और गुरुशंत अपने बॉलिंग मार्ग पर पावर प्ले का पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए। और पहली गेंद और पिच गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, लेकिन पावर प्ले में बिल्कुल कोई फील्डर नहीं था। गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। एक अच्छी गेंद थी और उस पर तगड़ा शॉट। पावर प्ले में चौके के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ
यश डेवलपर्स क्रिकेट टीम का। आइए मैन ऑफ द मैच के लिए अमित सैयद, चलिए जल्द से जल्द अमित सैयद मैन ऑफ द मैच के लिए आपके ट्रॉफी। इसी बीच में अंपायर का इशारा, वाइड बॉल का एक सिंगल और इसे एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 5 रन पर। डॉट गेन इस बार गुरुशंत, मोहित गांवकर और गुरु प्रसाद आरुस्कर, ये लेफ्ट हैंडर। दो बेहतरीन टीम है शाम के दौर में आमने सामने इस मैदान पर। स्टार बॉयज ऑफ कुरचोरेम जिनसे आयोजित फुल टॉस गेंद, लेकिन भीतरी किनारा लेते हुए मैदान पर फील्डर एक सिंगल। कुरचोरेम चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप ए ग्रुप बी, कल दो टीम जो जाएगी आगे, आज और कल, और तीसरे दिन में जो दो इस बार ऑफ स्टंप पर ओवर पिच गेंद, बल्ला घुमाया था, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। हाँ ऑफ स्टंप पर अच्छी गेंद, गुरुचंद बिल्कुल गुरु प्रसाद की परीक्षा ले रहे गेंदबाजी के साथ, और एक बार बिल्कुल जो कि थोड़ा सा चकमा दिया, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। राउंड विकेट लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए गुरुशंत बॉलिंग मार पर आगे निकले बड़े शॉट के लिए, नो बॉल का इशारा, ओवर स्टेप हो गए लाइन पर बॉलिंग मार पर गुरुशंत। तो नो बॉल के साथ एक रन भी मिल गया स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा टोटल 7 रन। एक चौका 5 पर मोहित गांवकर जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर, स्ट्राइक पर गुरुशंत थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन नो बॉल के साथ आने वाली गेंद का इशारा होगा अंपायर का, फ्री हिट की गेंद का, फ्री हिट की गेंद। राउंड विकेट गुरुशंत अपने बॉलिंग मार पर। गुरुशंत वापस एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म राउंड विकेट, अगली गेंद लेकर फ्री हिट की गेंद। ऑप्टम से बाहर, गुरुशंत थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं इस ओवर में। वाइड बॉल का इशारा, एक रन मिला स्कोर में और एक बार फिर से इशारा जारी रहेगा फ्री हिट का। फिर से बाहर ऑफ स्टंप से। यह ओवर थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है मैच में, 5 ओवर का मैच है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुशंत इस ओवर में वाइड बॉल के साथ निश्चित रूप से अपने टीम को, जो कि अतिरिक्त 3 रन के साथ 3 गेंदे भी जो कि बढ़ चुके हैं। देखना होगा फिलहाल क्या होता है अगली गेंद पर। सामने गुरु प्रसाद स्ट्राइक पर बैटर, ओ बाहरी किनारा, थर्ड मैन पर फील्डर एक सिंगल। थोड़ा सा गेंद निश्चित रूप से ब्रेक इन कटर गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, स्लिप पर निकली थी थोड़ी सी अपेश, लेकिन फील्डर से काफी आगे गेंद गिरी थी। वही एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में, एक रन गुरु प्रसाद के खाते में। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 10 रन बिना किसी नुकसान से पहले ओवर की समाप्ति के बाद। मुकाबला जारी मैदान पर दो टीमों के बीच में, यश डेवलपर्स और क्रिस बॉयज। आने वाला मैच होगा जय भवानी क्लब वर्सेस स्टार बॉयज, इन दो टीमों के बीच में।
और स्लॉग स्वीप मिड विकेट पर गुरुप्रसाद के बल्ले से डीप मिड विकेट पर देखने होगा अंपायर का इशारा, सिक्सर 6 रन के लिए। फील्डिंग और फील्डिंग के साथ गेंदबाज को दाद देना पड़ेगा। देख आप यूट्यूब पर रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से गेंदबाज ने ये करामत की, लेकिन एक अच्छा विकेट आउट और वापस दूसरे रन के लिए पलटे थे मोहित गांवकर। सामना करेंगे संजोत की गेंदबाजी का। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 24 टोटल 24 रन, एक विकेट पर 24 लॉस ऑफ 1 विकेट। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इस बार पूरी तरह से गेंद पर जो कि फंस चुके हैं। बोल्ड है उस गेंद पर, एक यॉर्कर, सटीक यॉर्कर संजोत का, और सूरज परब वापस डीजे।
सामने न्यू बैटर स्ट्राइक पर। बहुत अच्छी गेंद, बाहरी किनारा लेते हुए गेंद स्लिप की तरफ निकली। एक अच्छा ओवर, सफल ओवर। स्कोर 24 Always do it on my own, so I gotta Total get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Loss Never of 2 give wickets. up, never slow New batter till I हर्षद finally माथुरकर prove आते it. आते Never एक अच्छी listen गेंद to लेग the कटर। no's, I just एक wanna अच्छा keep ओवर, 2 moving. छक्के Keep लगे my पहले head शुरू up में when I संजोत पर, act. लेकिन उसके Head बाद up, that's a कमबैक किया, एक fact. सफलता। Never 2 looking ओवर का खेल back, समाप्त I'ma हुआ keep myself और in check. Keep 2 my head ओवर up, की staying समाप्ति के बाद strong. टोटल 24, लॉस ऑफ 2 विकेट। Always moving on, feel I don't belong. Tell my thoughts to move along, push myself to be सामने एक बार फिर से गुरुप्रसाद स्ट्राइक पर सामना करते हुए और उमेश पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आड़े बल्ले से इस बार स्वीप किया। 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। अच्छी फील्डिंग, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। 25 रन टोटल। हर्षद मातोंडकर स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर इन पर गुरुप्रसाद राउंड विकेट। लेफ्ट आर्म जो ओवर द विकेट उमेश पाटिल जो लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज। 25 लॉस ऑफ 2 विकेट। छोटी गेंद इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, बहुत ही बेहतरीन शॉट। स्क्वायर लेग बाउंड्री से लंबी दौड़ लगाई, गेंद उनसे दूर। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे की ओर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार थोड़ी से फिर से हवा में गेंद और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। गुरुचंद मिड विकेट बाउंड्री पर, सही पूर्वानुमान। जो गेंद लगभग निकल रही थी 4 रन के लिए, वही उस गेंद पर एक सिंगल पर रोक लगा दी, रोकना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। सामने एक बार फिर से गुरुप्रसाद, आरोस्कर और अपने बॉलिंग मार्ग पर उमेश पाटिल। तीसरा ओवर मैच का मैदान पर जारी। बेहतरीन शॉट, डीप स्क्वायर लेग से मारे का पर गुरुप्रसाद के बल्ले से गेंद चली गई 6 रन के लिए। जल्दी खेल बैठे थे गुरुप्रसाद, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में अपने जो कि कैच को नहीं पकड़ पाए उमेश पाटिल। 1 रन मिला स्कोर में। और सामने एक बार हर्षद मातोंडकर एक चौके के साथ स्ट्राइक पर सामना करेंगे। उनके लिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट उमेश पाटिल अपने बॉलिंग मार्ग पर। फुल टॉस, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर डीप पर एक बड़ा शॉट, गेंद चली गई 6 रन के लिए। डीप स्क्वायर लेग से मारे से बाहर।
अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला सिलमिडॉन की तरफ, लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं था। गेंदबाज जब तक जाते अपने पॉलिथ्रो में गेंद को फील्ड करते। 1 रन पूरा किया इसी बीच में दोनों बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 44 रनों पर, 2 विकेट पर 44 रन। गणेश पाटिल खुद का पहला, टीम का चौथा ओवर लेकर क्रिस बॉयस क्रिकेट टीम की ओर से। अच्छी गेंद निकली और फुल टॉस प्ले किया बड़े खूबसूरती के साथ। मिड विकेट पर फील्डर गुरुशन गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, फिर से सिंगल। जारी मुकाबला आज का 8वां। यश डेवलपर्स बल्लेबाजी कर रही है। सामने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला क्रिस बॉयस क्रिकेट टीम का। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल। एक लोअर फुल टॉस जरूर थी, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर थी बहुत। गणेश पाटिल राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे, वाइड बॉल के साथ 1 रन मिला स्कोर में। थोड़ी सी बातचीत मैदान पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और गुरुप्रसाद आरुस्कर सामने स्ट्राइक पर सामना करेंगे अगली गेंद का। बार विकेट के के पीछे गेंद चली गई, थर्ड मैन पर फील्डर, एक सिंगल स्कोर में। अच्छा ओवर चलता हुआ, कहीं ना कहीं अगर पिछले ओवर की बात की जाए, पिछले ओवर में 2 छक्के लगे थे, 1 चौका लगा था उमेश पाटिल, और इस ओवर में गणेश पाटिल अब तक की अगर बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने एक बार फिर से अर्षद मातोंडकर उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। छोटी गेंद, लेकिन कहीं ना कहीं शॉट फंस चुका है। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, अच्छा कैच। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, और इसी के साथ तीसरे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। थैंक यू डीजे। स्कोर हो चुका है टोटल 47, 47 रन 3 विकेट पर, 47 लॉस ऑफ 3 विकेट। एक चौका, एक छक्का, 12 पर अर्षद मातोंडकर आउट होकर वापस। ओवर पेज गेंद, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग इस बार गेंद पर, मिड विकेट सीमारेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। Lost under the surface, undertow, and every step that I take is another mistake to you. I become so numb, I can't be. रन 3 विकेट पर, 4 ओवर की समाप्ति के बाद। (53) लॉस ऑफ 3 विकेट, 4 ओवर की समाप्ति। सामने गुरुप्रसाद, और आखिरी ओवर में गेंदबाजी पर एंजेलो। और छोटी गेंद, पटकी हुई गेंद, हुक किया गेंद को मिड विकेट पर। गुरुप्रसाद के बल्ले से गेंद चली गई, सिक्सर 6 रन के लिए।
6 पर। सामने गुरु प्रसाद। आखिरी ओवर का खेल जारी और गेंदबाजी करते हुए एंजेलो। राउंड विकेट, बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद थर्ड मैन पर, एक सिंगल। जरूर निकले थे विकेट के पर से दूर, लेकिन बिल्कुल मौका नहीं था। 1 रन मिला स्कोर में और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर का खेल जारी। प्रहलाद स्ट्राइक पर एक बड़े शॉट के साथ सामना करते हुए और उनके लिए ओवर द विकेट राइट आर्म एंजेलो अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्क पर। स्लो ओवर 1 लेग कटर, रन के लिए निकले, नॉन स्ट्राइकर एंड पर खतरा होगा रनआउट का। आउट। चौथे विकेट का पतन। प्रहलाद वापस, बैटर है गुरु प्रसाद और देखना होगा न्यू बैटर, लेकिन तब तक जाते ले जाते डीजे के साथ। सफलता गुरु प्रसाद जो बहुत ही धोखादायक बल्लेबाजी कर रहे थे, खुद का उनका व्यक्तिगत स्कोर 31 रन बनाए अपने टीम के लिए। और ब्रेक, लेकिन ज्यादा घूमी गेंद, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन मिला स्कोर में इस सिंगल के साथ 61 टोटल। 4 विकेट पर 61 रन। ये ज्यादा घूमी इस बार, एक ब्रेक गेंद थी एंजेलो की, टर्न होकर और बाहर की तरफ निकली। आखिरी ओवर जो 5वां ओवर मैच का जारी। एक अच्छा कैच, तो सफलता और एक मिलती हुई डीजे। Last Low ball risk to go. equals low returns? Not always. Trade in futures and options. फुल टॉस, लेकिन देखना होगा विकेट कीपर नीचे, कैच छूटा। 1 रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, तीसरे रन के लिए निकले। क्या देखना होगा 3 रन। अंपायर सर 3 रन देखना होगा, थोड़ा सा शायद रनआउट के लिए कॉल आ चुका है, देखना होगा।
सर रनआउट के लिए रनआउट के लिए ओके रिव्यू रनआउट के लिए देखना होगा क्या होता है। तो नॉट आउट तो मिले 3 रन, तो 3 रन के साथ टोटल हो चुका है 64, टोटल 64 और टारगेट है 65 का, टोटल 64 और टारगेट है 65 यानी 65 का। तो चलिए दूसरे इनिंग की शुरुआत और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते सर हरीश काकोड़कर के साथ, तब तक सुनते डीजे। Wonderful here. Overall good all-round cricket. A good ball, very nicely played here at the mid-on region. Fielded very well by Guru Prasad Aroskar. Throwing quickly back to the bowler. That's the kind of cricket that we want to witness here at Curchorem Champions Trophy. This is going to be an electrifying match between Chris Boys and Anand CS developers. This is in the air. This is going to be 6 runs. Yes, it is. There's Sanesh for you. Well, if you thought that he didn't time it that well, he timed it more better than everyone thought on this ground. That's a new ball. This new Khanna ball isn't fly, but Sanesh, he is in terrific form for Chris Boys. This time it was a leg spinner trying to heave that ball on the leg side, just went away. Maybe a little perspective of bowling outside your off stump, rather than bowling on wicket on his legs. Joseph is requested to come in closer to the panel of the organizers. That's a wonderful pitch hit. This is top class batting here. Top class batting from this player from Sangam. The icon player of Chris Boys is shining brightly. 10 runs on the board of the first 4 balls. You can see there was a change in the field at a long off region. It was
He came inside from the covers. Then it was a mid on being taken to long on. This time he wanted to play it in the final leg region, getting the leading edge. Both these batters are important here. They don't have that much of depth in batting order compared to the team of Anand CS developers, so they have to be wary of the fact they don't give early wicket, especially both these openers, Sanesh and Buddy. Their staying on the wicket is going to be very important for Chris boys. This is outside. This should be a catch, and catch dropped. Oh my gosh, what an easy catch this is. Oh, this might be very, very costly. It just popped out. The ball was swirling in the air, and when it was swirling, it just popped in and popped out as the ball was turning in the hands. And chance gone begging here at the point region. This can be very, very costly. After completion of 1, the score is 11 without loss. So now it's going to be Suraj Parab. And Sanesh it is. Oh, Sanesh! Electrifying and a magnanimous hit here. Well, this group is well alive between the three teams. 17 runs on the board. In just 7 balls, they could have been 1 down, but they are still without a wicket. He has been playing magnificently. He is extending his good form in this last match itself. There is hope for Chris boys, and the hope rests on the shoulders of this icon player, Shanesh. This time, yeah, it's very difficult to bowl to someone who is making little movement in that popping crease. He can play the switch hits, he can play in the covers, he can play at the long off, he can play that supla shot as well. So again, trying to heave, did not get off the meat of the bat, just going to be a single. So it's 18 on the board. So very, very good match. Well, lots of people watching this match, understanding how important it is. Kakoda boys still not made it into the next round. Buddy is not connecting the way he connects normally. He's meeting the sweet part of the bat. But the good thing is that both batters are staying on the wicket. That's a good partnership put up by both these openers. 19 on the board. Once again, the ball dips in. This is a better line that Suraj normally bowls. And that one switch hit that costed him 6 runs was the short ball, short length. As Suraj Parab doesn't have that much of pace compared to the other bowlers around, but experience definitely is worth valuable for his team. That's a lovely piece of bowling here, right in the block hole. And it's just going to concede a single to finish over well here for Anand CS developers. At the end of 2 is 21 without loss. 65 runs is the target. 44 runs required in 18 balls. So every over is going to be very, very crucial. And this is definitely going to be an important over here coming from Mohit Gaonkar. We have seen Mohit sometimes run through the side, picking 2 or 3 wickets of the top order. Sometimes Amit Damshekar, as how well he has played against Mohit, using the crease very well, moving around, playing the shot in the final leg region, sometimes going for the switch hits. So you can't be steady for a bowler like Mohit. You got to make little movement. That's what I feel. Oh, this is outrageous. The big man strikes a big one as a left-hander, not as a right-hander. This is top class.
This is really turning out to be a good match. में रहती है अब भी जाके पहली टिकट कटा रहा हूं। Play the switch hits, and I think he can put it a more further distance than the normal slog sweep. Once again, going for the sweep shot. This time just going to be a single. This is a really good battle. Both the openers are standing firmly rooted on the ground and also scoring at will. They're taking the sixes for loose balls, getting the singles, rotating the strike, taking the score to 28 at the moment. Kakoda boys will have to be also thinking. They are still not through. That's a good ball. That's a quicker ball. And goes for 4 runs. This is lucky boundary here. Well, this is whom to blame. If the keeper is standing in front, I think the short third man region and short finally region should have been really fine. This should not be little squarer. That should have been the signal from the keeper. So 4 runs taking the score to 32. Little luck going in favor of Chris Boyce here at the moment. So 4 byes. Oh, take that. Take that. This is super batting display. Excellent. Brilliant batting here from Sanesh. Single-handedly, he is taking his team close towards the qualifiers. If at all not in this match, maybe they are waiting for the chance. But Sanesh definitely is making big noise in this must-win encounter. This is in the air and he goes big. He goes big. It might be 6 runs. Mohit has been taken to cleaners here. I told you, you need to make movement into the crease, and Sanesh is definitely making big movement and big noise on this ground. Well, that 65 is looking very small at this moment with the talent of this young boy. 44. 23 runs coming off this over. This is switch it, and there is no one there. Well, that's a googly there. I thought he went for the switch it, but that's a googly ball. And I think it's a very, very expensive over compared to the standards of Mohit Gaonkar. And after completion of 3 overs, both the openers are playing a beautiful innings and a good partnership, especially Sanesh, who is single-handedly storming this game away from Anunsias Developers. After 3, he is 45, 20 runs required in 12 balls. Well, looking at the progress of this tournament, 20 runs, 10 runs per over is not difficult, but you never know cricket. It is just 1 or 2 wickets can change the complexion. Oh, Sunny! This is the best shot of the day. What a wonderful flick shot, and it has gone many meters back. This is the longest 6 of the day. Undoubtedly, if you measure by radars, I think this is going to be a top-class batting display here from Sanesh. The 6s are becoming longer and longer, and the target is looking smaller and smaller. The bridge is closing here. This is in the air. This might be a catch. This is going to be a turnaround. Guru drops it. Guru drops a sitter. That's the day here. That's how it's going for Anunsias Developers. He has dropped a sitter, absolute sitter. Well, when it's not your day, it's definitely not your day. This match definitely gone in favor of Chris Boyce.
They have kept them in the race for a hunt in the qualifiers. Sanesh wanted that ball badly. Why not? When you can hit that ball so crisply, you don't want a different ball here at this stage. The match is well looking poised here. Not a single wicket lost. This is an outside edge. Finally, someone takes the catch. Someone takes the catch from Anand Siyash developer side. And the first wicket, Buddy backs in the pavilion. But I think Sanjot, both hailing from Sangam region, Sanesh and Sanjot. This is in the air. This might be 6 runs. This might be 6 runs. Yes, time it well. Very well. Wow. Well, both the men from Sangam are hearing here in Curchorem for Chris Boys. Now the equation is much simpler here. Equation is well in their favor. 7 runs required of 8 balls. They have made a mockery of this run chase. This is once again, this might be 6 runs. Nobody is moving and it's 6 runs. Well, I told you they are shining. Not only Sanesh, but now I guess the batsman Sanjot Perni has also joined the party. They want to finish it in a quick time. Wow. And now Anand Siyash developers have to hope for a win in the next match. They have to hope for a win in the next match now. Does it beautifully. Does it beautifully. This is smart batting display and sometimes you can say tactical, brilliant, outstanding from Sanesh. Once again, this man is single-handedly won them the 3rd match in this tournament. What a man, what an icon, what a captain. Take a bow, Sanesh. You have been excellent throughout the day and you have kept your team's hope alive. Now you have to wait for the next match results that is going to be played between Kakoda Boys and Anand Siyash developers. Now it's an opportunity for all the 3 teams as well. This match, this tournament is still alive. It's time for the toss, but I think so 10 minutes break here. 10 minutes break. And we'll request after 10 minutes to come for the toss.
टीम पावतली पण आता सडनली लास्ट मॅचीक परत एकदा एक अवेक जाल्या सगळे जागे जाल्ले आसा कारण स्टार अजून तुमकां काकोडा बॉयसाक ही मॅच जिखपाची गरज आसा. आमकां ही मॅच जिखपाची आसा टॉपार उरपा आयल्यार तसो आमी चड मातशे एफर्ट घालतले आनी जिखतले. हय आनी म्हाका सांग जे कॉम्बिनेशन आसा ते सेम आसा काय कितें चेंजीस आसा तुजे आतां सद्या? हय. ओके. सूरज दोनांतली 2 मॅची जिखून तिसरी मॅच 65 स्कोर काडिल्लो दिसतालें की खंय तरी एक बरो टोटल पोस्ट केल्लो खंय कितें चुकलें? मातशी बॉलिंग लूज पडली आनी फिल्डिंगूय लूज जाली सो तेचेर आमचेर मॅच पडली ती. सो आतां जशें पळयलें की जे आउटस्टेशन प्लेयर्स आसा ते काकोडा बॉयसाचे एक जबरदस्त परफॉर्मन्स करतात तशें तुमचे आउटस्टेशन प्लेयर्स डिसंटली परफॉर्म करता. आतां तुमचे खातीर ह्या टुर्नामेंट जर तर जितो दवरपाक जाय जाल्यार ही मस्ट बीन एनकावंटर जिखपाकच पडटलें मागीर बॉल आवट जातलो. सो कशें कितें आसा मूड कॅम्पा भितर? आतां ही मॅच जिखपाकच जाय आमी सगळो एफर्ट घालून खेळटले आनी काय ना. सो टॉसाचेर डिपेंड आसतलें काय जशें तुमकां पडटलें ताजेर तुमी पॉझिटिवली वतले? टॉसार काय डिपेंड ना आमी फक्त एफर्ट घालतले आमचे. चेंजीस कितें आसतले सायडी भितर ह्या मॅचीक? हय हे खेळटले पण लास्ट चेंज आसतलो सिद्धेश दोळापकर ना तेच्या जाग्यार हो खेळटा आश्रय. Okay, one change in that camp. So now, yes, any changes? ना ताणी ना म्हणून सांगले आसा. So it's time for the toss. Yes, umpire Sadgiri. So Vicky is going to call it. Hits is the call. Tails it is. So Suraj Parab has won the toss finally in an important match and is going to bowl first. So he has decided it was an immediate decision to bowl first. So let's see how this game goes. Well, Chris boys are also going to watch this match closely and hoping that Anand Chess Developers don't win this. Whereas supporters of Anand Chess Developers will be thinking, yes, we are still hope in this last match. So it's between the three teams till the last game. And anyone can enter into the qualifiers. Suppose अशें सिच्युएशन जालें की काकोडा बॉयज 3 मॅच आनी क्रिस बॉयज 3 मॅच आनी आनंद चेस डेव्हलपर जाल्यार बोल आवट जातलो हांगा तिनी टिमी भितर तो आमी तुमकां मागीर कळयतले. क्रिस बॉयज प्लीज टेक अ नोट. क्रिस बॉयज तुमकां वचपाक मेळना क्रिस बॉयज. ह्या मॅचीचो रिजल्ट इम्पॉर्टंट आसा कारण बॉल आवट आसतलो. प्लीज नोट. सो एटलिस्ट जे बॉलर्स आसतले तांणी रावपाक जाय. So Chris boys, please note that you cannot leave, especially the bowlers, 5 bowlers that will be selected by the team. बाकीचे म्हाका खबर ना. You can contact your team owner and the organizing committee and you can take the leave of absence. But this is going to be an important match. Ladies and gentlemen, we are going to witness a great game which will be a spirited game. Spirited because Kakoda boys and Anand Chess Developers, both team hailing from Kakoda, and certainly they will be performing to their above par performance and efficiency in this match. Let's see who wins this. So great game to watch out, and it's over to Ashok Naik sir for his wonderful comments in Hindi. करिए या मरिए हाय
और काकोडा बॉयज ओपनिंग जोड़ी विकी नाईक और पुनाजी कलंगुटकर और पहला ओवर बॉलिंग मार पर हर्षद मातोंडकर। अल्टी पल्टी करना चाहते थे, एक अच्छा ऑफ ब्रेक अंदर आती हुई गेंद, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पावर प्ले का पहला ओवर जारी। अच्छी गेंद यॉर्कर लेन की, एक रन शॉट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर एक सिंगल बना स्कोर में, एक एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 2 पर। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन। पावर प्ले का पहला ओवर जारी मैदान पर। काकोड़ा बॉयज और यश डेवलपर्स इन दोनों टीमों के बीच में मुकाबला। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, शॉट मिस टाइम हो चुका है। मुड़ा पर मौका कैच का और पहले विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर डीजे। थैंक यू डीजे। पुनाजी का लंगोटकर आउट होकर वापस सिर्फ एक रन बनाकर, और उनके आउट होने के बाद विकी नाइक का साथ देने के लिए न्यू बैटर शंकर गांवकर मैदान पर। और पेश गेंद लंगन बाउंड्री पर, पहले बाउंस के बाद गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। ओवर पिच गेंद हाफ पॉली पर लेकर एक अच्छा शॉट मिडान पर सर्कल पर गुरु प्रसाद, लेकिन उनके ऊपर से गेंद चली गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 4 रन के लिए। तो पहला चौका निकलता हुआ मैदान पर बल्लेबाजी में काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम की ओर से, और 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा। अल्टी पल्टी थर्ड मैन पर फील्डर सिंगल, 1 रन मिला स्कोर में। पहले ओवर का खेल पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ, और पावर प्ले की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन, सूरज परब आ चुके हैं बॉलिंग बार पर। फील्डिंग में परिवर्तन, आड़े बल्ले से इस बार मिड विकेट पर फील्डर, लेकिन गेंद हाथों को छूती हुई गेंद चली गई। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। दूसरा चौका 9 पर खुद के व्यक्तिगत सामना करते हुए अगली गेंद का। ये गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, रन के लिए निकले, नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो, निशाना नहीं लगा, खतरा था नॉन स्ट्राइकर एंड पर। नो बॉल का इशारा अंपायर का, नो बॉल के साथ और 1 रन बढ़ गया स्कोर के खाते में। सर नीलेश नाइक, सदगिरी नाइक और पुण्य पालकर, ये त्रिमूर्ति अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ
बिल्कुल एक लगभग करीबी मामला था। अगर गेंद लगती नॉन स्ट्राइकर एंड पर तो दूसरी कामयाबी हो सकती थी मैदान पर। फ्री हिट का इशारा नो बॉल के साथ। राउंड विकेट सूरज पर अब अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। और इस बार प्रेट की गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खेला, गेंद को लंबी दौड़ लगाई, एक रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे गेंद लेकर इस बार बेहतरीन शॉट स्क्वायर लेग पर फील्डर डीप स्क्वायर लेग पर सामने सीधे हाथों में गेंद और इसी के साथ दूसरा विकेट चला गया मैदान पर। सूरज परब को मिली सफलता। स्कोर हो चुका है टोटल 17 लॉस ऑफ 2 विकेट। डीजे आते आते अल्टे पलटे कवर पॉइंट बाउंड्री पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। पॉइंट बाउंड्री पर सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे और इस बार फिर से बहुत ही लाजवाब टाइमिंग, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर सिक्सर 6 रन के लिए। दो ओवर 29 टोटल लॉस ऑफ 2 विकेट। तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मोहित गांवकर और इस बार फिर से अल्टी पल्टी थर्ड मैन पर गेंद हवा में, फील्डर के हाथों से छूटा कैच। 1 रन। दूसरे रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, 2 रन मिले स्कोर में और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 31 रनों पर। 31 लॉस ऑफ 2 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। गेंदबाजी करते हुए मोहित गांवकर, गौरेश नागवेकर बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी करते हुए और उन्हीं के साथ शंकर गांवकर। लवली टाइमिंग, स्ट्रेच हिट, कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक नजाकत भरा छक्का
सिक्सर डीजे। और उसके बाद मोहित गांवकर अब तक एक बड़ा शॉट जरूर लगा है, लेकिन उसके बाद एक बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। छोटा रन अब 4-5 कदमों का। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर फिर से सिंगल। डीप मिड विकेट पर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते। ओवर समाप्त हुआ तीसरा। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौटम्पुल का शॉट, फिर से गेंद खड़ी हो गई, लेकिन नो मैच लैंड में। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर आते गेंद को उठाते, एक सिंगल बना, अपना खाता खोला 1 रन के साथ। और इस सिंगल के साथ स्कोर भी आगे बढ़ा 43 रन पर। गौरेश नागवेकर
उससे पहले शंकर गांवकर 2 चौके 1 छक्का 19 रन बनाए। और देखना होगा धीरज गांवकर इस ओवर में एक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है। राइट आर्म ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर सामने बैटर है गौरेश नागवेकर उर्फ घुमरू। ऑफ टेम्पर शॉट ऑफ लेन गेंद, अल्टी पल्टी करना चाहते थे गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। 43 रन 43 लॉस ऑफ 3 विकेट। 4th ओवर इन प्रोग्रेस, 4था ओवर जारी मैच का। छोटी गेंद, बहुत ही शानदार शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गौरेश नागवेकर के बल्ले से एक बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए। अच्छी गेंद बैकफुट पर निकले, कलाई का उपयोग किया इस बार मिड विकेट पर, फील्डर एक सिंगल, तो इस 1 रन के साथ 50 रन जो कि पूरे होते हुए टीम के काकोड़ बॉयज के टीम के 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 4था ओवर मैच का अभी भी जारी, धीरज गांवकर और सामने बैटर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज संदेश ठाकुर उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए 3 विकेट पर 50 रन। और अड़े बल्ले से बहुत ही लाजवाब शॉट, संदेश ठाकुर मिड विकेट पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर डीजे। इस बार बहुत अच्छी कोशिश और कैच को भी पकड़ा, तो सफलता 4थे विकेट का पतन, 56 रन 4 विकेट पर, एक अच्छा कैच विकेट कीपर का। गौरेश नागवेकर आउट होकर वापस 20 रन बनाए खुद के व्यक्तिगत संदेश ठाकुर, और संदेश ठाकुर का साथ देने के लिए न्यू बैटर मैदान पर अमित सैयद, जो पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच। मेरा नाम प्रदीप मौर्य बहुत अच्छी गेंद यॉर्कर लेन के एक दिन टीवी पे माय इलेवन सिंगल का ऐड देखा। 1 रन मिला स्कोर में, लेग बाइज का इशारा, इस 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 57 रन पर 57। अंतिम ओवर का खेल जारी, आदित्य नाइक बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं,
4 विकेट पर 57 रन। अपील हुआ कॉट बैंड के लिए। एक अच्छा ब्रेक, बल्लेबाज को बीट किया। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट करते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छी गेंद, डॉट गेंद, बहुत अच्छी, जो कि ओवर चलते हुए मैदान पर। अरे एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट पवेलियन की तरफ से। ओवर पिच और हवाई फायर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर ओवर पिच गेंद पर संदेश ठाकुर के बल्ले से निकला छक्का 6 रन के लिए। आदित्य नाइक, इस बार ज्यादा टर्न हुई गेंद ऑफ स्टंप पर, टिपक आने के बाद और कट होकर बाहर की तरफ निकली। वाइड बॉल का इशारा और वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में काकोड़ा बॉयज क्रिकेट टीम के। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो कि लाइन पर गेंद दूर हो गई। स्कोर 64 रन 4 विकेट पर, 64 लॉस ऑफ 4 विकेट। ओवर पिच फिर से स्लॉट में, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर सिक्सर 6 रन के लिए। गेंदबाजी में शुरुआत बढ़िया रही थी, जो कि पहला पावर प्ले का ओवर अरशद मातोंडकर का, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में रन बनते गए मैदान पर। देखना होगा किस तरह से मुकाबला होता है, जो कि टोटल हो चुका है 72 का और टारगेट है 73 का, 73 रनों का मैच को जीतने के लिए। दूसरे इनिंग की शुरुआत और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते आइए सर हरीश काकोड़कर के साथ।
So again, this is a sheer pace here from Gaurish Nagvekar. I think they must have played many a times. Mohit, Guruprasad Aroskar and Gaurish Nagvekar played in the same team and played against each other. So very well knows the capacity of this man. He can generate a sheer pace and also bowls that quick leg cutter that loops into the batters at the last moment. So not an easy customer. Right now, you can considering the form of this tournament and considering the form of cricket that is happening in Goa. He is considered to be the highly rated, maybe somewhere around in the top 3, Gaurish, and he's performing that way in every tournament where whichever team he is as a part of that particular team, he performs excellently. And I told you, it's not going to be easy to go after him. And it was a wrong bowler chosen here by Guruprasad Aroskar. And he strikes the very first ball. The big wicket in this tournament for Anand Yash developers. And he goes back. So Kakuda boys strikes. DJMS Panagar. They won 3 and they are curiously waiting, anxiously waiting and hoping that it's not a bowl out. But still the batting is there. The problem is that man in form who has won them 2 matches departs in the very first over of the very first ball. It's a golden duck for him. This time, once again, a little down the leg side, but the pace is there. He's got sheer pace. Undoubtedly, is the fastest bowler in this competition. Curchorem Champions Trophy. And he has got the variations. He has got the knack of picking wickets. In spite of having just 1 over to shine, he's still picking wickets in almost every over that he has bowled. Oh, big swing, the big bat swing that we know of Suraj Parab. But it's not going to be easy against this pace spearhead from Perne, the Perne Express that we call him, Gaurish Nagvekar. Well, he has played his part in almost every match, also with the bat, not only with the ball. Oh, just swinging. This was the fast leg cutter from him. The ball just went away from Suraj. He's just swinging. I think they are just going after him. Maybe, I don't know whether it's the right choice or the wrong choice. He is their prime bowler and in supreme form. Guru Prasad has made that mistake. Now he has to watch that match from the dugout. This is quick. This is sheer quick. Oh, there might be a chance of a direct hit. Run out. Missed here. Direct hit was required. Suraj had given it up. He had already given it up a halfway mark. And just concedes a leg by here. Takes the score to 3. Chasing 73. They are just 3 on the board. And Mohit. Now everything rests on Mohit here. He has to show his one skillful innings, crafty innings in this run chase. He has the capacity, but does he have the tenacity and does he have the brains to be calculative and measured enough in this run chase?
So again, they are trying to go after him, but no one has been successful. No one is even finding the middle of the bat against Gauresh Nagwekar. So another leg by considered here by Gauresh, and is an exceedingly good over here. Not even considering an extra runs, no ball, no wides, and that's how you expect it from your prime all-rounder. And he has done the job. After completion of 1 is 4 for 1. Ah, that's a good shot here. That's a good start in this over. They have to take on Vicky now. The first over was very economical, very good from for Kakoda boys. Now they have to take on Vicky, and Mohit has decided it's time to take on, and he plays a fabulous shot. Fabulous shot that was. Oh, going for the switch hit. Maybe the right option chosen here for the switch hit, but the execution was a little awry. Maybe he's trying to go after Vicky and surprise Vicky. He is also an experienced player. But they don't have the options left. They have to go on once 1 over becomes a little less as far as economy is concerned. They have to go after other bowlers around. And this is Vicky. He comes strongly. He's trying to play the same shot. One either in the switch hit and either in that backward square leg region that he got. But if the length is not right to go for that, you can play the dot balls. That's exactly the scenario, the previous ball. Once again, Vicky. So again, this is a fuller ball. Can take only a single. Now it's going to be a Suraj Parab. So the battle of Suraj Parab versus Vicky. The captain versus captain battle. The icon versus icon battle. Who is going to win this? Score moves on to just 11. I think anything less than 12 runs per over is considered to be a good over for the bowling unit of Kakoda boys. Oh, this is smart. This is very, very smart. He knows how Suraj Parab plays. Bowled him a very, very slow ball. The bat did not come on time. Well, he was waiting for that express, but he bowled a Vasco Kole, Vasco local. This is not timed here. Might be a catch. Punaji going after the catch. Might be a difficult one. Yes, against Punaji. Might be going for the second run. Chance of a run out. And Suraj makes it comfortably. But a good over nevertheless here from Vicky. He comes back strongly after being hit for a 6 of the first ball. And after completion of 2 overs, is just 13 on the board for the loss of 1 wicket. It's a team, it's a team.
runs. It's almost like 9 6 is being involved. Very much possible till this point of time. This time he strikes, might be in the air, might go for boundary. Yes, it does. Yes, it does. Although it's at the toe end of the bat, but they will take it anything, anyhow, and anywhere at the moment. That's the situation for Anand's Chess developers. They just want boundaries or sixes. I've seen Mohit can play an innings of substance, can play that during the run chase. Can he do it here in Curchorem on SAG ground for Anand's Chess developers? He's still on the wicket. Now lucky there, very, very lucky. And Suraj Parab will have been a long way back. So the throws are missing, and the timing is also missing from the batters. They are just doing at the moment. Takes the score to 18. They need a big spike at this stage. They need a spurt in this run chase. Otherwise, it's going to be difficult for them to chase it in the last 2 overs. I know I can understand it's Sandesh Thakur, the top-rated all-rounder in Goa, along with Gauresh Nakwekar. So it's not going to be easy to go against Sandesh Thakur, who is bowling very well in current form. Says an outside edge. Exactly no Sandesh how to bowl to Suraj Parab. So many times he has played against him. And just going to be a single run, taking the score to 19. 6 runs have come off the first 3 balls. Look at the pace. Look at the pace there. Yorker outside the off stump, a wide Yorker bowled by Sandesh Thakur. So this is how you need to bowl in an important encounter like this one. This time he strike. This time he strike. They needed it badly. They needed it badly. It has come like water in the desert for the hope of Anand Chess developers. Wonderful timing. A game of uncertainties have shown great turnarounds. Don't go anywhere. Witness, if at all, there is a turnaround, and it's Mohit who's striking well. This over should be at least 20-25 runs over if they need to stay alive or hunt in the race in the final. Mohit on strike. This time nothing short here. Very nicely bowled by Aniket Bhatikar, and gets rid of Mohit Gaonkar. Shot outside off stump, didn't bowl him in his arc on the leg side, and I think this is going to be the curtains as far as I'm concerned, because the new batter is not going to be easy to score those sixes. Is Harshad Matondkar. Kane comes onto the wicket.
required. And a hat-trick of wides. Hat-trick of wides here. All three left. All alone here by Kane. Taking the score to 40-31 in fact. So 42 more runs required. 7-6 is simple equation, but it's still difficult. That was a quick Yorker. A lower full toss and just gets a single. The score is not moving anywhere at this stage. And once again, so they are continuously bowling with the same plan, and he is doing the same thing, bowling and playing with fast hands. This time finally he strikes, but it might be all too late. 6 off the last ball, taking the score to 38. Chris Boy is definitely celebrating after this, boys. In comes Amit Sayed. And looks to be a wide, yes, and might be one for the over as well. And he's, I have seen, he bowls this hard length. He bowls that ball that goes close to the shoulder line. He's a strong man, Amit Sayed, and he's the hard length very well. If he is going to bowl this length, they are getting the fine leg close to the boundary and the long off inside. Look at the length. Look at the length here. Well bowled. This length is not going to be, and it's a no ball. It's a no ball here because the first warning was given. The first warning was given to the bowler above the shoulder height. So, and it's going to be a free hit. Still they are alive. Still they are alive. Is there a turnaround? And this might be wide as well. He's bowling the shorter length. Another wide conceded. This time might not have timed it well. And Vicky saves the day. Vicky saves the day. This is poor batting display from Harshad. He should have taken 2 runs over there. He should have taken 2 runs. And they have taken 2 somehow. They have taken 2 somehow. And Suraj Parab is still not out somehow. This time in the air, might be a 6. No, it is well inside, and it's taken. So I think it's all over for Anand CS developers at this moment. Well, they have kept it little too late. The first over from Gaurish Nagwekar was so good that it just 3 runs came off that over. And finally, it was asking too much from the batters deep down. Ball, consider no ball,
and that goes for a hit. The sixth, then I think is well in the kitty of Kakoda boys. They will be certainly at the top of the table with 4 out of 4 wins. It's going to be wide here. They are definitely not going to be worried about the wide. He has been a surprise package here for Kakoda boys. They have done really well so far. This time he strikes. This time he strikes. Might be 6 runs. Yes, it does. I think Anand CS Developers has not taken the proper use of this man. He should have been a little up the order. Prahlad Upar. They have kept in lower down. And that's the technical error that they have done in most of the matches that is costing them. He's a fantastic player, Prahlad Upar. He can strike big, and that's one example of that. Once again, a fabulous shot. It might be 4 runs. I told you he should have been a little bit up the order, and they have made a big mistake of not sending him. 10 runs off the 2 balls. He has got a definitely good caliber to get 6s on any ground, Prahlad Upar. Once again, a good shot down the ground. Can get, yes, a boundary. 14 runs off the 3 balls from Prahlad Upar. That's the caliber of this man. He is showing talent, but all in the losing cause. All in the losing cause at the moment. So it's going to be Kakoda boys who will be at the top of the chart and going through to the qualifiers leading. And Chris boys at the second place. And it's a wide signal here. $14 runs required. And it's all over here. The score was too much to handle. And Chris boys have entered into the qualifiers on Sunday along with Kakoda boys at the top of the table. Anand CS Developers have played really well up till one point of time. But finally, they were the 2 good sides, Chris boys and Kakoda boys. They have stormed their way into the qualifiers. So congratulations to Kakoda boys. Congratulations to Chris boys. They have been magnificent, and is going to be tomorrow's encounters between 5 good teams that is going to be played. Matochiri K Warriors, 3 Brothers, PK Transport, Mathura Farms and Asiya Cricketers are going to play against each other to find the 2 places in the qualifiers. So till then, we have to find the player of the match in this. And is definitely going to Gaurish Nagwekar for his wonderful skill with the ball and with the bat. Just conceded 2 runs, picked up important wickets of the inform Guruprasad Aroskar, and also scored 19 runs. So once again, Gaurish Nagwekar, the Pernam Express and the star all-rounder has outstandingly bowled and batted well. That's the reason why he is the player of the match. So it's bye from Harish Kakodkar. Good night, Shubhratri, Shabba Khair, आणि देव तुमका सगळ्यांक बरी रात देऊ. Well, it's bye. See you tomorrow. चल
इस मैच का मैन ऑफ द मैच गौरेश नागवेकर। तो बिल्कुल गौरेश, आजकल बहुत चर्चा हो रही है आपकी, पेरनेम एक्सप्रेस के लिए जाने जाता है। हाल ही में बड़ी टूर्नामेंट एक खेल के आ चुके आप, और ये आज 2 बार। बिल्कुल एक अच्छा ग्राउंड है, अच्छा आयोजन है। क्या कहेंगे इस आयोजन के बारे में, आपकी टीम और 2 बार जो कि मैन ऑफ द मैच? बरो ऑर्गनायज केल्लो हा टुर्नामेंट आनी मजा येताली. पीच बी बरी हा, ग्राउंड बी बरो हा, सो बरें दिसतालें खेळपाक. बरें ऑर्गनायजेशन केल्लेलें हा, ग्राउंड बी बरो हा, आउटफील्ड बरें हा, पीच बरें हा आनी मजा येताली खेळपाक. थैंक यू, धन्यवाद। पेरनेम एक्सप्रेस गौरेश नागवेकर उर्फ गुंगरू। तो आज